ही प्लेयर्स अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 पर खेल के फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यकीनी तौर पर एक बड़ी खुशाइंद बात है ये कि स्कूल क्रिकेट रिवाइव हुई है, ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, बड़ी नोटेबल परफॉर्मेंसेस भी हमने देखी हैं थ्रू आउट द लास्ट 1 ईयर। बिल्कुल। और आपने बात की जैसे कि प्लेयर्स की, तो हसनैन कमर का जिक्र करेंगे जो कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के बहुत सारे नाम और भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अराउंड 400 रन स्कोर किए हैं इस टूर्नामेंट में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा मैं जहांगीर की बात करूँ, ही हैज़ टेकन 18 विकेट्स फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ही इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल। तो बड़ी खुशाइंद बात है ये कि इस लेवल पे ऐसे परफॉर्मर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और यकीनी तौर पर ये वो खिलाड़ी हैं जो इसके बाद हमने, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो जो ग्रास रूट क्रिकेट का प्रॉपर पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए वो अंडर 16 क्रिकेट खेलेंगे, अंडर 19 क्रिकेट खेलेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल ये पाकिस्तान क्रिकेट का ही फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलना। और बात कर रहे हैं तो इस टूर्नामेंट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, चूँकि आपने जैसे कि कहा कि ये लड़के जाके नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। बाबर आजम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो क्या समझते हैं कि अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर हमें टैलेंट हंट करना है और पहुंचाना है आगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जिस तरह अगर हम स्कूल क्रिकेट की बात करें तो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हिस्ट्री देखी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड क्रिकेट की तो जो रूट हो गए, ओवेन मॉर्गन हो गए, इंडिया में राहुल द्रविड़ थे, श्रीलंका में कुमार संगकारा थे। इतने बड़े प्लेयर्स स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट रहे हैं। पाकिस्तान में हमने बाबर को देखा, इमामुल हक को देखा, ये तमाम प्लेयर्स स्कूल क्रिकेट की प्रोडक्ट है। तो यकीनी तौर पर ऐसे मैचेस करवाना, फिर उसके बाद उन मैचेस को स्टेट लेवल पर ब्रॉडकास्ट करना, दुनिया भर में दिखाना, और कज़ाफ़ी स्टेडियम जैसे वेन्यू पर जब ये प्लेयर्स खेल देंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ओवरऑल मैं यही समझता हूँ कि इन मैचेस के जो परफॉर्मर्स हैं वो यकीनी तौर पर एक पैटर्न के थ्रू आगे जाएंगे और वो मुस्तकबिल करीब में हम उन्हें देखेंगे कि वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे। पिच की बात कर लेते हैं। गर्म दिन है, गर्मी है, क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है पिच ऑब्वियसली जो है हमने देखा है कज़ाफ़ी स्टेडियम नॉर्मली यही रिएक्ट करता है कि अर्ली ऑन थोड़ी सी नमी होती है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल पिच किस तरह रिएक्ट करेगा आज के मैच में। ठीक है, टॉस अगर कोई टीम जीती है, व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड ऑप्शन टू चूज, बैट और बॉल? वेल, आई वुड प्रेफर टू बॉल फर्स्ट, बिकॉज जैसे हमने पहले बात की कि नमी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको अर्ली ऑन मूवमेंट मिलेगी और टीम हमेशा से यही चाहती रही हैं कि वो टॉस जीतें, पहले बॉलिंग करें, अर्ली ऑन विकेट्स लें और दूसरी टीम पे प्रेशर डालें। लेट्स गो टू शाह फैसल सिंस वी टॉकिंग अबाउट पिच। शाह फैसल, ओवर टू यू। Here in Lahore for this big final. The sun is out and it's pretty warm. This pitch has been used quite a lot, and this is one of the main pitches because it's right in the middle of the square for this big final. But before coming to the pitch, let me just tell you that the dimensions are pretty standard. 75 meters square of the wicket and about 65 on either side in front of the wicket. Close look at the pitch. It's straw colored, pretty hard. These cracks are a feature of Gaddafi Stadium pitch, but just ignore them because the ball will come on very nicely and the youngsters will have plenty of good time to have a bat in the middle. It's a big final. The nerves will also play a key part, but I think the wicket is absolute fantastic and we should have a great game of cricket. थैंक यू शाह फैसल। शाह फैसल ने बताया कि पिच ड्राई है, बॉल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ सकता है। यू said that you would like them to ball first, right? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह मैंने पहले बात की कि विकेट में थोड़ा सा नमी है और अगर अर्ली ऑन आप उस मूवमेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप कुछ विकेट्स हासिल कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर जो है वो यही चाहेगी, दोनों टीम्स की ख्वाहिश होगी कि वो टॉस जीतें, पहले बॉलिंग करें, अर्ली ऑन विकेट्स लें। You talked about the toss. Let's move to Ali Yunus, who is with the captains. Ali Yunus, over to you. It gives me great pleasure to be standing here in the middle for this big final of Central Punjab College Championship. I've got the two captains alongside me for Government College and Divisional Public, Faisalabad, and Kaisar Waheed, the umpire. So it's going to be Government College captain to flip the coin. Head is the call. Faisalabad, the Divisional Public Faisalabad, the captain ने टॉस जीता है और क्या करेंगे, क्यों? जी, हम बॉलिंग करेंगे क्योंकि पिच काफ़ी हमें नज़र आ रही है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी नज़र आ रहा है और हमें कॉन्फिडेंट है अपनी बॉलिंग पर। हमारे पास बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। कैसा लग रहा है आपको? और बाकी टीम का अगर मैं आपसे पूछूं तो बड़ा स्टेज है, बड़ा फाइनल है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रहे हैं, तो मोराल कैसा है टीम का? जी, काफ़ी हाई है मोराल हमारी। काफ़ी देर से ट्रेनिंग चल रही थी, नाइट मैचेस भी हमने खेले हैं, तो हम काफ़ी हाई है मोराल हमारा।
ठीक है, तो टीम कॉम्बिनेशन क्या, आप इस पिच पे कैसी कॉम्बिनेशन खिलाएंगे आप? टीम कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छा है, हमारे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं और हमारा ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छा जा रहा है और हमारी बॉलिंग भी लाइनअप बहुत अच्छी है। अब्दुर्रहमान हमारा स्टार्ट बॉलर है, हमारा स्ट्राइक बॉलर है, बहुत अच्छा जा रहा है वो। राइट, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। थैंक यू वेरी मच। टॉस हार गए आप, जीतते तो क्या करते? माइंड तो ये था टॉस जीत के पहले बैटिंग करते, तो सो वही हुआ है जो हम चाहते थे, टॉस जीते हैं तो कोई बात नहीं, लूज़ हुए हैं तो पहले बैटिंग करेंगे और माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैटिंग साइड है हमारी और बड़ा मैच है तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेसिकली बड़े मैच में चेज़ वाली टीम पे ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह 250 प्लस इनको टारगेट दें, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। आप लोकल टीम है लाहौर की, तो कंडीशन से काफ़ी वाबस्ता होंगे आप, तो आपके लिए थोड़ा बेहतरी है ये? जी जी बिल्कुल, थोड़ा यूज़ टू हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हमें पहले मोटिवेट भी किया गया था, मैच भी दिखाया गया था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें बड़ा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट मिला देख के, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनके अच्छे से अच्छा टारगेट दें और इंशाल्लाह मैच। टीम कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो क्या कॉम्बिनेशन खेल रहा है आपका? टीम कॉम्बिनेशन में हमारा 3 ऑलराउंडर्स हैं और एक हमारा अबू बकर फास्ट बॉलर है, हुसनैन कमर है जो ऑलराउंडर है फास्ट बॉलर, तो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट है टीम पे कि इंशाल्लाह जीतेंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Right, the news from the center is that Divisional Public Faisalabad has won the toss and they've decided they're going to bowl first. थैंक यू सो मच। अली यूनुस ने बताया कि किस तरीके से डीपीएस ने जो है वो टॉस जीता है और बॉल करने का फैसला किया है। अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टारगेट? मेरा ख्याल है जो डिविजनल पब्लिक स्कूल की टीम है वो यही चाहेगी कि 150 से और 170 के राउंड अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को रिस्ट्रिक्ट करें, जबकि अपार्ट अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वो लोग ये चाहेंगे टू पुट ऑन एटलीस्ट 250 टू 270 ऑन द बोर्ड। So 200 plus is a good option, right? Thank you so much, Noman, and we're looking forward for an amazing game. Now we'll move to Ali Yunus. Com 22. Hello and welcome to Gaddafi Stadium, Lahore, for this epic final of Central Punjab College Championship. Such a great moment to be here for this great initiative taken by Central Punjab. It's Government College University Lahore taking on Divisional Public School Faisalabad from Gaddafi Stadium, Lahore. It's a hot day in here, but it's such a great initiative that we don't really feel it. It's the first time that a big final of college is being televised on Let's start. PTV. We'll just go downstairs where people are ready with the national anthems. Wonderful scenes here at Gaddafi Stadium, Lahore, for this epic match, the big final of Central Punjab College Championship. It's Government College Lahore taking on Divisional Public Faisalabad. Let's have a look at the two teams. Government College Universities, Abu Bakr, Danal, Kohar, Ghulam Hafiz, Hassan Kamar, Jahangir Khan, Kabir Ali, Mubashir Muzammil, Muzammil Ishfaq, the captain, Rana Ali Raza, Saad Nadeem, and Zaid bin Nadeem. I've got Shah Faisal alongside me. I'll ask him to take the name of Divisional Public School. A very warm welcome to all our viewers. Abdullah Shahid, Abdul Rahman Jr., Abdul Rahman Sr., Abu Bakr Dar, Arham Nawab, the skipper who
recently represented Pakistan in the Under-19 World Cup. Zayan, Momin Kamar, Muhammad Rehan, Nabil Rafiq, Sarkam Saeed, and Zishan Pervez. And the two coaches are also very, very household names in domestic cricket, in particular Saud Khan for the Government College Lahore, and former test player Muhammad Salman is with DPS Faisalabad. Big occasion for these youngsters to be playing in the home of Pakistan cricket for this big final being televised. And it's a great atmosphere here, I have to say. Like you said, Ali, it was hot. You could see the sun is out. But, you know, the enthusiasm of these kids was really, really refreshing. And we can see it's some big crowd building up as well that stand in front of us to the far end of the ground. You can see there's some college students here. The Fazal Mahmood enclosure. Quite a few number of spectators have come in as the traditional group photos are taking place. And it's an exciting event. College cricket is making a comeback, and this has been a phenomenal initiative by the Central Punjab Cricket Association. I've heard rave reviews about their grassroots products and projects that they've been carrying. Speaking to the former Pakistan captain, Misbah Haq, he was really paying big tribute to the Central Punjab Cricket Association, the way they've done this, and the weekend school cricket as well. So all good, and it's just such a good sight to see all these youngsters walking out at the Gaddafi Stadium. Yeah, good to see some crowd also. Not surprised at all, because Government College University is just situated in Lahore, so we can guarantee some people from there. And the news was that Divisional Public Faisalabad's captain won the toss, and he decided that they're going to have a ball first. And he was of this idea that this pitch looks like a belter, and there will be runs all through the day. And in the second time, we can see some dew also coming into play. So it's a good decision. As Shah Faisal just mentioned, it's going to be the test for two coaches also. Saud Khan coaching Government College University, Muhammad Salman, the former Pakistan international cricketer, the wicketkeeper from Faisalabad, representing Divisional Public School. There are two good umpires also officiating this game. Kaisar Waheed is one of them. Facts and figures. You're on air, Jara, sir. This is a bit of history of this Central Punjab College Championship. 155 schools and colleges were included in this. 18 districts of Punjab. 3,100 plus players were included in this tournament in 48 venues. So Shah Faisal, it's such a great initiative. It's definitely thumbs up to Central Punjab and their team. It's been such a wonderful initiative. Back in the days, we never thought of this, Shah Faisal. Absolutely, and look at those number of players who participated. 3,100 plus players in 18 districts of Punjab. This is phenomenal. And we're here for the big final, but we have to also congratulate each and every person who participated in making this possible. The organizers, the administrators, they've done a fantastic job, and also the players who participated, and I think they would have learned a lot from this. And going forward, this can be a really important fixture in the calendar of Central Punjab Cricket Association, because this is where it all starts, Ali. And if you get a platform like this to showcase your skills so early in your career, I mean, you can't ask for more as a youngster. And we see team in the huddle. Two umpires are in waiting. Not long before the first ball will be delivered, and the excitement will begin. But like I said, you have to congratulate Central Punjab Cricket Association for doing this. And they must have had a very hard-working team who contributed a lot to come this far. So big thumbs up to all of you, the unsung heroes, the ones who are working hard behind the scenes all the time. And like I said, just approaching the start of play, and it can be a very, very good contest. We'll have to watch out for a few players that have really performed well in this tournament. Arham Nawab is one who's played for Pakistan recently, so definitely he's really head and shoulders above his peers in this competition. That's Divisional Public School, Faisalabad, warming up
to bowl first in this big final here at Gaddafi Stadium, Lahore. It's such a great opportunity for these young guns also to come here and perform and showcase their talent in front of millions that are watching on television. The two umpires all set to organize this game. And I can bet this is going to be a cracker of a game, because this young side of Divisional Public School, they've got some big names in that. Aram Nawab, as Shah Faisal mentioned, he's the one who represented Pakistan under 19 also. There's going to be such a boost for them coming here and playing at this college level. One other name to watch out for is Hassan Kamar of GCU. He's the second highest run getter of the tournament. He's made 412 runs at an average of 68. He's got 104 half centuries as well. Mubashir Muzammil, he's also scored 203 runs in 7 games for GCU. So these are the two batters that you need to watch out for in the GCU batting lineup, as we still await the arrival of the two openers. Just love how the families are involved in this game. I'm sure there'll be a lot of families of the local guys, the guys from Lahore, GC University, their families coming here and supporting these young boys. It's such a big opportunity for these youngsters, and a big occasion. I remember back in the days, 2002 it was, maybe, when I represented Government College in the final against MU College. There were not many facilities, but the level of cricket was so high. And I'm expecting the same sort of fight, the same sort of energy here in these two teams, because this is a big opportunity, Shah Faisal. They're being televised live. They're being watched by the millions. If you do well here, it is an opportunity for you to create a name for yourself. As we see the two openers for Government College University walking in, they look quite comfortable, quite confident. A good start is always handy in these sort of big finals. Definitely nerves will play a part here. And the team that holds on to their nerves and just keep themselves calm, they will be the ones who will get a head start here. Two openers coming out. Both these institutions are iconic institutes. Government College Lahore has had a rich history, not just cricket, but all the other sports as well. To go with the academics, so is the Divisional Public School in Faisalabad. It is an iconic institute, so these two really has to be congratulated for getting this far. Talking about Saud Khan, we all know how long he's been involved in coaching. He seems to be an ever-present in coaching, and his team has made it to the final yet again. Let me tell you, Shah Faisal, when I joined Government College, we had the first batch when Saud Khan came to Government College. It was his first batch, and we won the championship that year. It was after 13 years that Government College won back in 2002. I was fortunate enough to be the part of the team. Kashif Mahmood, the captain, Adnan Raza, all these big players were included in that side of Government College University. So this Saud Khan definitely has an influence on the young boys of Government College as we approach towards the first delivery of this game, of the big final. Umpire says, let the cricket begin. Swing available straight away. This will be very interesting, how much this new ball swung in the new overs. That's going to be very interesting, because we don't expect much pace at this level, but swing definitely yes. Nice full length and a little bit of movement as well from Muhammad. He's really looking to pitch that ball up. That's good. Longish run up for him, starting almost at the 30-yard circle. Slip in place. You'll have to watch out for some of these tactics at this young age. You got to keep an eye on that too. Oh, that's through the gap. Nicely clipped away towards onside. We'll earn him a couple of runs, and if they run well, they can have 3. No, Wade says the non-striker end. That's a good move. Just sticking to 2 runs. So Government College University is off the mark with a double. Early signs of some inexperience as the fielder was pushed from onside to the offside, despite Muhammad being able to get the ball to swing into the left-hander. That created that gap, which meant 2 runs were easily available. Got to sort out his line.
with that inward movement to the left-hander. Again, there's a huge appeal. Huge appeal. Umpire says no. Maybe a touch high, Shah Faisal. Maybe. He needed to straighten his line, and he did so. That was really attacking the stumps. There was that movement. The umpire had to make the call if it was doing too much. Did it pitch in line? Probably did. Not high at all, because it hit him just below the knee roll. But I think that movement, because he's not really getting tight on the stumps. So that angle that he creates would have taken the ball past the leg stump. Good decision. For a second from here, I thought it had hit high, but no, it wasn't. I take that line back. This is a good start from Rehan. Right on the money. And the last action replay, if you can have a look at it again, that LBW appeal. I think the batter is very lucky still to be there, because that looked straight. But as you said, maybe touch going down. That's good start from Rehan. Definitely, he's getting the ball to move. There's a little bit of breeze. I mean, it's at ground level, it was pretty strong, I have to say. If you see the flags across on the main pavilion fluttering. So he's using the breeze to good effect. But that's not the length he would like to bowl, because he's been troubling the batter, Mubashir, on that front foot. You need to continue to do that. But this is a good start. Good skills shown by Rehan so far. Every time you see a game of cricket in Pakistan, it's almost a given that you'll see some impressive bowlers. The thing to watch out for is to see if we can find some talented batters at this level. So definitely an intriguing part of this broadcast will be to keep an eye out for that. Absolutely. I think I'm really looking forward to see Nawab to see the one who represented Pakistan at Pakistan under 19 level. As we come to the end of the first over, it's 2 without loss. Government College, Lahore. Two without loss. Government College University, after being asked to bat first by Divisional Public, Faisalabad's captain, as Abdur comes to bowl the second over of the match. The back foot into the gap. One more run towards the third area. Danial Gohar off the mark, as opposed to Rehan. The start from the pavilion end wasn't quite good. Short and wide. Danial could have made better use of it. But like I said, in these early encounters, nerves will play a part. So the players will need to take a little bit of time before they will settle down and showcase their skills. But I'll definitely take this game as an opportunity for these youngsters. Such a huge platform, being live on PTV Sports. You got to give whatever you have. This one is pulled nicely through the gap. Has the legs to go for the 4. Yes, this brings the first boundary of this big match, the final, coming to Mubashir. Paying the price for that short length once again, allowing Mubashir to get onto that back foot. And he had all the time in the world, actually, to play that shot. Got onto it quickly. Wasn't that short, to be honest, but picked up very nicely. Mubashir has shown good strength on the onside already in the first over and a half, and he will take that boundary. Excellent stroke. That's high this time.
DPS Faisalabad was the one who qualified for the final. They did qualify for the final but could not win it. But this is here another opportunity for Divisional Public Faisalabad to play against Government College University. That will be wide. Discipline is pretty much needed here in this big game. You got to keep it tight, especially the new ball when it is swinging. You need to be within the stumps. That is the order of the day. Nervous start definitely for Abdur Rahman. He's been all over the place. Was short initially and then tried to correct his line and length. Spraying the ball wide. Going across the left-hander. Too wide. He's got an angle that he will struggle to bowl really straight to the left-hander. Ooh. That kicked off right from the angle he wanted it. So that might have put some doubts in the batter's mind. The length that it kicked off, Shah Faisal, you were there at the pitch report. Where did that came from? Not really, to be honest. I think the pitch is absolutely beautiful one to bat on. I think it's just Mubashir is looking to try and play everything on the onside. Turning the face of the bat too soon. Good line, good length. Finally, Abdur Rahman found his areas. That's where he has to land the ball consistently with this new ball to have an impact. Like we said earlier, decent crowd in that Fazal Mahmood enclosure right across the pitch from where we are sitting to the right of our commentary box. The great Fazal Mahmood enclosure. It's filled up quite nicely, creating a good atmosphere. Good for these youngsters. That's the end of 2 overs, 8 without loss, Government College University. Rehan to Daniel. Slight confusion, waiting in the middle of the pitch. He's gone. Oh, direct hit. He's gone for all money. Two batters were waiting in the middle of the pitch as a slight fumble. They couldn't make up their minds and it was too late. That ball had hit direct at the non-striker end. Watch the replay. Slight indecision. Ball watching. Daniel was guilty of doing that. He's still not watching his partner and he almost sold him down the river. The fielder at mid-on, I think he should have come to the wicket because there was a lot of time for do it. It's unfortunate. Should be called a wide. I think I saw the back of that leg stump behind Daniel. He's walking too far over. And although that ball was declared as wide, for a moment it looked like it went very close to that leg stump. Be an interesting replay if we have a look how Daniel has moved right across his stumps, showing his leg stump to Rehan. It's been a good start from Rehan. At least he's looking to pitch that ball full, asking the batters the questions. Absolutely. I think you make a very valid point. You got to throw it up to the batters. If you don't
have much pace behind you and you've got swing behind you. So that's the best way to do it. Just ball up to the batters, make them drive, because you've got two slips in place. Make them come and play. Keep an eye on Rehan, the way he walks right in front of his stumps. Again, not comfortable. You can sense that Rehan is creating some issues for the batters. That is because of his swing that is available to him. That's a good move from the skipper. He's got the second slip in as well, because Rehan is getting constant away movement. Slightly stutter in his run-up initially. That's shorter this time. If you ball at this length, it gets easier for the batters. But with this pace, as you just mentioned, Shah Faisal, you need to be bowling up to the batters. Interesting run up there for Rehan as well, if you have a close eye. He stutters pretty much from start to finish. Doesn't get into a good flow. Something the coaches can work. Have a look. He's not broken into his run up fully before he reaches the crease. This is in the air. Just falling short of that fielder at point. Once again, that movement, and Danial wasn't in control. That's the intriguing part about the cricket at this level, Ali. Like, you see a lot of these youngsters who do need a lot of ironing out of their basic techniques. And this is why this cricket is so important, because it highlights those little kinks that needs to be ironed out. And the sooner the better. Once again, that stuttering run up from Rehan. Nicely driven and good running between the wickets too. This is good cricket all round. Single was available and he just judged it perfectly. Mubashir looks a good deal at this level. 3 overs gone, 10 for none. GCU. He called immediately. Mubashir was still watching the ball. That's why he was struggling. Any youngsters watching this, the best thing is just trust your partner's call. When he calls you for run and the ball is behind you, you don't have to look behind where the ball is. Just look at your partner. If he's calling you for run, this is his judgment, and you've got to back him and trust him. Oh, that's a good delivery. Really well bowled by Abdur. That cut in towards Daniel. Mubashir hasn't had much of strike after that second over. Daniel, he's got the single of the last ball of the over. He's facing Abdur Rahman. One slip for Abdur Rahman. Rehan had 2 slips for Daniel. That's wide. Daniel trying to fetch it out from outside the off stump. That's not quite a good move at this time of the game. We're just into the 4th over of the match. It was way wide outside the off stump. You can easily let it go. The width was there. Somehow I felt Daniel didn't commit into the shot. It was a half-hearted effort. But Abdur Rahman's struggle continues with his line and length into his second over. Once again, short and wide. Once again, Daniel missing out here. He's really not balanced at the crease. Looks like he's not picking the length early, and that's why missed out on a couple of opportunities. Short and wide. He's mid-air when he's looking to make contact.
He was in no position. Abdur Rahman lucky to get away with a couple of loose deliveries. Not quite finding the gap again. He's middling it all right, but not quite placing it right. Young Daniel. That angled bat is not helping him. With that bottom hand angle of the bat, it's going square off the wicket where he should be looking to hit it straighter. Daniel is taking his time. I think once he gets in, probably you'll see all these little kinks ironing out, because that's the key. When you spend time in the middle, get better with your balance, better with your timing. Start finding the gaps. Both teams would be relatively happy with the start. We're into the fourth over, not many runs for GCU, but they haven't lost a wicket too. We've seen some swing also for the Faisalabad fast bowlers. Again, it's just not quite getting that gap going. Looks very settled batters, both of them, technically very correct. Government College, Lahore. Oh, that's nicely done. What a great placement and timing by the young Daniel. Wonderful shot to bring up his first boundary of this inning. This is such a good stride by him. That's more like it. That's more like it, because he really got on top of that ball really nicely. Decent stride. And on that occasion, that top hand taking the bat through and hitting the ball towards that extra cover boundary. Excellent placement as well. That will give him a lot of confidence, because so far he was struggling to get the ball off the square. But that boundary would really propel him. 15 for none. Ran has bowled well. 2 overs, 4 runs. He's got the ball to swing. Would like a wicket here. Just bowling good line and length also. That has been his quality. And as we said, not much pace, but the control is there for Rehan. He's bowling in the light line, the right directions. It's a very good start for GCU, considering that they lost the toss. Well, at the toss, the captain of GCU said that he wanted to bat first, so there is not much of a difference there. Just floated into him. That's what Rehan is doing. He should look to get banging into the pitch, maybe, to get some pace out of it. But at the moment, he's happily floating the ball and waiting it to swing. Probably not working. Early wickets always key in these big games, because once the nerves get settled, Shah Faisal, in the big game, it gets easier for the batters. So it's important to get those early wickets, put pressure on the opponents, especially when you won the toss and bowled first. You do need early wickets.
Nicely driven. Very nicely driven. Very stylishly driven too. Bashir has looked pretty good. His balance has been good because that in-swinging delivery from Rehan could really trouble the left-handers if you don't have a good balance. But so far, Mubashir has shown that good balance. And if you can hit that straight drive, that the last delivery that he was able to get on top of it, played straight back, it means that you got a good balance. It's a good contest here. You have to give credit to Rehan. He's not perturbed by getting driven. He's still pitching that ball up. Almost a leading edge on the last one. And when I say it's a good contest, like I said, Mubashir is looking good, but Rehan is continuously challenging him. And at the moment, no wickets for Rehan to show for his efforts. But his discipline has been very, very good. Crowd gradually building up. It's always good to see crowd coming here and backing these youngsters, because they do need support. Players like Mubashir, Rehan, it's very important for people to come and support these youngsters, show such a huge opportunity. Because I remember in our days, it was not much celebrated event, this college event. And I remember those times, us beating MEO College in the final. It was such a big achievement for us. I'm sure these young players must have the same feelings if they can do it. It's a great occasion, definitely. Once again, that aiming to play on the onside, turning the face of the bat too soon. Another good over from Rehan. 5 overs done and dusted. 15 for none. GCU. टॉस हारने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का आगाज़ काफ़ी मोहतात है। 5 ओवर्स में 15 रन्स। मुबशर मुजम्मिल और दानियल गौहर इन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैम्पियनशिप का ये फाइनल कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, पुल करना चाहते थे, बीट हुए। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं नुमान चौधरी। शुक्रिया फरहान। एक बड़ा शानदार दिन है आज जब फाइनल खेला जा रहा है सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट एसोसिएशंस का, जिनमें आज 2 बड़ी टीमों के दरमियान मुकाबला है। और अभी तक बड़ी शानदार क्रिकेट हमें देखने को मिली है कि जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम का डीपीएस फैसलाबाद के साथ मुकाबला है। और एक बड़ा ब्रेव डिसीजन था डीपीएस फैसलाबाद के कप्तान का, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। और अभी तक बड़ा नपी तुली गेंदबाजी हमने देखी है यहाँ पर डीपीएस की जानिब से। ये गेंद पीछे गिरा हुआ था, इसको कट किया और कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। और इस बाउंड्री के साथ यूं लगता है कि जो फैसला था पहले बॉलिंग करने का वो बेहतर साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अरम नवाब का। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ये दोनों ओपनर्स बहुत ही उम्दा फॉर्म में दिखाई देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हम कह रहे थे कि थोड़ा मोहतात अंदाज में आगाज किया था, लेकिन अच्छा काउंटर कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी और इसको कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से बाउंड्री की जानिब निकाला। 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम। इस मरतबा लेग स्टंप से गेंद बाहर जा रही थी, अंपायर ने फौरी तौर पर इसको नॉट आउट करार दिया। अच्छा कम बैक किया है यहाँ अब्दुल रहमान ने। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हम देख सकते हैं गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर की जाने आई और यकीनी तौर पर लेग स्टंप को मिस कर रही थी ये गेंद। इस वजह से अंपायर ने नफी में सर हिलाया यहाँ पर
और अगर हम फरहान इस टूर्नामेंट की और इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात करें, जिस तरह स्कूल क्रिकेट का रिवाइवल हुआ है सेंट्रल पंजाब रीजन में, इसके अलावा बाकी भी पूरे पाकिस्तान में, बड़ा खुशाइंद होता है ये कि जिस तरह इन यंग क्रिकेटर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इस मतलब फिर पीछे करने की कोशिश की लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए, कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये एक तवील इंतज़ार था नुमान इस क्रिकेट के रिवाइवल का, स्कूल क्रिकेट हो या कॉलेज क्रिकेट हो। अगर अब माजी में जाएं तो 50 की दहाई में, 60 में, 70 में तो कॉलेज क्रिकेट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और ये जिस कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दानियाल और मुबशिर, तो 50 की दहाई में पाकिस्तान की लगभग आधी टीम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से उसका ताल्लुक़ होता था। गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के दरमियान जो मैचेस खेले जाते थे वो बहुत ही अहमियत के हामिल हुआ करते थे। कई नामवर टेस्ट क्रिकेटर्स उन मुकाबलों में हिस्सा लिया करते थे। और ये अच्छी बात है कि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने कॉलेज क्रिकेट का, स्कूल क्रिकेट का आगाज़ किया और अब दूसरी एसोसिएशंस भी इनके नक्शे कदम पर अब चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपको इस इनिशिएटिव की सताइश करनी होगी। और जिस तरह आप बात कर रहे थे कि ये एक सिलसिला है जो चलता हुआ आया है। हमने देखा है कि एक टाइम होता था कि जब जिस तरह हम बात कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम, एक फेस्टिविटी का सा समा होता था जब ये स्कूल्स के दरमियान, कॉलेज के दरमियान इवेंट्स होते थे। लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है और बड़ी खुशाइंद बात है कि दोबारा स्कूल लेवल पर क्रिकेट जो है वो रिवाइव हो रही है। इस बार तो इसको पुल करना चाहते थे, फील्डर से जरा आगे गेंद गिरा, तेज बाउंसर था, इसको ठीक से टाइम नहीं कर पाए। और इस अच्छे और तेज बाउंसर के साथ छठे ओवर का खेल खत्म हुआ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 19 रन बगैर किसी नुकसान के। रेहान और अब्दुल रहमान सीनियर ने बॉलिंग का आगाज़ किया और टॉस पर अब्दुल रहमान सीनियर के बारे में फैसलाबाद डीपीएस के कप्तान कह रहे थे कि ये इनके स्ट्राइक बॉलर हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं। और हम नवाब को इनसे, ये अच्छा गेंद था, आगे गिरा हुआ, इसको ड्राइव किया, दोनों फील्डर्स के दरमियान से गेंद होता हुआ, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, सिर्फ 2 ही रन यहाँ पर हासिल होंगे मुबशिर को। जी हाँ, जिस तरह हमने देखा है कि पिछले 2 ओवर से थोड़ी सी अप्रोच में जो है वो तब्दीली दिखाई दी है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम की, कि जिस तरह वो काफ़ी मोहतात अंदाज में उन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया था। लेकिन अब वो दोनों ओपनर्स जो हैं वो अपने स्ट्रोक्स खेलने से नहीं घबरा रहे। और अब देखना ही होगा, क्योंकि रेहान को काफ़ी मोहतात अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो रेहान पे भी जो है वो चांस लेने की कोशिश करेंगे। थर्ड मैन और फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर, इसके अलावा तमाम फील्डर्स दायरे के अंदर हैं। मतलब पीछे गया लेग स्टंप पर, ये गेंद था, फाइन लेग के फील्डर यहाँ पर जब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चला जाएगा। ख़राब गेंद थी जिसका पूरा फ़ायदा उठाया मुबशिर ने और इसको फाइन लेग बाउंड्री की जानिब भेजा। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे फरहान के, यही वो मौका है जब इनिंग्स को बिल्डअप करेंगे ये दोनों बैटर्स। जैसा देखें, शॉर्ट बॉल था डाउन द लेग साइड, उसको निकाल दिया था फाइन लेग की जानिब। चूंकि फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन वो फिर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए और एक वेलकम बाउंड्री मिली यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को, जिनका स्कोर बढ़ते हुए 25 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ये भी गेंद लेग स्टंप पर थी जिसको वाइड का सिग्नल दिया अंपायर कैसर वहीद ने। और अगर अब दोनों बॉलर्स को देखें तो इन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा किया है, लेकिन टारगेटेड बॉलिंग नहीं थी। पिछले ओवर की आखिरी गेंद ऐसी थी जिस पर एक चांस मिला और ये देखिए लेग साइड पर ये काफ़ी गेंद बाहर थी, लेग स्टंप पर पिच हुई, थोड़ी सी स्विंग हुई और वाइड का फैसला अंपायर कैसर वहीद की तरफ से। यॉर्कर करने की कोशिश की और बड़ी आसानी से इसका दिफा किया बाएं हाथ के बल्लेबाज मुबशिर ने।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हम बात कर रहे थे टारगेटेड बॉलिंग की, अगर हम एक अप्रोच देखें कि आपने डीप फाइन लेग बाहर लिया हुआ है और स्क्वायर लेग और मिड विकेट शॉट है, मतलब दायरे के अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट बॉल ही करना है। तो यकीनी तौर पर एक प्लान के अकॉर्डिंगली ये गेंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों बॉलर्स को विकेट जो है वो नहीं मिल पाई है। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, चेस करने गए और अपील कर रहे हैं यहाँ पर रेहान, और जितने हैरान रेहान हुए उतने ही ज़्यादा हैरान कैसर वहीद भी हुए कि ये अपील क्यों कर रहे हैं बॉलर। लेकिन इस एज में नुमान इस तरह की एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और बाहर की जानिब जा रही थी, और बिल्कुल वाइड बॉल जो है वो लग रहा था ऐसा कि गेंद वाइड होगी, लेकिन अंपायर ने, कैसर वहीद ने, ये कॉल नहीं किया। और अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं। हमने देखा है कि ऑफ द सी मूवमेंट भी मिल रही है, चूंकि सिर्फ 7वें ओवर का खेल चल रहा है, और यकीनी तौर पर थोड़ा नया गेंद है, उसका कोशिश करेंगे कि फ़ायदा उठाएं रेहान। इस मरतबा दिफाई अंदाज से खेले, और यहाँ पर अगर जिस तरह ऑफ स्टंप पर अटैक करेंगे तो वहाँ ज़्यादा इनके पास मौके हैं डीपीएस के लिए कि वो विकेटें हासिल कर सकें। स्लिप हमने यहाँ पर नहीं देखी, और ज़्यादातर जो बॉलिंग है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग की है डीपीएस के इन दोनों फास्ट बॉलर्स ने। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी और डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की टीमों के दरमियान ये कॉलेज चैम्पियनशिप का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से बराह रास्त। ये गेंद आगे गिरा हुआ था, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन शॉट में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं दिखाई दे रही। मुबशिर के मिड ऑन के फील्डर के पास ये गेंद गई, और इसके साथ 7वां ओवर भी मुकम्मल हुआ, 26 बगैर किसी नुकसान के। जी हाँ, बिल्कुल। 7 ओवर्स के अख्ताम पर मजमूई स्कोर है 26। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी। याद रहे कि ये सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैंपियनशिप 2021 और 22 का फाइनल मार्का है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल की टीमों के दरमियान। 40 ओवर्स पर मुश्तमिल ये फाइनल मैच, जिसको देखने के लिए क्राउड की भी तादाद जो है वो काफ़ी आई हुई है। और बड़ा अच्छा और बड़ी खुशाइंद बात यह है इन तमाम यंग खिलाड़ियों के लिए कि इनके पेरेंट्स, इनके टीचर्स, इनके कॉलीग्स, इनके साथी जो हैं, क्लासमेट्स, वो उनके मैच को देखने के लिए आए हैं। और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अगरचे काफ़ी गर्म मौसम है, लेकिन काबिल सताइश ये बात है कि ये लोग फिर भी मैच देखने आए हैं। ये जो है इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच है। 40 ओवर्स पर मुश्तमिल पिंक बॉल से खेले जाने वाला ये मार्का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। इस पर फिर शॉर्ट गेंद से आगाज किया अब्दुल रहमान ने अपनी बॉलिंग का, और ये बहुत बड़ा ये मौका है इन दोनों टीमों के लिए कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मुकाबला खेल रहे हैं, और उनको देखने के लिए ना सिर्फ उनके साथी, उनके उस्ताद, बल्कि दुनिया भर में ये जो टेलीकास्ट है वो बराह रास्त देखा जा रहा है। ये मुकाबला पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो इन नौजवानों के पास इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि वो अपने टैलेंट को सामने लेकर आएँ और दुनिया को दिखाएं कि वो कितने बासलाहियत हैं। ये गेंद भी शॉर्ट बॉल था, इसको पुल करना चाहते थे, लेकिन ताख़ीर हुई शॉट खेलने में। तो नुमान जो शॉर्ट पिच बॉलिंग है वो हमें मुसलसल दिखाई दे रही है इन पहले 8 ओवर्स में। जी हाँ, बिल्कुल जी। ये देखिए शॉर्ट पिच बॉल था और इसको पुल करना चाह रहे थे। तारीफ करनी होगी बॉलर की, क्या वो बिल्कुल फील्ड के अकॉर्डिंगली वो गेंद कर रहे हैं। सर, मैंने पहले भी बात की है कि उन्होंने स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर को दायरे के अंदर रखा हुआ है कि अगर बैट्समैन पुल खेलने चाहे और उससे वो शॉट मिस टाइम हो जाए तो बॉलर जो है वो विकेट लेने में भी कामयाब हो सकते हैं। तो अभी तक अब्दुल रहमान और रेहान ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड और अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ गेंदबाजी की है। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, स्लो बॉल, गेंद हवा में गया, मिस टाइम हुआ, और यहाँ पर पहली कामयाबी हासिल हुई है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद को। और दानियाल इस गेंद को बिल्कुल नहीं समझ पाए, चेंज ऑफ पेस किया अब्दुल रहमान ने और अपनी टीम को पहली बड़ी कामयाबी दिलवाई। जी हाँ, बिल्कुल। अक्सर कहते हैं कि आपको पेस से ज्यादा अगर दिमाग से गेंद करें तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। पिछला शॉर्ट बॉल था, अब की बार चेंज ऑफ पेस किया, बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल थी और इसको हवा में खेल बैठे और जो है वो शॉर्ट मिड विकेट से फील्डर ने आकर इस गेंद को कैच किया। तो यहाँ पर पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुई है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की टीम, जहाँ पर दानियाल गौहर को 10 रन बनाकर आउट किया है अब्दुल रहमान ने। बड़ा अच्छा कैच किया नबील ने, और इसके साथ ही 26 के मजमूई स्कोर पर पहला नुकसान उठाना पड़ा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम को।
8वें ओवर में पहली कामयाबी मिली है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद को, और ये कामयाब बॉलर आपकी स्क्रीन पर। इस मरतबा फिर शॉर्ट बॉल, नए आने वाले बल्लेबाज ने दिफाई अंदाज से इसको खेला। जी हाँ फरहान, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आपको पेस से ज़्यादा अक्सर जो है वो अपने दिमाग से गेंद करनी होती है, शॉर्ट बॉल के बाद ये चेंज ऑफ पेस था, बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल थी और इसको खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल बीट हुए बैट्समैन और एक बड़ा शानदार कैच किया मिड विकेट के फील्डर ने, और काफ़ी जो है वो स्टैटिक थे यहाँ पर अब्दुल रहमान के, उन्होंने पहली कामयाबी दिलवाई अपनी टीम को। फिर शॉर्ट बॉल किया और इसको पुल कर दिया फाइन लेग पर। फील्डर मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे, लेकिन एक ही रन यहाँ पर हासिल हुआ गुलाम को, जिन्होंने अपना अकाउंट भी इस एक रन के साथ खोला। गुलाम हफीज हैं नए आने वाले बल्लेबाज। दिफाई अंदाज से खेला, थर्ड मैन की जानिब एक ही रन हासिल होगा और इस एक रन के साथ गुलाम हफीज ने अपने रन्स का खाता खोला और ये 28 रन्स पर 8वां ओवर ख़त्म हुआ, जिसमें पहली कामयाबी हासिल की है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद ने। "28 for 1 is Government College University at the moment after the end of 8 overs in this mega events final. The Central Punjab Cricket Association's chairman is along with us, Abdullah Khan Sumbul. It's a pleasure to have you in the commentary box with us, sir. I'm honored to be here. Starting about, I've got a lot of questions to ask you about this initiative that you've taken at this young level, giving these youngsters exposure to come and play at Gaddafi Stadium, being televised. First of all, congratulations for that. And how did that idea came through your mind? This wasn't really an idea, it was the requirement of the Pakistan Cricket Board's domestic cricket framework. So, it is in a continuum. We've already seen the school championship coming towards the conclusion with very good results, all the results being documented. So this essentially is a continuum.
and college cricket obviously was the next in line. We also are thinking about university cricket seriously, and the response of the universities, their vice chancellors, and their administration is quite positive. So by the look of things, we are in for some more interesting times where university cricket would also be taken up seriously. College cricket obviously means a lot to us. College was one unit in the past, historically, which used to provide regular members to the Pakistan team, the Pakistan under-19 as well. This age cohort that we're looking at right now, which is playing in front of you, is basically up for under-19 level. And I think they'll be seriously competing for under-19 positions, both at the regional level as well as at the national level. Yeah, we already know that Arham Nawab from Divisional Public Faisalabad is represented Pakistan under 19s this year. Yeah. It's such a great initiative and such a great opportunity for him also. Another question that I really wanted to ask, is there any academics process going along with the cricket, also with sports, that will be there any benefit if they're good in academics? Yes, for one, the first and foremost consideration is that our school and college championship should be exactly in accordance with the academic calendar. There should be no conflict, no clash with it at all. So we made it a point to schedule it accordingly. This said, yes, I think budding sportsmen should also be good students. We've always seen that many good students are good sportsmen as well. But really, to take sports seriously is obviously time-consuming. One good thing that is happening at the college level, I was talking to a few principals, a few vice chancellors as well. Government College, basically being a university now, a good number of students are given admission on sports basis. So there is an incentive for budding sportsmen to really improve their skills and then get admission to the more renowned colleges and educational institutions. So there is an incentive there. Another thing is that various programs of the government which are looking at talent hunt, not just for sports alone, but for other performing areas as well, are also shaping up well. So I think in a major way, all good performers, be it in sports or any extracurricular areas, have some incentives on offer all the time. And if they really improve their skills, hone them well, and they could be up for very interesting things. It's going nicely at the moment for GCU. They're 29 for the loss of 1 wicket only. And we are just at the end of 9th over. 29 for 1 is GCU. Chairman Central Punjab Cricket Association Abdullah Khan Sumbul Sabit already is here with us. And we will ask him what is next in pipeline. We already know that there is a 2-day final tomorrow also starting. And what happens after this? Yes, so the idea was that, to keep the school cricket going for a substantial period of time. So we began in September where, as I just shared with you, that the academic calendar is lean then, and all the school-going boys have sufficient time at their disposal, and their school administrations don't mind as well. So that was the best period. But then a select group of schools who were more interested, who had better facilities as well, playing facilities as well, and who had done well in the in the inaugural school cricket championship, they were invited, they were offered, it was an offer, there was no compulsion in it. The high achievers were asked to play for certain schools as well, to the schools, for the schools that they didn't belong to even, so just to make it more competitive, right? So this was done very methodically. So this was the first, experience that we had in Central Punjab. We've also shared our experiences with other regional associations. There are 5 others, as you know, all over Pakistan. There are 6 in all. So we've shared our experience, our learning curve with them, and we've told them as to how to go about it. So again, coming back to your question, essentially, a lot is in the offing. We'll keep the youngsters busy right down to the summer period. When we go into the summer league, which will be more about clubs playing amongst each other. There was a winter league of clubs as well, all over Pakistan, so not just in Central Punjab as well. Let me also tell you that. But in Central Punjab, it was something that was in a way a continuation of school cricket leading to the college cricket. So the same players who are in our schools and in our colleges also are members of clubs. So that was very interesting. Another very interesting induction
for which we sought permission from the PCB, was community club cricket. So, for instance, in Lahore there were 25 communities comprising 8 clubs on average. So 200 clubs divided into 25 communities and playing. Very good community club cricket. Very competitive. There was ownership of local communities. I think it generated more interest, and again the results have been documented. And as you said, the last thing that you asked was about our, this two-day league, this weekend league. This was on the directions of the PCB and from the patron himself, the Prime Minister, that basically school cricket also needs to be played over longer periods of time, just to give the players, that kind of an attitudinal change, whereby they could play in the longer version of the game. So 75 overs cricket gives you ample opportunities to test your skills, also your stamina, also your levels of concentration and focus. So I think this is something very interesting, and again the results will be documented. The idea is to share all this learning with all the associations. So this is a promise that we made with the PCB also. Yeah, you talk about other associations, so we can expect in future that the winner of Central Punjab College Championship may be playing with, let's say, Sindh Cricket Association champion? Absolutely, that would be the most worthwhile thing to do, and obviously we are heading that way. That's the way it should be. We should have a national college champion as well, a national school champion as well. But as of now, the landscape is just filling out, right? For school cricket, I guess as of now, 3 of the 6 associations have completed their school championships. So once all 6, I think he's got. Yeah. Yeah, as we were talking about some good things, another good thing that has happened, but that was of a no ball. We all thought that it's gone in the air, but it was of a free hit, the previous ball being a no ball. So a chance for GCU batters at the moment. They all have a look at this again. It was the no ball was the previous one, so you cannot be out on the next delivery as he lofted it in the air. It was a simple catch, but unfortunately they cannot have a wicket on this as we come. The score is 34 for 1. It's being guided towards the third area for 1 run. Chairman Central Punjab Cricket Association Abdullah Khan Sumbul Saab is still with us, and we were talking about this inter-associations championships matches too. Yes, that would be the best thing to happen, and I think we're gradually heading towards that, as I submitted to you. So I think as of now, 3 of the 6 associations are done with their school championships. So by the time we'll be into the next academic circle of schools, we'll have all the 6 associations having completed their school championships, and then we could actually start looking at a championship of the 6 winners, right? And that would be brilliant, absolutely. The same holds true for college cricket. This is the first association which has ventured into college cricket. Just the other day, Sindh Cricket Association was talking to me, and they also asked some questions about the college cricket. So I think it's something that it has to happen, because the PCB constitution actually demands that. So we're just working in accordance with that, and the best bet would be that we have a school champion, a national school champion in cricket, and we have a college champion, national college champion, and then followed by a national university champion. That would be the icing on the cake, really. Wonderful. I can surely say that this career path, it doesn't just get better, any better than for any cricketer. Just been given so much of these platforms to come and perform and showcase their talent. And like over here, if a young guy performs here on a match being televised, the boost it will give him to his career, I think it's phenomenal. Yeah, it will be massive. I just spoke to a few team members of both the sides, and one could feel their excitement. They were really on the edge and very excited, really, getting ready for the go, and very, very good, to see so much interest. And I'm sure because it's just happening during the Ramadan month, after the Iftari break, when the second inning is being played, I'm sure the stadium would also be, reasonably full of spectators. Both the educational institutions will bring in crowds. Some other colleges from Lahore are also being brought voluntarily. There's no direction by the government as such, but voluntarily we made it a point just because of Ramadan. So I think the interest is there, and it couldn't get any better, as you said very rightly. Also, let's also look at it from a different angle, from a different dimension.
the school high achievers, high performers have a natural continuum to go into under 16 cricket. The college ones could actually be targeting under 19 cricket. So that's again the logical connection. So it's all interconnected. Club cricket, school cricket, college cricket have kind of a triangular relationship now. We've kind of figured that out. And community club could be actually somewhere in between that triangle. Could be a circular arrangement whereby you could have players coming from school cricket, college cricket, as well as club cricket. So because community is a new creation, the community club is a new creation. So you could have inductions also from schools and colleges, depending on which city you are playing in and which city you belong to. So again, I think it could be a very interesting arrangement and very challenging for the youngsters also. Absolutely. Spain being introduced. Aram Nawab, we were talking about the youngster who represented Pakistan under 19, and that is what exactly Abdullah Khan Sumbul Saab were telling, that this is an opportunity from the school cricket. You would want young guns to go and represent Pakistan at under 19 level. And here is one example right in front of us. Yes. So I think we want to see more of Aram Nawabs, and this is the way to go. We have had a history of college students making it to Pakistan under 19. So many examples are in front of us. So many names come to mind immediately when you look at it. Even school prodigies have made it to the national level. Mushtaq Mohammad Saab was a school student when he made his test debut. So as they say, you can always blood them young, and if you blood them young, you can take them places. They can really go places, make their mark at the higher levels, and go on achieving and improving the skills, and then making their mark even at the national level. So that's the idea. So it's all framework. It's all well thought out, and we'll go on introducing improvements in this process. This is a learning by doing phase for us also here in CPCA. So I always keep telling my team members who work very hard. The entire CPCA board is right behind us. They are all present actually with us here today. They have really made it a point to join us. And they come from different parts of Punjab, so they've actually travelled to Lahore for this. So really, augurs well for the future, I guess. Absolutely. We've covered the cricket part of this whole associations and cricket championship. I just want to talk about the commercial aspect now. What do you think? What would you suggest to people about the sponsorship? All these multinationals were working in Pakistan to come and help or sponsor these young school cricket champions, because there has to have a financial benefit for these youngsters too. Absolutely. I think that's something that is very much in our minds, and I think that's where we could actually introduce improvements, and it could be it could lead to a much more incentivized and much more rewarding system for the players also. So that is something that is bound to happen. Let me also tell you that this community club cricket that we just got completed was sponsored. For instance, in Lahore it was sponsored by Service Industries and Amir Cables, and in Sialkot and Gujranwala it was sponsored by Air Sial, one of the leading airlines of the country right now. And in Faisalabad, many industrialists joined hands and financed some of the matches. The government has a role to play. I work for the government also. I believe that the government has a serious role to play when it comes to cricket played in educational institutions, because the educational landscape is most visible and most known to the government than anybody else. So we have an advantage there, and the government has also funded it. This championship, for instance, has been funded squarely by the government of Punjab through the Higher Education Department, and the Secretary of Higher Education Department will be with us in the evening for the award ceremony, we hope. Yes, absolutely, the point that you've made is very well taken, that sponsorship is the name of the game. It really would give a lot of boost to the entire effort, make it very encouraging for youngsters. Then also we are looking at sending our youngsters to these national cricket academies, to the high performance cricket centers. 2 high performance cricket centers are being established in central Punjab, one in Faisalabad, one in Sialkot, and they should be completed around September to October this year. So there will be
formal, agreement signed between the government of Punjab, because the government of Punjab is building them, establishing them, but the staffing would be done by the PCB, and the operations and maintenance would also be done by the PCB, because they are much more well equipped to handle this. So this is also going to be big. So these high performers could actually make it to the cricket academies and high performance centers as well. And again, some of them could be picked up by sponsors, and taken to higher places also. Yeah, talking about different high performance centers, would that be a good idea? Like we have in academics, there are exchange programs with the universities abroad. We can always have exchange programs within the sports industry, like cricketers from here, from our region, going abroad for some other universities, exchange program just on cricket basis. I think it would be very doable if only we strategize it well, and it's in our minds. But I think you've put it much more clearly for us. This is the way to go forward also. One of our board members, Atif Rana Sahab from Lahore Qalandars, who's also a member of the CPCA, actually suggested that he has had some working relationship with one of the universities in Australia, probably the University of Melbourne, and he was thinking on those lines. It didn't work out this time because Corona became a big issue in Australia exactly at that point in time, November or December of 2021. So we couldn't take that forward, but it's very much in our minds, and we would really like to think through this, plan it well, strategize it, and then take it forward meaningfully. It's really worth doing, and I think it is something. When you're looking at educational institutions, when you're targeting them, the next logical step is taking them abroad and having regular, well-conceived associations and partnerships. Absolutely. As we come to the end of 12 overs at the moment in this mega event, the final of Central Punjab College Cricket Championship, this Government College University Lahore taking on Divisional Public School Faisalabad. It is such a great opportunity, a great event here at Gaddafi Stadium, Lahore. A great prospect for these youngsters to come and showcase their talent. And while we talk to Abdullah Khan Sumbul Sahab, the chairman Central Punjab Cricket, who's very happy indeed for this event being televised here on a big stage, and all the team members must be a very satisfied team today watching this in front of you. Absolutely. I think it is the success of the PCB. We are part of the PCB. We work for them, with them. They'll be here in the evening celebrating with us. We are in for a good match by the look of things. It's a good solid start by Government College University Lahore. So I think we are in for a very even context. Let's hope for the best. Yes, absolutely. Lots of comfort, lots of heart we have drawn from this. We believe that our work is still cut out. We have a long way to go. As I told you, and I really meant it when I said this, it wasn't out of humility only that, we are on a learning curve. We are learning all the time. The PCB constitution is obviously foremost for us, and we just want to deliver on that. And we can't thank the PCB enough also for the collaboration. We really are mighty grateful to the Pakistan Television Corporation, to all of you, to your entire crew, to have made it during the month of Ramadan and televised it live. I made a personal request to the MD myself. The PCB was obviously talking to him all the time. So really very kind of the PTV to have encouraged these youngsters. I think it means a lot to them. I'm sure their families, their mohallas, their friends, everybody are watching them live, and it's really it can't get better and bigger than that. And let me tell you, a few friends in England are also watching this game. They've just messaged me that we are watching this game and they're loving it. The initiative being taken by you and PCB. That's so good to know. That's very encouraging. Absolutely. And with that, we'll say thank you to Abdullah Khan Sumbul Sahab. It was great to have you in the commentary box. Great to have your views on what you think where this cricket shoot is heading. And I can clearly say that it is in the safe hands, and we wish you all the best for the future events. I'm so grateful to you. Thank you. Thank you very much. And we come back to the live game at the moment. 46 for 1 is GCU at the moment. Mubassir has looked solid for his 19 runs at the moment. Ghulam is with him on 9 as Arham Nawab is into his second over. The guy who represented Pakistan under 19. 46 for 1 is Government College, who were invited to bat first by the Divisional Public School captain. And it is a good solid start by GCU. Remember, it is a 40 over game, and
At the end of 13 overs, it's 47 for 1 GCU. I've been joined in the commentary box by my very dear friend Shah Faisal, who keeps a very keen eye on this technical aspect of the game, as we see crowd building up gradually, and Sumbul Sahab was of the opinion that after the Iftari it will improve, it will increase this crowd here at Gaddafi Stadium. And why not? It's such a proud moment for all the families of these youngsters playing here at Gaddafi Stadium, Lahore, in a big final, as the next one has been driven through the gap. One more run added to the total. Shah Faisal, a very happy man today. Indeed, Ali. It's a very, very great occasion actually for all these youngsters and for all of us as well to be a part of it. It takes us back to our days when we started cricket, and I don't know about you, I played a little bit of school cricket that used to be on knockout basis in those days. I'll come back to it in a minute. This is in the air and in the gap as well. Won't have enough legs to go to the fence, but a couple of easy runs there for Ghulam. Bashir is still carrying on 21. So talking about school cricket back in the day, it used to be knockout cricket. So any year that you lose your first game, you're out of the competition. So generally, you weren't getting enough opportunities, as we look at the crowds in the Fazal Mahmood enclosure. And it did bring a lot of excitement and exuberance at that age, just knowing to be part of a competition that was widely watched. And imagine that competition, the intensity that you're talking about. Had that been televised at that point, it would have been much different. But such a great opportunity for these youngsters. That's clearly the difference, being televised. And when I say we were getting excited about being watched by quite a few people, but nothing compares to this. It's like stutter in the run-up, goes up and over, only clears the mid-off by just only a few meters. He didn't get hold of it. Not a clean connection at all. Mid-on fielder was back paddling, couldn't get to it. Was in the air for a bit. The idea was right, but the elevation, the force was not quite behind that shot. Have a look at that again. Came down the track, wanted to go over that mid-on fielder who's inside the circle. It was a good idea to go over that head, but the elevation, the force was not quite there. All is well, he gets 2 runs. Oh, that's edged it. There was no slip there. Just one more thing you notice at this level, the third man and fine leg are very, very fine. So that edge didn't go to the boundary. So the excitement of playing on such a huge platform is enormous for these youngsters, and there's nothing like playing at the home of cricket in Pakistan, Gaddafi Stadium. And at the moment, it looks like they're really enjoying it. And the crowds that you're talking about, it's gradually building. To say Nabil is really struggling in his run-up. He's really struggling to get to the page, get to the wicket. Pretty sure that Salman will be having a keen eye on that. It's a 40-over game. And these kids, generally, the tendency has been, even in club cricket, that the duration of the games have shortened. Sometimes it's 30 overs or mostly 20-20 these days. So 40 overs will test their stamina and endurance as well. The over comes to an end, 55 for 1. Talking about this 40-over game, Ali, what do you think should be a good score at this level?
Look, anything around 250 mark would be a good total. That is what we heard from the captain of GCU at the toss too. He was of this opinion that if he could get anywhere around 250, it would be a very good total, because this is a big final and it's never easy chasing in a big match and a big final. Under lights, crowd will be building up. So if GCU can get to that 250 mark, they're definitely in with a chance. Arham Nawab, an off spinner, a very rare talent these days to find a proper off spinner these days. And definitely selectors will be keeping an eye on this youngster, Arham Nawab. He's the big name in this DPS side. Flighted delivery. Once again, didn't time it as well as he wanted to. Will still get him a couple of runs. But like Ali said, Arham, you have to keep an eye on him. Arham Nawaz. He played in the World Cup for Pakistan just recently. Got a beautiful action. Save. Just struggling with his line at the moment and length. How would you feel, Ali? Like you just played a under-19 World Cup and a step down. This, how would you motivate yourself for this game? If you were Arham Nawaz? Oh, you'll have to hurry! Ooh, it's given him out. Yes, that's what we were thinking. It went straight to the man. Oh, everybody could see but the batter. That's an unfortunate way to go. That's Ghulam on your screen. It went straight to the fielder. There was no way that a run could have been taken. But he cannot blame anyone but himself. Have a look at that again. It was pushed hard and just couldn't come back. Easy decision that was. Ball watching was Mubashir, but there was no run in the first place. He called for it, his partner didn't respond, and he had to pay the price. Ghulam Hafiz gone for 17. That partnership was started to build, it was looking pretty nice, but now it's been broken courtesy a run out. 59 for 2. आजा बेटा आजा जल्दी जल्दी अभी वक्फा करेंगे बैठ जाएंगे 5 ओवर के बाद जल्दी बेटा जल्दी Crowd, you could see there's some families in. It's good to see, very good to see in a game like this to have some presence of crowd, and the youngsters will really get a big motivation from that. And before that fall of wicket, like I said, the partnership was building, and Hassan is the new man, but he will be at the non-striker end because Ghulam ran himself out. Once again, Arham Nawab, a juicy full toss. Mubashir may feel he's missed out here. Definitely. It was there to be hit, but the pressure of they've just lost a wicket here, GCU. So maybe Mubashir, realizing that he's the one who has to back through the inning. We all know, in fact, I definitely know how Saud Khan operates. We'll keep on talking about him for a bit. 15 overs gone, 60 for 2 GCU. Slightly slow over it. Just
15 overs done. Remember the starting time was 3:15, so almost an hour and 15 minutes. Umpire Kesser is a very experienced umpire. Have to push things along. It can be intimidating for these youngsters playing in these conditions. Momin, left arm wrist spinner. Very exciting talent. Whenever talent like this comes through, we all get excited, and definitely Momin is one of those left arm wrist spinners. Starting off his spell here for Faisalabad. Very well bowled, very well bowled. I see very talented players from Faisalabad. I remember the last time when it was school championship, although they lost the final, but there was a lot of talent in that Faisalabad side. And over here also in the college championship, being very well coached by Mohammad Salman, the former wicketkeeper of Pakistan, toured West Indies. So that's a very exciting stuff from DPS Faisalabad. And a good start for Momin. He's landed pretty much all of his deliveries. He gives it a good rip. Keep a close eye on his action as well. Nice balanced run up. Comes from over the top. Once again, good delivery. Like Ali said, left arm wrist spin is very rare. New time one comes on the scene, keep an eye and see how much he can progress or develop. So far, Momin has shown good control. You know, it's what's even more rare is a wrist spinner with control. And I think Momin is definitely one of that breed who's got control with that wrist spin going. Because it's not an easy art, that left arm wrist spinners. And if you can control it like he has done so far. And look at that again. Brilliant line and length. That is what you want to see, a youngster with control. It looked like a top spinner. It bounced and hit him up above the thigh pad. That's pretty good so far. That's exciting stuff here. If he can finish it off with another good one. Hurries the batter on. Once again, a top spinner rushes on to the batter. Excellent stuff from Momin. Shah Faisal, let me tell you, I think we've got a real deal here in form of Momin. I think he's probably the one we can definitely look for future. Although he just bowled one over so far, but the control that he has shown, the ability, the line and length, I think that is remarkable. And all those PSL gurus, I always call them gurus, will be having a keeping an eye on this youngster and Arham Nawab also. Because this is where the cricket is now in college, at college time. It's very important to pick the guys from this age, from this stage, and groom them. And Momin, Arham, I think you got two at the moment. That's a good run. Yeah, talking about Arham as well. Arham Nawab. He's got a very bouncy run up. And he's another of those off spinners who's bowling from over the top. Like we see Sajid Khan in Test match cricket. He bowls from side. He doesn't give it a rip from right over the top. More relies on side spin. Look at Arham. He bowls from right over the top. He seems like an old school traditional off spinner that we used to see when we were young. And since that time, the art has, died down a little. You don't see many off spinners these days, especially at domestic level. We were covering all the tournament. We hardly saw a youngster coming as an off spinner. Sajid Khan was one. That's all I can remember of. Just one off spinner, one proper off spinner in that Pakistan domestic circuit. A couple of part-timers, yes, all-round cricketers, but not a specialist off-spinner. So if you can get an eye on somebody like Arham Nawab, I think that's one for the future. You get to see a lot of off-spinners at the age group level, but somehow they get lost in between and they cannot develop into a proper or a regular team member at the first-class level or senior level.
Arham is definitely one to keep an eye on, and Pakistan has identified him. He was, like I said, part of that World Cup team. A good over then. Spin twins from DPS Faisalabad looking to take control. 63 for 2. Government College Lahore will have to weather the storm of these two spinners in a way, because these are the trump cards of DPS Faisalabad, bowling in tandem at the moment, looking to put the brakes on and get the breakthroughs. 8 deliveries, and all of them have been right on the money from Momin. The revival of school and college cricket is really a good step in the right direction. Oh, that's wonderfully bowled. That is why I'm asking you to keep an eye on this youngster, Momin, because he's got the art, he's got the control. At this age, if you have this control and a good head on your shoulder, you've got a bright future. And definitely the cricket, these last 17 overs that I've seen cricket, he's been the most impressive at this level. The length, Shah Faisal, spot on. Your thoughts on that? Yeah, he's landed most of the deliveries, which is a good sign. No full tosses, no long hops yet, which you associate with wrist spinners, especially at this level, at a younger level. Keep an eye on that slip fielder though. Look, you see in the foreground of your picture, he's almost right behind the wicket keeper, just hugging the right shoulder of the wicket keeper. I wonder if the skipper notices that and try to push him slightly wider just in time before that edge is found and it's away from him. That will earn him one more run through the gap. The fielder was just brought towards the leg side as he bowled it way around towards the offside. Hassan, on your screen, he's the second leading run getter of this championship so far. It's been the reason that Government College has qualified for the finals. As we come to the end of 18 overs, it's 65 for 2 GCU. Right arm over. $65 for 2. Government College University at the end of 18 overs after being asked to bat by Divisional Public Schools captain. Shorter one. That's poor bowling. Lucky that it didn't go into the gap, it went straight to the fielder. Not surprised, we have a change in bowling. It was the first ball bowled by Abdullah. Arham Nawab just took him out after a very short spell, 3 overs. He brought Abdullah on, off spinner. $40 overs a side contest, so we're reaching the halfway stage, and 66 for 2. And Ali, the target that you were talking about, 250 in 40 overs. At the halfway stage, it looks very unlikely. What do you think? At the moment, looks difficult, but as they come back for 2,
They'll have to run really hard. I think a lot will depend on this partnership, how this partnership goes along. Hassan, we know that he's the top getter for GCU, second of the championship. Mubassir has looked good. He's taken 57 deliveries. Probably he's the one who should now look to accelerate a little bit. He's been there for 57 deliveries. Remember, it is a 40-over game, so if your opener is there till 57 deliveries, you expect him to score big. And that is what GCU would be hoping from somebody like Mubassir, to carry on and accelerate a bit. As we see, oh, it had gone down. It went straight to the fielder. It was hit forcefully. He just could not quite grab it. A lucky escape for Mubassir. Mubassir realizing the need to force the issue. Hit it straight down the ground. And that was plenty of force behind it. The height was awkward. He couldn't decide if he wanted to catch his fingers pointing up or down. In the end, went sideways and couldn't get hold of it. That's a lucky escape for Mubassir because he's used up all those deliveries and his team would definitely want him to make use of those deliveries. 69 for 2. Let's have a look at most runs scored in this college championship. Musa Azim from Government Murray Graduate College, 7 matches, 350s, 200s, 421 runs to his name. Hasnan Kamar from Government College Lahore, 8 matches, 412 runs. Ubaid Shahid, Muhammad Danish Nawaz, Muzammin Yassin also in the list. So some talented list. well ball, Mohammed. Boys. 71 for 2 GCU in pursuit of that target that they've thought 250 mark. At the rate these two are going, it looks like a mighty task from here. It was a good run though, a risky one. But as you just said, Shah Faisal, Mubassir has taken 61 deliveries. It won't be advisable that he loses his wicket at the moment, at this time. He'll be the one who has to force the issue. Not easy against Momin. I think there was a hint of a wrong in the last delivery. Once again, beaten in flight. Excellent bowling. Bashir is trying. I think he realizes the time has come for him. But the bowling is excellent. He's got a golden arm. This lad has got a future. Momin from Divisional Public, Faisalabad. I've hardly seen a left arm wrist spinner of this age with so much control and authority. And I'm sure performing here at a big level at Gaddafi Stadium, all those big gurus watching, this will do world of good to his confidence and his career. The most impressive thing is the length. He's landed every delivery and he's not afraid to toss the ball up. And I know he's playing against this similar ability players and they haven't taken him on just yet. But oh, was there a chance? Was there a chance? That's the question here. They ran as soon as he hit it. Lucky escape another time. Talking about Momin's length, the impressive thing is that he's landed and he's not scared to toss the ball up. Once again, that was the wrong one. Play and a miss. Excellent delivery once again. Superb over from Momin once again. At the halfway stage, GCU 73 for 2. And the players will take drinks.
right.
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल है। नुमान 20 ओवर्स में 73 रन सिर्फ बनाए हैं जीसीयू ने, तो कहां पर इस इनिंग्स को फिनिश होता हुआ आप देखते हैं 40 ओवर्स के इस मुकाबले में? शुक्रिया फरहान। और 73 मजमूई स्कोर है, सिर्फ 2 विकेट्स गिरी हैं। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे देख रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को, कि अब उनके पास 8 विकेट्स पवेलियन में बाकी हैं, और अगर वो नेक्स्ट 20 ओवर्स में थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं तो यकीनी तौर पर ये स्कोर को 190 195 या लगभग 200 तक जरूर लेके जा सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बैटिंग की बात करें तो मुबशिर मुजम्मिल अभी तक खेल रहे हैं, 31 रन बनाकर 64 गेंदों का उन्होंने सामना किया। दानियाल गोहर 10 रन बनाकर आउट हुए। गुलाम हफीज को रन आउट किया और हमने 17 रन बनाकर वो आउट हुए। और इस वक्त हसन कमर और मुबशिर मुजम्मिल बैटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आने वाले बैट्समैनों में अबू बकर, इस टूर्नामेंट के एक जाने माने खिलाड़ी जहांगीर खान, कबीर जैसे बड़े नाम मौजूद। और अगर हम डीपीएस की टीम इस गेंद को कट किया, स्वीपर पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन यहाँ हासिल होगा। तो स्पिनर्स ने कंट्रोल में भी रखा हुआ है इस वक्त जीसीयू को। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह फरहान आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं और अब्दुल्ला और उनके साथ हमने देखा अरहम ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ा खुशाइंद है ये देखना कि ये दोनों स्पिनर्स न सिर्फ नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं कि रन्स भी जो हैं वो अपनी टीम के लिए रोक रहे हैं। बैकफुट पर जाकर मिड विकेट पर निकालने की कोशिश की, इसको कामयाब नहीं हो सके। और फरहान हम तवातर से ये बात करते आ रहे हैं कि इन मैचेस को ना सिर्फ इतने बड़े ग्राउंड में होना बल्कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर में दिखाना, मैं यकीनी तौर पर आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि कितना खुशाइंद होता है इन प्लेयर्स के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को सही अंदाज में रीड नहीं कर पाए यहाँ पर बैटर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों टीम्स के लिए, इनके सपोर्टर्स के लिए। हमने स्टैंड्स में देखा कि कुछ उसातज़ा भी मौजूद थे, इनके वालिदैन भी मौजूद थे। तो बहुत बड़ा दिन है ये इन दोनों टीमों के लिए जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल है। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको हसन कमर पुश करना चाहते थे और तेज़ी के साथ एक रन मुकम्मल किया। एक्शन रिप्ले देखना होगा कि ये गेंद फील्डर से कितने फासले पर गिरा है। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की। यहाँ पर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर मौजूद थे, गेंद कैरी नहीं हो पाई उन तक, और लिहाजा किसी नुकसान से बच गए थे। यहाँ पर हसन पर गए, इसको कट किया। पॉइंट पर फील्डर ने बड़े अच्छे अंदाज से इस गेंद को फील्ड किया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट के लीडिंग परफॉर्मर्स में हसन कमर का शुमार है। 412 रन बनाए, सेकंड लीडिंग रन स्कोरर हैं टूर्नामेंट के। 21 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है 76, 2 विकेट्स के नुकसान पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम पहले बैटिंग करते हुए इस सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैंपियनशिप के फाइनल में। और अभी तक जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला था वो भी काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित दिखाई दिया है। और हम नवाब का, जिनके बारे में इससे पहले हमारे साथी बता रहे थे कि पाकिस्तान की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। वर्ल्ड कप में उन्हें कोई मैच खेलने को तो नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनसे भी हैं। और ये जो मोमिन कमर हैं, 3 ओवर्स में 7 रन दिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है इस फाइनल में। तेज़ी के साथ एक रन मुकम्मल किया। और रिस्ट स्पिनर्स का अगर हम दुनिया भर में देखें तो आजकल दौर दौरा है, और जहाँ भी कोई रिस्ट स्पिनर दिखाई देता है बाएं हाथ का तो फौरन नजरों में आता है। और यही चीज़ हम मोमिन कमर के हवाले से भी देख रहे हैं। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए हैं। और फील्डर शॉर्ट थर्ड मैन और डीप पॉइंट से उन्होंने आकर गेंद को फील्ड किया। और जिस तरह हम बात कर रहे थे रिस्ट स्पिनर्स की, तो पाकिस्तान में भी फैसल अकरम को हमने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो सदन पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अंडर-19 टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा मेहरान मुमताज़ जो भी पाकिस्तान अंडर-19 टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप के लिए। तो फिर बैकफुट पर जाकर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर जो है वो काफी तवील चेस था उनके लिए और
कुछ इंचेस ही बाउंड्री के अंदर रोकने में कामयाब हुए और दोनों बैटर्स के दौरान बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमने देखी है। यही इनिंग्स का वो रीबिल्डिंग फेज़ है, यही इनिंग्स का वो मोड है कि जहाँ पर आपने अटैक करना होता है तो यकीनी तौर पर आपको ये जो ऑड डबल्स और हैं इनको लेना होगा और सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करना होता है। या यहाँ पर अब गियर बदलने की ज़रूरत है जीसीयू को। और ये ओवर इतना अच्छा नहीं रहा मोमिन कमर का। अगर हम पहले 3 ओवर्स की बात करें, काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की है मोमिन ने इस ओवर में। ये गेंद आगे गिरा हुआ था और जिसको सॉफ्ट हैंड से खेला जब तक फील्डर आते, बहुत ही तेज़ी के साथ एक रन मुकम्मल किया। तो ये सिंगल्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेंगी क्योंकि बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा नहीं मिली जीसीयू को, तो सिंगल्स और डबल्स पर भरोसा कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। जी हाँ बिल्कुल, और हसन बारी कर रहे हैं। 10 पर 12 गेंदों का इन्होंने सामना किया और डॉट बॉल्स खेलने से बेहतर है कि आप स्ट्राइक जरूर रोटेट करें। और फिर सीधे बल्ले के साथ बैकफुट पर जाके खेला और हमने देखा है कि थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब प्लेयर्स रिफ्रेश होकर वापस आए हैं तो थोड़ी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है हमें। और चूंकि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि काफ़ी गर्म मौसम है आज लाहौर का और बड़ी हौसला अफजा बात है इन प्लेयर्स के लिए कि ये ऐसे मौसम में इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और बतौर प्रोफेशनल्स बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, ब्रेक हुआ, इसको अगेंस्ट द स्पिन खेलना चाहते थे। हवा में काफ़ी देर ये गेंद रहा लेकिन खुशकिस्मत रहे बैट्समैन के यहाँ। यूं 22वां ओवर मुकम्मल हुआ, स्कोर है 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीसीयू लाहौर। आ गया भाई आसिफ, चलो बेटा चलो जल्दी आ जाओ बेटा आ जाओ। ड्राइव किया यहाँ पर, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए हसन वापस आना चाहते थे लेकिन मुबशर ने उन्हें मना किया। तो इस गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा रनिंग ये बताती है इन नौजवानों का जो जोश है, इनका जो जज्बा है, और इस बड़े दिन को वो अपने लिए कामयाब बनाना चाहते हैं। हर तरह से रन्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बैकफुट पर जाकर खूबसूरत अंदाज से कट किया और एक लॉन्ग चेज फील्डर के लिए उस तवील चेज को रोकने में बिल्कुल कामयाब हुए गेंद को। और जिस तरह फरहान आप बात कर रहे थे इन प्लेयर्स का टेम्परामेंट, और मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो इनकी गेम अवेयरनेस है कि जहाँ पे इन्हें बाउंड्रीज नहीं मिल रही वहाँ वो सिंगल डबल लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इनिंग्स की शुरुआत में हमने देखा कि बॉलर्स बिल्कुल फील्ड के अकॉर्डिंगली गेंद कर रहे थे। तो बड़ी खुशाइन चीज़ है ये कि ये बाय द बुक क्रिकेट खेल रहे हैं। और फिर आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको सीधे बल्ले के साथ खेलें। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की एक तवील तारीख़ है, 158 बरस हो गए हैं इस दरसगाह को कायम हुए। और माजी में पाकिस्तान के बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं वो इस गवर्नमेंट कॉलेज से आए हैं। मतवा क्रीज से बाहर निकले हसन, ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, खुशकिस्मत रहे कि फील्डर से ये गेंद पहले गिर गया। 2 रन हासिल होंगे यहाँ पर हसन को। तो नुमान माजी में बहुत से टेस्ट क्रिकेटर गवर्नमेंट कॉलेज ने दिए हैं, बहुत से फर्स्ट क्लास प्लेयर्स दिए हैं, और इनके जो कोच हैं सऊद खान वो तवील अरसे से क्रिकेट की कोचिंग से वाबस्ता हैं और उनके तजर्बे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वसीम अकरम की भी उन्होंने कोचिंग की हुई है। फिर इस गेंद को बैकफुट पर जाकर निकाल दिया एक्स्ट्रा कवर की जानिब, एक ही रन हासिल कर पाएंगे। और जिस तरह बात कर रहे थे कोचिंग की, तो एक ख़ास एलिमेंट नज़र भी आता है इन प्लेयर्स में कि उनकी कारकर्दगी में जितना निखार हमने देखने को मिला है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम की। और हसन कमर की हम बात कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में गेम से कबल 412 रन स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा जहांगीर खान इनकी टीम के एक और टॉप परफॉर्मर हैं। फिर दिफाई अंदाज से खेलने में कामयाब हुए यहाँ पर मुबशर, और इसके साथ ही 23 ओवर्स का इख्तिताम। गवर्नमेंट कॉलेज की टीम 90 2 विकेट्स के नुकसान पर। और ये हसन कमर दूसरे नंबर पर हैं और इनके पास मौका है आज पहली पोजीशन हासिल करें। मूसा अजीम उस सियालकोट के
ये बल्लेबाज हैं जो इस वक्त टॉप पर आपको दिखाई दे रहे हैं इस बैटिंग टेबल में। और नुमान, लाहौर में जो कॉलेज क्रिकेट है इसकी बड़ी ज़रख़ेज़ तारीख़ रही है। बहुत से खिलाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज से, एमएओ कॉलेज से, इस्लामिया कॉलेज से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनते रहे हैं। और खुशाइन बात यह है कि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के तवसत से अब ये कॉलेज क्रिकेट दोबारा से रिवाइव हुई है और आने वाले दिनों में हमें फिर उसी तरह जैसे माजी में स्टार्स मिलते थे कॉलेज क्रिकेट से, आने वाले दिनों में यकीनन ये खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम रोशन करेंगे कॉलेज क्रिकेट से निकल कर। जी हाँ, बिल्कुल। और काफ़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ ये है कि इनके तमाम खिलाड़ियों के साथ इनके असातिज़ा, इनके कोचेज़, इनके फैमिली मेम्बर्स भी इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं। जाकर पंच करना चाह रहे थे, इसको कामयाब नहीं हो पाए। अच्छी फील्डिंग का मुज़ाहरा किया गया दायरे के अंदर। और काफ़ी हौसला अफ़ज़ा चीज़ ये होती है जब आपके सपोर्ट करने के लिए लोग आते हैं, आपका मैच देखने के लिए लोग स्टेडियम में आते हैं। और फिर बैकफुट पर जाकर कट किया, खूबसूरत अंदाज से तवील चेज है फील्डर के लिए और स्किन को रोकने में कामयाब होंगे। मतलब फिर बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर हसन कमर की, जो इस वक्त पहुंचे हैं अपने इनफरादी स्कोर 12 पर। और इन 12 रन्स के साथ वो टॉप स्कोरर भी बन चुके हैं इस चैंपियनशिप के। मोमिन कमर का ये गेंद भी पीछे था, इसको कट किया लेकिन बाउंड्री लाइन पर प्रोटेक्शन मौजूद है। मगर इस दौरान बड़ी उम्दा रनिंग और ये मुसलसल हम देख रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों की जो रनिंग बिटवीन दी विकेट्स है वो बहुत शानदार है। एक मरतबा फिर 2 रन हासिल किए इस गेंद पर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह ये इनिंग्स के लेटर हाफ को अप्रोच कर रहे हैं, बड़ी खुशाइन चीज़ ये है कि वो गैप्स ले रहे हैं, वहाँ पे सिंगल डबल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि फील्डिंग साइड पर जो है वो प्रेशर बरकरार रहे। ये बॉल है। मोमिन अपना 5वां ओवर कर रहे हैं। एक मरतबा फिर बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ की जानिब इस गेंद को निकाल दिया। एक ही रन हासिल कर पाएंगे यहाँ पर हसन कमर, जो इस चैंपियनशिप के लीडिंग रन स्कोरर बन चुके हैं। कि मुबशिर की अगर हम बात करें फरहान, तो 78 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 45 रन पर ये बारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब इनके पास मौका है कि वो थोड़ा सा अपना मोमेंटम और अपना गियर को जो है वो शिफ्ट करें। और जैसा कि आपने कहा गियर को शिफ्ट करने की कोशिश की, ठीक से टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को, लेकिन 2 रन हासिल करने में ज़रूर कामयाब हुए हैं मुबशर। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है नुमान, और इतने अरसे से 80 गेंदों का तकरीबन सामना कर चुके हैं, तो यहाँ पर इनके टेम्परामेंट की भी दाद देना होगी मुबशर की, जो तेज़ी से अपनी 50 की जानिब बढ़ रहे हैं। मोमिन के ओवर की आखिरी गेंद थी, इसको स्वीप करने की कोशिश की लेकिन शॉट फाइन लेग पर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया और इसके साथ ही 24 ओवर्स का इख्तिताम। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम 97 2 विकेट्स के नुकसान पर। और ये फजल महमूद इनक्लोजर में शायकीन क्रिकेट जिनका ज़्यादा का ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से है, ये इन नौजवान खिलाड़ियों की फैमिलीज़ भी हैं, इनके असातिज़ा भी हैं, इनके दोस्त भी हैं। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का ये कॉलेज चैम्पियनशिप का फ़ाइनल जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है, पिंक बॉल से 40 ओवर्स फ़ी इनिंग्स। इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, कोई रन यहाँ हासिल नहीं होगा हसन कमर को। और नुमान, आपको याद पड़ता है कि आखिरी मरतबा कब आपने वाइट किट में कोई वनडे मैच देखा है? मेरा ख्याल है जो मेरी मेमोरी में आता है वो 1998 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे इंटरनेशनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला गया था, वो वाइट किट में मैच खेला गया था वनडे इंटरनेशनल, जो कि एक बड़ी स्ट्रेन सी बात थी। अगरचे उस वक्त लाहौर का मौसम जो है उसमें काफ़ी धुंध थी उस वजह से, लेकिन चूँकि अब ये दोनों टीम्स जो हैं वो वाइट किट और पिंक बॉल से एक वनडे इंटरनेशनल खेल रही हैं, जो कि बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। यह क्रिकेट का खेल हर दौर में बदलता रहा है और तकरीबन सन 2000 के बाद से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी
हमें रंगीन कपड़ों और सफ़ेद गेंद के साथ देखने को मिलती है। तो ये रवायती अंदाज से वाइट किट में वनडे मैच, पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल किया, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन हासिल होगा मुबशर को। फरहान, जिस तरह हमने बात की बैटर्स की जो अप्रोच हमने देखी है, सिंगल डबल्स बेहतरीन करते हैं, बॉलर्स जो है वो नपी तुली लाइन पे गेंद कर रहे हैं। कुछ फील्डिंग के हवाले से अगर हम बात करें, आपको किस तरह का म्यार देखने का मिला अभी तक जो है फील्डिंग का म्यार की अगर हम बात करें, अगरचे कैचेस किए गए, रन आउट भी हुए, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड फील्डिंग के हवाले से जो है वो हमें किस तरह आप देखते हैं जो अभी तक फील्डिंग रही है डिविजनल पब्लिक स्कूल की? देखिए, अभी तक कोई मिस फील्ड हमें देखने को नहीं मिली और ये 25 ओवर्स तकरीबन हो चुके हैं। इसके अलावा अच्छा एक कैच पकड़ा गया, रन आउट की आपने बात की, तो ओवरऑल जो इनका स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। और उसकी शायद एक वजह यह है कि इनके जो कोच हैं वो साबिक विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद सलमान, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। इस दौरान 25वां ओवर भी मुकम्मल हुआ और 100 रन्स भी मुकम्मल हो चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 2 विकेट्स के नुकसान पर। शाबाश शाबाश मोमिन भाई। 26वें ओवर के खेल का आगाज़ होने को है। और जिस तरह हम लाहौर की बात कर रहे थे, लाहौर की कॉलेज क्रिकेट की बात कर रहे थे, इस तरह फैसलाबाद में अगरचा ये तारीख़ इतनी पुरानी नहीं है कॉलेज क्रिकेट की, लेकिन डिवीज़नल पब्लिक स्कूल की टीम की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, इससे पहले हमने समर लीग का फ़ाइनल भी उनको इसी ग्राउंड पर खेलते हुए देखा, और अब इनकी टीम यहाँ पर जो कॉलेज चैम्पियनशिप है उसका फ़ाइनल खेल रही है। और जो 2 रोज़ा फ़ाइनल है स्कूल क्रिकेट का, उसमें भी डिवीज़नल पब्लिक स्कूल की टीम ने जगह बनाई है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं इनकी। और नुमान, इनके एक बल्लेबाज अबू बकर डार हैं जिन्होंने इसी चैम्पियनशिप में डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है। तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है डिवीज़नल पब्लिक स्कूल के पास। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह हमने बात की, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हम आज के मैच में भी देख रहे हैं। यहाँ 25 ओवर मार्क पर वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को अभी तक 100 के हिंजे से आगे नहीं बढ़ने दे रहे। फिर बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाए। बॉलर ने अपनी गेंद पर खुद ही इस गेंद को फील्ड किया। और उसके बाद मजीद 14 ओवर्स का खेल बाकी है, तो यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम है उनके जहन में यही होगा कि लगभग 220 रन्स का जो हदफ है, 220 रन तक जाया जाए। फिर इसको निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब। और जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स इन दोनों बैटर्स की बड़ी शानदार रही है, और गुज़िश्ता 4 से 5 ओवर्स में इन्होंने काफ़ी रन्स बटोरे हैं डाउन द ग्राउंड खेल के। काफ़ी बार उन्होंने जो है वो फाइन लेग और थर्ड मैन के एरिया को यूटिलाइज किया है। इस मरतबा ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की, कवर में अपनी निफ सेंचुरी तक रसाई के लिए काफ़ी बेचैन दिखाई देते हैं। मुबशर 48 रन्स पर मौजूद हैं। मोमिन कमर अपना छठा ओवर कर रहे हैं, अभी तक किसी विकेट से महरूम है, लेकिन बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है इस स्पिनर ने। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको कट किया, यहाँ पर रन्स मिलेंगे। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस आए और इसके साथ ही अपनी निफ सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है मुबशर ने। लेकिन अंपायर ने शायद एक शॉर्ट रन का सिग्नल दिया है, तो अपनी 50 के लिए और इंतज़ार करना पड़ेगा मुबशर को। जी हाँ, बिल्कुल। शायद वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, इसलिए उन्होंने वो एक रन भी पूरा नहीं किया।
बड़ी अच्छी गेंद और बल्ले का भारी किनारा लिया गेंद ने और गेंद जाइए थर्ड मैन की जानिब। दोनों बैटर्स अब 2 रन हासिल करने में जो है वो कामयाब होंगे और इसके साथ ही मुबशिर की जो हाफ सेंचुरी है वो भी पूरी होगी और 26 ओवर्स का मार्क भी मुकम्मल होगा और 26 ओवर्स के इख्तिताम पर 104 मजमूई स्कोर 2 विकेट्स के नुकसान पर। $104 for 2. GCU really looked to push on in the last 14 overs, but the spin bowling has been pretty good. Momin has completed 6 very good overs of left arm wrist spin, and Abdullah into his 5th over, none for 16. Wickets in hand for GCU, with Mubashir closing in on his 50. It's gone on to 49 now. In the comm box, joining me is Ali Yunus, really excited and happy. Good evening, Ali. Very good evening, Shah Faisal. Why not? Government College doing well. Pretty happy about that. I know you got multiple reasons to be happy about. Definitely yes. I'm not going to mention them, don't worry. Yeah, just Government College being in a commanding position, not exactly commanding position, but they've done well. 106 for the loss of 2 wickets. Mubashir, I think, has looked solid. Should look to carry on, at least that 250, maybe not now. They should be looking to get 230, somewhere there now. Only 13 overs left. You're right. They got wickets in hand. They got the platform set. But Mubashir will have to go now. 50 been brought up of 88 deliveries. I'm not sure if his teammates knew that. No celebrations as such, but the scoreboard's showing that he's got to his 50. This is a good partnership. Imran has really looked good. At least he's been able to make use of almost every delivery. 20 of 25, healthy strike rate. And he's giving every opportunity to Mubashir to now cut loose, because if they don't go now, I think it's going to be too late. With only 13 overs left in the entire batting lineup, 8 wickets holding in the shed. Use of the feet. He's no control once again. He's looking to hit it over extra cover. And now the teammates, I think the message has gone through, as the gallery is celebrating his 50. Well played, Mubashir. Excellent knock. 109 for 2. Okay, sir. Shabash, boys! It looks like skipper is going to bowl Momin through his spell. Remember, a bowler can bowl a maximum of 8 overs. He's into his over number 7. A rare full toss. But Mubashir once again, I think, failing to make use of that delivery. Just a couple of runs, but he would have been looking to get a boundary. He definitely needed one. But GCU looking to Mubashir, because that 250 is way out of question now. They'll do well from here to get up to 200 runs, which I think still would be pretty decent effort. In the air and in the gap. Would you reduce your target from 250 to 220 now, looking at the current situation, Ali? Well, a lot will depend how Mubashir takes this inning along, because he's the one
who's on 54, well settled. He's seen the bowling, is known the conditions now. It won't be long that we see an onslaught from him. Top edge, but it will fly over the fielder at 45 and will run away into the fence. A much needed boundary for GCU. Hassan breaks the shackles. He went for that sweep. The little bit of extra bounce, got the top edge. But that was pretty handy one. He wasn't in control. But Momin will get that extra bounce because of that wrist spin. This will happen when you've got 45 inside the circle. Any top edge will carry that ball to 4. But he's bowled well. Of all the spinners that we have seen, without a wicket though, but he's shown some spark, some talent, this young lad Momin, alongside Mubashir. It's another full toss, second full toss of the over. This time he's been made to pay the price. Hassan has been very proactive. He's put the pressure on Momin, playing that sweep shot, and now that full toss was a gift for him, and he made full use of it. That's good batting from the youngster. Commentators curse. I'm not saying anything about these young players. As soon as I say something about it, he bowls a full toss. Last time it happened, same. That's what it happens when, as a batter, you're prepared to take the challenge and put the pressure on. But it's a good comeback from Momin. Excellent flighted delivery. But the scoreboard has really started to move along now with this partnership. Hassan's strike rate, 29 of 29, scoring at a runner ball, 121 for 2. Overs to go. Crowd have really enjoyed themselves. The holy month of Ramadan, approaching the fasting time as well. Abdullah into his 6th over. There will be an extended break of an hour for the prayer and iftar break. The over rate was slow, but I think they're catching up with all this spin attack. Good energy in the field there from DPS. Absolutely. I think that is what you associate with these youngsters at this age, playing at Gaddafi Stadium. They got to give all they have. They got to show, they got to bring their A game here. They got to show what they're made of. Runs have been hard to come for GCU. There have been some disciplined, tight bowling from Divisional Public Faisalabad. No wonder they've got 2 quality spinners in that side. Arbab, we know that he has represented Pakistan under 19s. Another very good all-round prospect, Momin, was also in their side. So yes, I'm not surprised that GCU is struggling to get to that mark of 250. But now at least they should get to 210, 220 maybe. That would be a good total. In the air, he's timed it very nicely and just bounced inside the fence. A magnificent stroke against the spin, but Hassan has been prepared to challenge the bowling. Got 2 boundaries in the last over and 1 in this, but this was the best of the lot. Overpitched right there in the slot. All he had to do was place it in the gap, which he did it nicely. Got four important runs. Just lost his shape a little bit, trying to hit it too hard on that occasion. Disappointed with himself, Hassan. Another good one for
GCU, 29 gone, 125 for 2. Eleven overs to go. Is 220 reachable still? We'll have to wait and see. Two set batters in there. That's the advantage that GCU has. Moment for the... It's Arham actually. Oh, good They've job, held Abdullah. Moments 1 over. This one was fielded very nicely. Excellent piece of fielding inside the ring on the offside. Aram Shabash. Shorter one, good use of his feet. Catch! Oh, what an attempt. That was an excellent effort by the younger Ham. It went very quickly to him. What a wonderful effort that has been from this youngster. Boys, boys! Oh, hi, beauty. It's the same Arham who represented Pakistan in the 19s, and what a wonderful effort that was. Well ball, That is what you want to see from these youngsters. That's giving them 100%. Boys, boys! Very well bowling, Reminded me very of well an bowling, effort Lala! that Yasir Shah did recently in Pakistan Cup. That was an excellent catch. Oh, this has to be out. It has to be out. Yes, given out. Wonderful delivery. So Arham doing the damage to GCU. This was straight on, kept straight, kept low. Umpire says it's out. That rushed on to the batter. An important wicket because Hassan was playing really well. Look at that, quite full, and it rushed on to him. Probably misread the length as well. Shouldn't be going back to this one, but completely deceived. Good deception there from the youngster. Arham Nawab clearly deserved this wicket, and his team needed that breakthrough as well. Hassan Qamar, after playing a very, very good hand, 33, he's gone 126 for 3. Happy faces here at Gaddafi Stadium, Lahore. The crowd have come in numbers. Families have come to support their young lads, young superstars of future. That is what you want to see. Dhol also. Yes, sir. Good to see. It does create the atmosphere. Wait till after Aftar, I think, when we'll see a little bit more razzmatazz. The lights will come on. Come on, Captain. Yeah, one good ball, one good ball. Yeah, like I say, when the lights will come on, they're playing in white kits, but the pink ball has been used. It's not very common with the limited overs cricket, where you use the pink ball. But here, with the white kits, we are using pink ball. As Arham got his first wicket, Ali off the mark immediately. 55 for Mubashir. Well, his role is key once again. He is looking to anchor the innings throughout the innings. At what stage he'd need to decide if he needs to push on. This is a good delivery. Went in with the arm once again. He was looking for turn. It didn't turn. It just went away from the left-hander. 127 for 3. 10 to go.
मोमिन अब्दुल्ला नया बैट्समैन है इन्हें डॉट हो गए ना इन्हों ऑफ स्टंप तो मार दे Last 10 overs, crucial time of the innings. Remember, this is the big final to the Central Punjab College Cricket Championship 2022. With 7 wickets in hand, I think GCU has got the platform. This one was short and wide. Call was for 2. It's quite long boundaries, so it's one for the throw very, very easily here. Ali is the new man in. He's giving Mubashir the company. Mubashir has been there from the beginning. Once again short and wide. This time the sweeper comes around quickly. You have to say the ground fielding has been very good for DPS Faisalabad because they've been very quick. They've been very good inside the ring. And the boundary riders, they've really covered the ground quickly. Few lapses with the catching, but the ground fielding has been pretty good. As you see towards the far end of the ground, continuous streaming of people coming in through the gates, and we expect to see a bigger crowd after the iftar. Once again knocked it down very good inside the 30-yard ring. The fielding's been good. Any over in this stage without a boundary? I think DPS Faisalabad will take it. 31 gone, 131 for 3. चलो बॉय जागो जरा जल्दी करने हैं आखिरी 9 है शाबाश वन है Arham continues. Mubashir still struggling to find the middle of the bat. Very well bowling, very well bowling. Oh, he missed out on there, Ali. It was a full toss. Couldn't make contact. Even Arham didn't want to celebrate because he knew it wasn't the best of the deliveries. But it happens in cricket. Sometimes you do get the reward when you don't really deserve it, and the other way around. But look at this. A full toss when it passed the bat of Ali. Crashes into the middle stump. And look at Arham. He was quite sheepish about it. But there you go. He'll take the wicket. Rana Ali Raza. He's dismissed for 4. 132 for 4. कैप पे ये नबील मेरी यार क्या बात है आज टीवी में आप ये देखो और बोल रहे हैं
They've lost a wicket on an important time. GCU Lahore as Kabir walks in. It's a very important passage of the play. 9 overs to go. In fact, 8.4 to go after this. Mubashir is there on 57 at the moment. He's taken 92 deliveries for that. I think it's about time that he lets loose and hit some big hits. Arham has taken 2 wickets. And we see a very little variation in this Arham's bowling action. If we see the last wicket that fell, it was a wrong one. It was a leg spinner from the wrist. He was, if you can see it, you can see the action replay again. It was dying on the batter. So it's a very good talent. This Arham Nawab represented Pakistan under 19 also. Very good signs for Pakistan cricket. At the moment, Divisional Public Faisalabad is on top. Now the floaty delivery, interesting replay to have a look. He won't mind conceding singles at this stage of the innings. But now Mubashir, we've been asking that he can go big now. He's decided to take the charge. Has he got it cleanly? Yes, he has. I think it's landed just inside the fence, as you see the fielder signaling to the umpire. That was a good blow though. He got underneath it, and that's the boundary him and his team needed. Important, very important. That's what I was saying, that it's about time that Mubashir cut loses, and he placed it beautifully in the gap. It's a very crucial inning from him. He's moved to 61 as GCU cruises to 137 for the loss of 4 wickets after 32 overs. 8 overs to go. A runner ball will take them pretty close to 190. That's the minimum they will be aiming for, especially with Mubashir in here. He would need support though from Kabir, because they can't continue to keep losing wickets. That last one was a soft dismissal from Ali. Abdullah is also bowled off spin. He hasn't given much away into his last over of the spell. He's quicker through the air as compared to Arham. They're running hard, they're running hard. There was a chance, and yes, Mubashir couldn't make it. A sluggish effort because he must be tiring down. He's been there since the beginning, but that was the wicket that the GCU didn't want to lose, and Mubashir, the set batsman, has succumbed to the pressure. What was happening there? An absolute blunder by these two batters. Have a look at that. Mubashir was the one who had to come back. There was never a 2, and he just kept coming. Have a look at that. He was not halfway there when the bowler collected the ball. That is a suicide. That is some ordinary piece of cricket by this youngster. He played well, but just thrown away his wicket when GCU wanted him to stay there on the pitch till the end. He scored 61 runs of 98 deliveries. A weird way of getting out. 138 for 5 GCU. Fielding, ground fielding in particular, has been pretty good from DPS Faisalabad.
Very impressive fielding. The boundary riders have been quick and accurate with their throws. And it has been an excellent effort in the field there for DPS. They'll be pretty happy with their efforts so far. Ali? So that target is coming down at every given opportunity, especially after losing each and every wicket. Absolutely. Wickets is the name of the game. You keep on taking wickets, the scoring run will come down. And that is exactly what has happened with GCU. They were looking well set when Mubashir was going on, but the way he gave away his wicket, I think that was some ordinary cricket from GCU. You don't expect that. From a set batter, he could have easily said no to his opponent, to his partner. And when you lose wickets, definitely dents your chances. GCU now struggling to get to even 200 mark from here, Faisal. Absolutely, they'll do really well to get up to that 200 in the remaining 7 overs. 42 deliveries left, and they have reached 140 for 5. They had a good platform, but now with loss of wickets, they've lost their momentum. Be an interesting last 7 overs to come. 140 for 5. Couple of run-outs in Government College University's inning. Mubashir Muzammil 61. Ghulam Hafiz also ran himself out. A wicket for Abdul Rahman and Abraham. 2 wickets for Arham Nawab as he continues. And the quality that we have seen in Arham Nawab is his abilities to bowl both off-spinner and leg spinner. And also in a leg spin action, he's got a googly to his name too. This one is an off-spinner. I wish I had more action replays. We can split screen, we can show his grip or his wrist when he's about to deliver. But unfortunately, we might not have those facilities here still. Oh, that was a close chance. But Shafaz, it's so good to see such talent when a single person can bowl with so much of variety. It's a batsman game, so you've got as many varieties, you're in the game. And as a bowler, you need them at the highest level. With some of these floaty deliveries, there's a chance of a run out. This is third run out of the innings, as GCU has really capitulated under pressure. Arham Nawab has bowled dot after dot, and the 2 batters couldn't sustain the pressure and panicked, really, to be honest. And they have paid the price. The wickets are tumbling here at the Gaddafi Stadium. That's poor. Umpires cannot even decide which batter is out because it gets so close in the end. They both ran to the same end. It would be very interesting to see which batter was shot. Have a look at that. Oh, I think it's a batter on your left. He will have to go. Probably, yes, non-striker will have to go. That's such a poor way of losing your wicket. Very ordinary cricket by these GCU batters. They were in a commanding position, but they ran themselves out. This is the 3rd run out of this inning. That's pretty poor. At the beginning, Ali, we did mention that this is a big game, and nerves will play a part. 3 run outs, that doesn't happen every day. Kabir Ali, the latest casualty, he's gone for 2. 140 for 6. वक्फे से विकेटें गंवाने के बाद जीसीयू की टीम 200 रन्स के हदफ से भी काफ़ी दूर दिखाई देती है और ये मोहम्मद सलमान यकीनन खुश दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। डीपीएस फैसलाबाद के हेड कोच हैं और अरहम नवाब ने बहुत ही उम्दा स्पेल किया है बॉलिंग का अनुमान। जी हाँ, बिल्कुल, ये अरहम की ही नपीतुली गेंदबाजी थी जिसके बायस यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम जो है वो सिर्फ 140 स्कोरबोर्ड पे सजा पाई है। अभी तक 6 विकेट्स का नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा है। सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला
क्या बात है, डीप ये मिड विकेट से boy! फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। और जिस मोमेंटम की हम बात कर रहे थे फरहान, कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ने, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि आपको जब रेगुलर विकेट्स का नुकसान होता है तो बैटिंग टीम जो है वो बड़ी मुश्किल से रिकवर कर पाती है। और आज यही हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम के साथ कि वो इनिंग्स के दरमियानी मरहले पे बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे थे। 25 ओवर्स मार्क पर सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे और एक अच्छी साझेदारी हम देख रहे थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि रन्स को एक्सेलरेट करने के चक्कर में जो है वो विकेट्स भी गवा दी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ने, और अब बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है 140 पर। जी हाँ, इब्तदाई ओवर्स में उस तरह से रन्स नहीं आ पाए क्योंकि विकटें जीसीयू के पास थी। 2 विकटों पर 70 से 80 रन्स बन चुके थे। तो जहाँ पर रन्स ज़्यादा रफ्तार से बनाने थे हसन कमर को या मुबशर को, तो वो रन्स में इजाफा नहीं हो पाया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, डॉट बॉल्स होती हैं, तो उसके नतीजे में हमें विकटें देखने को मिली। और ये जो 3 रन आउट हैं, ये उसी पैनिक का सबब दिखाई देते हैं। मोमिन कमर, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा बैटर को। और इन सिंगल्स से बहुत ज़्यादा खुश होंगे डीपीएस के कप्तान और उनके कोच। जी हाँ बिल्कुल। और अभी जो सबसे बेहतरीन चीज़ उनके जहन में होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, कि पूरे ओवर्स बारी करें और जितना स्कोर को तवील लेके जा सकते हैं लेके जाएं। अच्छी गेंद, एक बार फिर बल्ले का भारी किनारा लिया इस गेंद ने, शॉट थर्डमैन की जानिब गई। और फरहान, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पूरे ओवर्स खेलने का जेन में होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को। जी, अब कोशिश तो इनकी यही होगी कि पूरे ओवर्स किसी तरह से निकाल लें। 35वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। दोनों नए बैटर्स हैं जैद और बकर। इस मरतबा पुल किया, फील्डर देखते ही रह गए और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इस बाउंड्री का इंतज़ार था। अंपायर कैसर वहीद ने बताया कि ये 4 रन्स मिले हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को। तो यहाँ पर इस तरह की शॉट्स हमें देखने को मिलनी चाहिए अगर जीसीयू की टीम ज़्यादा रन्स स्कोर बोर्ड पर सजाना चाहती है। जी हाँ बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे फरहान कि आपको इनिंग्स का जो आखिरी हिस्सा है उसको यूटिलाइज करना है सही अंदाज में। बैकफुट पर जाकर पंच किया, उसको मिड विकेट के ऊपर से 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। फिर इसको निकाल दिया खूबसूरती से, लॉन्ग ऑफ के फील्डर आएंगे और बैट्समैनों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर की जानिब से। तो सिर्फ एक ही रन पर इत्तफाक करना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। फील्डिंग का मेयार बहुत बुलंद रहा है डीपीएस फैसलाबाद की जानिब से। मोमिन कमर अपना 8वां और आखिरी ओवर कर रहे हैं। 40 ओवर्स का ये मुकाबला जिसमें एक बॉलर को 8 ओवर करने की सहूलत हासिल है। और अब तक सिर्फ 6 रन्स मिले हैं मोमिन के इस ओवर में। बकर और जैद क्रीज पर हैं। इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, मोमिन रोक नहीं पाए, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और इस एक रन के साथ 35 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर है 148 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 5 ओवर्स का खेल बाकी है और इन 30 गेंदों पे लगभग 50 रन का तो इजाफा करना होगा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की टीम को, क्योंकि अगर आपको इस बड़े फाइनल में कामयाबी हासिल करनी है तो लगभग 200 का हिस्सा स्कोर बोर्ड पे सजाना होगा, ताकि आपके बॉलर्स के पास जो है वो ज़्यादा मार्जिन हो और इतना मौका हो कि वो इस स्कोर को डिफेंड कर सकें। जीसीयू के सपोर्टर्स भी अपनी टीम की परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते और 200 का हिस्सा मुश्किल लग रहा है। ये दूसरी जानिब डीपीएस फैसलाबाद के खिलाड़ी, रिज़र्व प्लेयर और काफ़ी बड़ी तादाद में रिज़र्व खिलाड़ी भी मौजूद हैं अपने कोचेज़ और टीचर्स के साथ। बॉलिंग में तब्दीली हुई है। अब्दुल रहमान जिन्होंने इनिंग्स का आगाज़ किया था वो अपने दूसरे और आखिरी स्पेल के लिए आए हैं। पहली विकेट इन्होंने हासिल की थी। एक रन अभी भी दूर है जीसीयू की टीम 150 रन के हिस्से से।
जी हाँ, बिल्कुल बड़ी अच्छी गेंदबाजी की अब्दुल रहमान ने इनिंग्स के शुरू में, कि जहाँ उन्होंने लेंथ को बड़ा उम्दा वेरी किया, पेस को बड़ा शानदार तब्दील किया। इसके बाद इन्हें कामयाबी भी मिली थी। डाउन द लेग साइड, और कीपर भी इस गेंद को सही तरह गैदर नहीं कर पाए, तो यहाँ पर 5 वाइड्स मिलेंगी सेंट्रल, जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 5 वाइड्स यहाँ पर कर दी हैं अब्दुल रहमान ने। गेंद थोड़ी सी लेग साइड की जानिब थी और कीपर भी जो है वो इसको सही तरह गैदर नहीं कर पाए। यहाँ कंट्रोल अपना खो बैठे थे और विकेट कीपर के लिए भी ये मुश्किल था, लेकिन 5 कीमती रन यहाँ पर जीसीयू को मिले हैं और ये रन्स इन्हें दरकार हैं, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अब्दुल रहमान अपना 6वां ओवर कर रहे हैं, पहली विकेट इन्होंने हासिल की थी डीपीएस के लिए। इस मरतबा गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, इनसाइड एज हुआ और फाइन लेग पर 1 रन हासिल हुआ। जी हाँ, बिल्कुल स्कोर बढ़ते हुए 155, 6 विकेट्स के नुकसान पर। आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ये फाइनल खेल रही है डीपीएस फैसलाबाद के साथ, सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैंपियनशिप 2021-2022 का। ये 40 ओवर्स पर मुश्तमिल फाइनल। इसके जो इनामी रकम है 5 लाख रुपया है, रनर अप को 3 लाख रुपया मिलेगा। तो याद रहे कि इस टूर्नामेंट में 155 कॉलेज की टीम्स ने 18 डिस्ट्रिक्ट से शिरकत की थी। डाउन द लेग साइड, एक मरतबा फिर थोड़ा सा निशाने से चूक रहे हैं अब्दुल रहमान। देखा है कि दूसरी मरतबा इस ओवर में ऐसा हुआ है कि वो लाइन को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके। ये गेंद भी मिडल एंड लेग पर पिच हुई और लेग साइड की जानिब गई। यहाँ पर अपनी बॉलिंग पर कंट्रोल करना होगा अब्दुल रहमान को, क्योंकि ये वो रन्स हैं जो रोकने चाहिए, जो बचाने चाहिए। ये इजाफी रन्स देने की ज़रूरत नहीं है डीपीएस को, जिन्होंने बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है पहले 35 ओवर्स में। पीछे गिरा हुआ गेंद था, एक और डॉट बॉल। अब मौसम भी काफ़ी बेहतर हो चुका है दिन के मुकाबले में जब मैच का आगाज़ हुआ था। शाम का वक्त है, इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है। याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है। तो खूबसूरत अंदाज से खेला, थर्ड मैन की जानिब 1 ही रन हासिल करने में कामयाब होंगे दोनों बैटर। तो जी हाँ, बिल्कुल सूरज ढल रहा है और जैसे ही आफ्तार का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, फरहान के चेहरे पे भी मुस्कुराहट जो है वो बढ़ती जा रही है इस ढलते सूरज के साथ। और इसके बाद मज़ीद 4 ओवर्स का खेल बाकी है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम हमेशा मुस्कुराहटों का सबब रहा है और जब किसी भी मैच में आप नौजवानों को, फ्यूचर स्टार्स को खेलता हुआ देखें तो क्यों ना मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। 36वें ओवर का खेल है। मतलब पीछे गेंद था, रुक कर आया, इसको पुल करना चाहते थे। गेंद काफ़ी देर हवा में रहा लेकिन फील्डर से आगे 1 ही रन यहाँ पर हासिल हुआ। और इस ओवर में देखा है कि गेंद एक मरतबा थोड़ा नीचे रहा है और एक मरतबा रुक कर आया है, तो विकेट का जो रंग है वो भी वक्त के साथ साथ बदल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और कुछ विकेट की बात कर रहे थे हम कि गेंद 2 पेस्ट विकेट में लग रहा है, और दूसरा बॉलर भी जो है वो अपना पेस वेरी कर रहे हैं, अपनी लेंथ वेरी कर रहे हैं। अब्दुल रहमान अपने छोटे ओवर के आखिरी गेंद करेंगे। फिर सीधे बल्ले के साथ खेला, लॉन्ग ऑन से फील्डर आएंगे गेंद को फील्ड करने, 1 ही रन बन पाएगा। तो ये पिछले 2 ओवर्स थे, ये काफ़ी जो है वो साजगार साबित हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, कि जहां कुछ वाइड्स की मदद से भी रन उन्हें मिले और 2 ओवर्स में 19 रन बनाने में कामयाब हुए हैं आखिरी 36 के बाद 159, 6 विकेट्स के नुकसान पर। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो कप्तान अरहम नवाब सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं, जिन्होंने 7 ओवर में 21 रन के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 विकेट मिली है अब्दुल रहमान सीनियर को, जो अभी बॉलिंग कर रहे थे पवेलियन एंड से। और इसके अलावा 3 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं और यही वो मौका था कि जब जीसीयू की टीम एक बड़े रन से पीछे होती हुई हमें दिखाई दी। और अरहम अपना आखिरी ओवर करेंगे। ऑफ स्पिनर हैं, दाएं हाथ से
ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें हम लेग ब्रेक करते हुए भी देखा है और यही इनकी बॉलिंग की सबसे नुमाया खासियत है। गेंद को लूप देते हैं, फ्लाइट देते हैं, बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि वो हवा में शॉट खेले, लेकिन अभी तक बहुत ही कामयाब बॉलिंग की है अरहम नवाब ने, डीपीएस के कप्तान। गेंद को निकालने की कोशिश कर रहे थे कवर के ऊपर से, कामयाब नहीं हो पाए और बड़ा अच्छा ओवर अभी तक अरहम का। इस तरह फरहान बता रहे थे कि बड़ी नपी तुली गेंदबाजी करते हैं, कभी ऑफ स्पिन तो कभी लेग स्पिन। छोड़ के गेंद किया और 1 रन बनाने में अब की बार कामयाब हुए। तो 3 डॉट बॉल्स के बाद एक सिंगल लिया है यहाँ पर। बहुत ज्यादा वेरिएशन है अरहम नवाब के पास और इस ओवर में मुख्तलिफ तरह से बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये रवायती ऑफ स्पिन और सीधा इनके हाथों में बॉल गया, लेकिन इसको थामने में कामयाब नहीं हो सके अरहम नवाब। तीसरी विकेट से महरूम हुए, लेकिन बहुत ही उम्दा बॉलिंग, बल्लेबाज को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दे रहे। जी हाँ बिल्कुल, अब की बार जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बीच में लेग स्पिन भी करते हैं और इसको वापस खेला अरहम की जानिब। एक रेगुलेशन कैच हो सकता था, लेकिन इसको ग्रैब करने में नाकाम रहे। अब की बार उठाकर खेलना चाह रहे थे, कवर्स में फील्डर मौजूद, एक बड़ा ही शानदार कैच। तो जिस विकेट की तलाश थी अरहम नवाब को, वो लेने में वो कामयाब हुए, अपनी तीसरी विकेट हासिल की और बड़ी उम्दा नपी तुली गेंदबाजी का उन्हें जो है वो अच्छा नतीजा मिला। यहाँ पर अपनी तीसरी विकेट हासिल की और 160 के मजमूई स्कोर पर 7वीं विकेट का नुकसान उठाना पड़ा यहाँ पर। ये गेंद थोड़ा सा तेज था, इसको पुल करना चाहते थे, टॉप एज हुआ और कवर में एक आसान कैच और 7वां नुकसान उठाना पड़ा यहाँ जीसीयू लाहौर को। जैद बिन नदीम 7 रन बनाने के बाद आउट हुए, अब्दुल्ला ने उनका कैच पकड़ा और स्कोर है 160 रन 7 विकेट पर 37 ओवर्स में। यार हुन जेडी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो 200 रन्स जिस पर निगाहें हैं जीसीयू की, वो तो अब बहुत दूर दिखाई देता है। टेल शुरू हो चुकी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। 7 विकेटें 160 रन्स पर गिर चुकी हैं और अब सिर्फ 3 ओवर्स का खेल बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा रन्स हासिल करना होंगे यहाँ पर जीसीयू को और अब्दुल रहमान अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए। ये गेंद पीछे था, तेज आया, पैड से टकराया, अपील ज़रूर की, लेकिन ये गेंद लेग साइड की जानिब जा रहा था और अंपायर का ये सिग्नल भी कि काफ़ी ऊंचा लगा है, थाई पर ये गेंद लगा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये डॉट बॉल हुई है। ये देखिए पीछे गिरा हुआ गेंद था, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, पिछली टांग पर ज़रूर लगा लेकिन थाई पर काफ़ी ऊंचा था ये गेंद। तो अंपायर इरफान दिलशाद के लिए आसान फैसला। अगर हम टेल एंडर्स की बात करें तो वो उनकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि गेंद उनको पाले में दी जाए, उनके मुंह पे गेंद दी जाए ताकि वो उसको हिट कर सकें। गुड लेंथ पे गेंद पर मारने में इतनी काबिलियत नहीं होती टेल एंडर्स की। डाउन द लेग साइड यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। और हम अब्दुल रहमान से मुताल्लिक यही बात कर रहे थे कि जब से वो दूसरे स्पेल के लिए आए हैं, उनकी जो लाइन और लेंथ है वो दोनों काफ़ी चूक गई है। या तो उनका एंड चेंज हुआ है, इस वजह से उनको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल लेग साइड की तरफ जा रहे हैं। और ये गुज़िश्ता दूसरे ओवर में इनकी पहले तीसरी या चौथी जो है वो वाइड है, एक 5 वाइड्स भी देख चुके हैं वो। इस मरतबा स्लो करना चाहते थे, बीट हुए विकेटों के बिल्कुल करीब से ये गेंद गया और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ अब्दुल रहमान। क्रॉस सीम गेंद को पकड़ा हुआ है इस ओवर में उन्होंने।
और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस लेवल पर इस एज में खिलाड़ियों के पास इतनी गेम अवेयरनेस है, वो इतना इस खेल को समझते हैं और कोचेज़ ने जो उनको हदायत दी हुई है बिल्कुल उस पर अमल पैरा होती हुई दिखाई दे रही है। डीपीएस फैसलाबाद की टीम फील्डिंग का मयार बहुत बुलंद, बॉलिंग बहुत ही शानदार, जिसका नतीजा 161 पर 7। बॉल करके रख दिया यहाँ पर अब्दुल रहमान, बड़ी शानदार गेंद थी, पड़ने के बाद तेजी से अंदर की जानिब आई और अपनी दूसरी विकेट हासिल करने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं अब्दुल रहमान। और ये गेंद भी नवान क्रॉस सीम था, ये देखिए पड़ने के बाद तेजी से अंदर आया, स्लॉक करना चाहते थे, टेल एंडर की ये खास शॉट है लेकिन इस मरतबा नाकाम रहे। बिल्कुल विकेटों के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर ये गेंद टकराया और 8वीं कामयाबी हासिल हुई है डीपीएस को। और अब तो ये लगता है कि शायद पूरे 40 ओवर्स खेलना भी इतना आसान नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, तारीफ करनी होगी डीपीएस की नबी तुली गेंदबाजी की। अबू बकर 9 रन बनाकर आउट हुए, 18 गेंदों का सामना किया और अब्दुल रहमान सीनियर अपनी दूसरी कामयाबी हासिल कर सके हैं, अपनी दूसरी विकेट उन्होंने हासिल की है और 37.3 ओवर्स के बाद 161, 8 विकेट्स के नुकसान पर। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर बैटर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप कम से कम 40 ओवर्स पूरा खेलें और लगभग 200 या 180, 190 का हिस्सा स्कोर बोर्ड पे सजाएं ताकि आपके बॉलर्स के पास मौका हो उस स्कोर को डिफेंड करने का, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। 8 विकेट्स का नुकसान उठाना पड़ा है अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम को। मजीद 15 गेंदों का खेल बाकी है और 161 अभी तक स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम। अब देखते ही हैं कि मजीद 15 गेंदों पे कितने रन जो हैं वो ऐड कर पाएंगे। जहांगीर और साद दोनों नए बैटर जिस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। अच्छी गेंद पड़ने के बाद तेजी से बाहर की जानिब निकली और कोई मौका नहीं था बैटर को इसको खेलने के लिए। जहांगीर इस टूर्नामेंट के एक लीडिंग परफॉर्मर हैं, 18 विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं, जबकि साद भी इस टूर्नामेंट में 13 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। ये गेंद भी क्रॉस सीम था, पड़ने के बाद बाहर निकला और बिल्कुल बैट के करीब से होता हुआ गया। और यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर को भी शफल किया है। अगर हम देखें डीपीएस के खिलाफ जीसीयू ने, तो जहांगीर का शुमार इनके अच्छे बल्लेबाजों में होता है लेकिन उन्हें लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करने का मौका दिया है। इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन से कतन कोई मुश्किल नहीं होगी डीपीएस को। जी हाँ बिल्कुल, और जहांगीर और साद की हम बात कर रहे थे, इस टूर्नामेंट के काबिल ज़िक्र बॉलिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं इनकी। 12.95 की एवरेज के साथ 18 खिलाड़ियों को आउट किया है जहांगीर ने, जबकि साद ने 13 विकेट्स हासिल की हैं इस टूर्नामेंट में। तो यकीनी तौर पर अब टेल जो है पूरी तरह आ चुकी है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की। मरतबा ऊंचा शॉट खेला हवा में, फील्डर उसको देख रहे हैं, कप्तान है अरम नवाब इस गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे, लेकिन यहाँ पर रन आउट का मौका था और बिल्कुल बॉलर का कतन भी ध्यान नहीं था इस जानिब। वो सिर्फ कैच ना होने की वजह से मायूसी का शिकार हुए और ये रन आउट का जो चांस था वो गवा दिया यहाँ अब्दुल रहमान ने। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं शो की। 38 ओवर्स मुकम्मल हुए, स्कोर है 163 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ बिल्कुल, इस गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे और यही मेरा ख्याल है जो मौके के हिसाब से शॉट था वो यही बनता था कि जब आपके पास सिर्फ 2 ओवर्स रहते हो। ये देखिए दोनों बैटर्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग थी और बिल्कुल भी फोकस जो है वो खो बैठे थे अब्दुल रहमान अपना, वरना ये यकीनी तौर पर रन आउट हो सकता था। और देखना ये होगा कि ये जो रन आउट मिस किया है इसका कितना नुकसान होता है यहाँ पर डीपीएस फैसलाबाद की टीम को। आखिरी 2 ओवर हैं, डग आउट से हिदायत आई है, इसके अलावा साथी खिलाड़ी हेलमेट भी पहना रहे हैं जहांगीर को। तो इन 2 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए
जीसीयू को, लेकिन जो हदफ 200 रन्स का या उससे ज़ायद का उनके जहन में था उससे वो काफ़ी दूर रह चुके हैं। और यहाँ पर ये बात मानना होगी कि जो फैसलाबाद बीपीएस के कप्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फ़ैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त साबित दिखाई दे रहा है हमें। और मुमकिन है नुमान के दूसरी इनिंग्स में शायद ड्यू फैक्टर भी हो तो बैटिंग करना और आसान हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमने इनिंग्स की शुरुआत से ये बात की कि आपको लगभग 240 से 260 स्कोर बोर्ड पे सजाने हैं, अगर आपको ये स्कोर को डिफेंड करना है। रेहान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहले 5 ओवर्स में सिर्फ 12 रन्स दिए थे। नए गेंद के साथ अच्छा आगाज़ किया था और अब पुराने गेंद के साथ 1 ओवर करने का ही मौका मिलेगा इन्हें। तो फास्ट बॉलर्स ने बड़ा अच्छा आगाज़ दिया था डीपीएस को, और उसके बाद जब स्पिनर्स आए अब्दुल्ला, मोमिन कमर, अरहम नवाब, तो इन तीनों ने बहुत उम्दगी से कंटेन करके रखा और विकटें भी ली। और उसके साथ साथ जो उम्दा फील्डिंग थी डीपीएस की, उसके नतीजे में ये स्कोर हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कतन भी जीसीयू को पसंद नहीं होगा। स्लो बॉल यहाँ पर बैक ऑफ द हैंड, इनको लॉन्ग ऑन की जानिब खेला और एक ही रन हासिल कर पाएंगे। और फरहान, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में आपको मिडिल ओवर्स को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज करना होता है अगर आपको एक बड़ा टोटल लेना है। हमने देखा है कि इनका आगाज़ कदरे सुस्त था, लेकिन मिडिल ओवर्स में जिस तरह इन्होंने पे दर पे विकेट्स खोई हैं, उसके बाद बड़े हदफ तक पहुँचना इनकी टीम के लिए यकीनी तौर पर मुश्किल हो गया। नुमान, वनडे क्रिकेट में बैटिंग करना, इसे खेलना भी एक आर्ट बन चुका है। 40 ओवर्स की या 50 ओवर्स की क्रिकेट में भी हम मुल्तान में पाकिस्तान कप के दौरान मौजूद थे, तो वहाँ भी ये मसाइल देखने को मिले कि 50 ओवर्स में किस तरह से बैटिंग करनी है, मिडल ओवर्स में क्या करना है, एंड पर क्या करना है। तो ये चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है हमारे खिलाड़ियों को। इस पर तो ऊँचा शॉट खेलने की कोशिश की, फील्डर के सर के ऊपर से था, तो जहाँ पर पाकिस्तान के टॉप खिलाड़ी खेल रहे थे उन्हें भी ये मुश्किलात दरपेश आई कि मिडिल ओवर्स में किस तरह से सरवाइव करें, कैसे रन्स बनाएं। तो ये खिलाड़ी, इनका अभी आगाज़ है, बिल्कुल नौजवान है, तो यकीनन वक्त गुजरने के साथ साथ ये सीखेंगे और 20 ओवर की क्रिकेट से जब बाहर आएंगे तो फिर इन्हें 40 ओवर 50 ओवर खेलने का आर्ट भी आएगा। फ्लैश किया, हार्ड हैंड से खेलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ थर्ड मैन तक गेंद पहुंच पाई, सिर्फ एक ही रन हासिल करने में कामयाब होंगे। और अगर हम जिस तरह फरहान हम बात कर रहे थे, क्रिकेट भी ओवर दी ईयर्स एक साइंस की तरह जो है वो इसकी डेवलपमेंट हुई है कि आपको जो है वो ओवर बाय ओवर लेके चलना होता है, प्लेयर्स का मैचअप जो है वो तैयार करना होता है। तो अगर आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी गिरफ्त गेम पर भी मजबूत होती है और आप अपने जो है वो मुखालिफ टीम पर भी हावी होते हैं। स्लो गेंद थी, बैट से ज़रूर टकराई, लेकिन एलबीडब्ल्यू का चांस नहीं, लेग बाई का 1 रन मुकम्मल कर लिया। और इस सतह पर नुमान जो है वो कोचिज़ का रोल ज़्यादा अहम होता है। अगर हम अंडर 16 की, अंडर 19 की स्कूल कॉलेज क्रिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सलमान ने जिस तरह से इस टीम को लड़ाया है, जो उन्हें हदायत दी थी, वो बिल्कुल उसी तरह से उनकी टीम खेलती हुई आई है। मोहम्मद सलमान माजी के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, डीपीएस के कोच हैं। मतलब स्लॉक करने की कोशिश की लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, दूसरे रन के लिए मुड़ना चाहते थे। एक मरतबा फिर उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा। 39 ओवर्स मुकम्मल हुए, स्कोर है 168 रन 8 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह हम बात कर रहे थे इन दोनों टीम्स की, एक काफ़ी भारी डगआउट हमें देखने को मिला इन दोनों टीम्स की जानिब। और ये अज़हर हुसैन है स्कोरर, बहुत ही तजर्बाकार स्कोरर हैं अज़हर। और नुमान 96 का जो वर्ल्ड कप का फ़ाइनल लाहौर में खेला गया था उसकी स्कोरिंग के फ़राइज़ भी इन्होंने सर अंजाम दिए थे। अज़हर ने बहुत ज़्यादा सीनियर स्कोरर हैं लाहौर से। रवि भी देखें कि अपने काम में जुटे हुए हैं और उन्हें कतन भी कैमरे का ख्याल नहीं कि उन पर कैमरा है। जी हाँ फरहान, और यही हमारी खुशकिस्मती है कि जब कमेंट्री बॉक्स में आप हमारे साथ मौजूद होते हैं तो इसी तरह की चीज़ें हमें पता चलती हैं कि 1996 वर्ल्ड कप के जो स्कोरर थे वो आज के मैच में भी स्कोरिंग कर रहे हैं। इनिंग्स का आखिरी ओवर अब्दुल रहमान फार एंड से करेंगे, इस गेंद को उठाकर खेल दिया और
फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑफ से आएंगे इस गेंद को फील्ड करने के लिए, और दोनों बैटर्स के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग और तीसरा रन भी यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पे 4 रन्स का, और थोड़ी बेहतर फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को मिली थी, लेकिन बदकिस्मत साबित रहे फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस कर गई है, तो आखिरी ओवर का आगाज जो है वो बाउंड्री के साथ किया है। ये ऐसी ही शॉट्स चाहिए जीसीयू को। अच्छा शॉट था, इसको अरम नवाब ने डाइव किया, गेंद को रोकने की कोशिश भी की लेकिन नाकाम रहे। क्रीज में पीछे गए, इसको भी पुल करना चाहते थे लेकिन स्लो बॉल था। एक ही रन यहाँ पर हासिल हुआ है 7 को। हमने अब्दुल रहमान की यह खासियत देखी है कि अगरचे वो गुज़िश्ता 2 ओवर्स में काफ़ी लाइन और लेंथ से चूक गए थे, लेकिन वो पेस वेरी करने में बिल्कुल भी जो है उन्हें दिक्कत नहीं होती। हमने देखा है कि वो स्लो बॉल भी वक्तन फवक्तन करते हैं, कभी शॉर्ट बॉल पे आ जाते हैं, और जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिमाग का भी और अपने तजर्बे का भी। विकेट को बहुत उम्दगी से इस्तेमाल किया है डीपीएस के बॉलर्स ने। पीछे किया हुआ गेंद था, यहाँ पर पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं। अपील जरूर की लेकिन अंपायर कैसर वहीद ने इसको नॉट आउट करार दिया। गेम अवेयरनेस बहुत ही उम्दा है डीपीएस की। हम देख रहे हैं इनके स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है और विकेट को बहुत अच्छा रीड किया है। कप्तान का जो फैसला था उसकी दाद देना होगी, क्योंकि आमतौर पर वनडे मैचेस में, दिन के मैचेस में कोशिश यही करती हैं टीम्स के वो पहले बैटिंग करें, और विकेट भी बैटिंग के लिए बहुत साजगार दिखाई दे रहा था। तो ये जो बॉलिंग का फैसला था वो भी इनके हक में गया। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह फरहान हम बात कर रहे थे कि चेस करने में कदरे आसानी होगी, क्योंकि पिंक बॉल है, अंडर लाइट्स, जब ड्यू फैक्टर भी आता है तो बैटर्स के लिए वो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है उस तमाम सिचुएशन से को जो है वो हैंडल करना। मरतबा फिर स्लॉक करने की कोशिश, बिल्कुल गेंद की लाइन से चूक गए थे बैटर, और एक मरतबा फिर हम जिस चेंज ऑफ पेस की बात कर रहे थे अब्दुल रहमान की, वो हमें देखने को मिला। बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस लेटर फेज ऑफ द इनिंग्स में। ये स्लो बॉल किया था, बैक ऑफ दी हैंड था, बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाए, और खुशकिस्मत रहे कि अगर ये गेंद विकेट से टकराती तो रन आउट होकर वापस जाना पड़ता। बॉलिंग और फील्डिंग का मयार बहुत ही उम्दा रहा है डीपीएस फैसलाबाद की जानिब से। ये भी क्रॉस सीम गेंद था, पीछे गिरा हुआ गेंद था, पुल करना चाहते थे। लेग बाई का एक रन ज़रूर हासिल किया, लेकिन अभी तक बहुत ही उम्दा ओवर रहा है ये डीपीएस के नुक्ता निगाह से। जी हाँ बिल्कुल, जिस शानदार अंदाज से डीपीएस फैसलाबाद ने इनिंग्स शुरू की थी, आप देखिए कि बार फिर लेंथ वेरी की थी, और इसी सूरत भी कंट्रोल में नहीं थे बैटर इस शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर भी लेग बाय का एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। 176 8 विकेट्स के नुकसान पर इनिंग की आखिरी गेंद है वो अब्दुल रहमान करेंगे। अब टॉस जीतने के बाद डीपीएस फैसलाबाद ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आगे गिरा हुआ गेंद था, ऊंचा शॉट खेला, फील्डर्स गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ ही इस इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। 40 ओवर्स का 3 ओवर्स इनिंग्स का ये मैच, जिसमें आखिरी गेंद पर कैच करने के बाद स्कोर है 176 रन्स 9 विकेट पर बनाए हैं जीसीयू लाहौर ने, और 177 रन्स बनाना होंगे डीपीएस फैसलाबाद को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, और सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। बिल्कुल, ये आखिरी विकेट थी, इस बार फिर उठाकर खेलना चाह रहे थे, बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल था, और मिड विकेट से बड़ा शानदार कैच किया फील्डर ने। जिस बेहतरीन गेम अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, और इसके साथ ही इस इनिंग्स का भी खात्मा हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम ने पहले बैटिंग की, 176 रन बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पर, मतलूबा 40 ओवर्स में, और यहाँ पर 177 रन का हदफ चेस करना होगा। अगर हम इस इनिंग्स की बात करें तो यकीनी तौर पर 177 रन का जो हदफ है, इसमें काफ़ी उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिली हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की जानिब से। डीपीएस का ग्रुप काफ़ी खुश है, मुतमईन है
क्योंकि एक बैटिंग विकेट पर सिर्फ 176 रन्स पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद की टीम ने और इनके खिलाड़ी, उनके कोच। और इस तरह से आगाज़ हुआ, सॉलिड स्टार्ट मिला था यहाँ पर जीसीयू को। ये दोनों ओपनर्स ने बाउंड्री ज़रूर लगाई, विकेट नहीं गंवाई, लेकिन जैसे ही और ये एक और बाउंड्री जो पुल किया यहाँ पर, और ये वो पहली विकेट, स्लो बॉल था अब्दुर्रहमान का जिसको ठीक से खेल नहीं पाए। पहली विकेट यहाँ पर हासिल हुई और उसके बाद स्पिनर्स के आने के बाद रन आउट, ये दूसरी विकेट। और इसके बाद फिर विकेटें गिरती रही और ये सिलसिला रुक नहीं पाया। मोमिन वकार की बॉलिंग पर कुछ बाउंड्री ज़रूर लगी और ये वो विकेट थी जो अरम नवाब ने हासिल की, हसन की एलबीडब्ल्यू किया। और उसके बाद ये फ्लैटेड बॉल थी जिस पर बोल्ड कर दिया। मुबशर ने 50 रन ज़रूर मुकम्मल किए, लेकिन वो भी इनिंग्स के अख्ताम तक क्रीज पर मौजूद नहीं रहे। ये एक और विकेट गिरने का मंजर, मुबशर काफ़ी दूर थे, 3 खिलाड़ी रन आउट हुए हैं इस इनिंग्स में। और ये एक और रन आउट जब दोनों बैट्समैन एक ही एंड पर इकट्ठे हो गए। और ये एक और विकेट जो हासिल हुई कप्तान अरहम नवाब को, और इस मरतबा बोल्ड किया अब्दुर्रहमान ने। और ये आखिरी खिलाड़ी इनिंग्स की आखिरी गेंद पर ऊंचा शॉट खेलकर कैच दिया और 176 रन्स बना पाई जीसीयू लाहौर की टीम। और अब डीपीएस को ये मैच जीतने के लिए 177 रन्स चाहिए मुकर्ररा 40 ओवर्स में। डीपीएस फैसलाबाद की टीम जैसे ही इस हदफ का ताकुब शुरू करेगी, हम दोबारा आपको कजाफी स्टेडियम लाहौर से खुश आमदीद कहेंगे। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है, जहां सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कॉलेज चैम्पियनशिप का फाइनल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद के दरमियान खेला जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 40 ओवर में 176 रन्स बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पर। मुबश्शिर मुजम्मिल 61 रन्स के साथ नुमाया स्कोरर रहे। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, डिविजनल पब्लिक स्कूल के कप्तान अरम नवाब ने 22 रन्स देकर 3 विकेटें हासिल की, जबकि अब्दुल रहमान सीनियर ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया 44 रन्स देने के बाद। चालीस ओवर्स के इस मुकाबले में दूसरी इनिंग्स शुरू होने को है और ये गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाड़ी अपने मैदान में उतरते हुए, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी आ चुके हैं नुमान चौधरी। खुशामदीद नुमान। शुक्रिया फरहान। 176 रन स्कोर बोर्ड पे सजाए हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने। पहले बैटिंग की दावत दी गई डीपीएस फैसलाबाद की जानिब से, और इस टारगेट के हदफ के लिए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं वो मैदान का रुख कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर 177 का हदफ अगर हम 40 ओवर्स की बात करें तो थोड़ा कदरे आसान लगता है, लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो उनके पास कुछ बड़े नाम जो हैं वो बॉलिंग में मौजूद हैं। जिस तरह हम बात कर रहे थे जहांगीर की, इसके अलावा साद नदीम की, तो 2 बड़े बॉलर्स इनके दरमियान मौजूद हैं। वो टूर्नामेंट के जो है वो काफ़ी नुमाया उनकी बॉलिंग फिगर्स रही हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन आज इस मैच में अगर कामयाबी हासिल करनी है डीपीएस की टीम के खिलाफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को, तो उन्हें जल्दी विकेट्स हासिल करना होंगी, क्योंकि यकीनी तौर पर 40 ओवर्स में 177 रन का जो हदफ है वो कदरे आसान दिखाई देता है, और इसके लिए आपको इस नई गेंद का बेहतरीन और भरपूर इस्तेमाल करना होगा। एक 177 रन्स का हदफ बज़ाहिर इतना मुश्किल दिखाई नहीं देता, लेकिन ये शाम का वक्त है, मसनूई रोशनियों के नीचे बैटिंग करनी होगी इन दोनों ओपनर्स को, और मुमकिन है कि ये पहली मर्तबा किसी डे एंड नाइट मैच में बैटिंग कर रहे हों। और बड़ा मैच है, बड़ा फाइनल है, इसका जो दबाव है वो इन दोनों बल्लेबाजों पर भी होगा। और दूसरी जानिब जो बॉलर्स हैं वो वार्म अप होते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद की टीमों के दरमियान सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैम्पियनशिप का ये फाइनल, जिसकी दूसरी इनिंग्स का आगाज अब होने को है। और ये पहला गेंद था, टारगेट पर किया, डॉट बॉल के साथ इस इनिंग्स का आगाज किया है। अबू बकर डार और सरकम बैटिंग के लिए आए हैं, और अबू बकर डार के हवाले से ये कहा गया है कि उन्होंने इस इवेंट में एक डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है, एक सेंचुरी भी इनके नाम के आगे दर्ज है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी डीपीएस की अबू बकर डार से। बकर का ये गेंद आगे गिरा, इन बैट का किनारा लेता हुआ फील्डर के करीब से होता हुआ 4 रन्स के लिए स्लिप के फील्डर के पास मौका ज़रूर था, लेकिन बहुत ही ये तेज़ कैच था जिसके लिए तैयार नहीं थे, और ये बाउंड्री हासिल हुई है यहाँ डीपीएस को। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इनिंग्स के इब्तिदा में ही एक मौका मिला है अबू बकर डार को। आउटसाइड द लाइन ऑफ ऑफ स्टंप गेंद के साथ छेड़खानी कर रहे थे, स्लिप में फील्डर के पास मौका था लेकिन वो इसको ग्रैब नहीं कर पाए, तो पहली बाउंड्री यहाँ पर हासिल हुई। देखिए आउटसाइड एज एक रेगुलेशन कैच हो सकता था, लेकिन कदरे तेज आया फील्डर की जानिब, और इस टूर्नामेंट के एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैटर अगर हम कहें अबू बकर डार, तो उनकी विकेट हासिल करने के बहुत करीब थे लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और अबू बकर डार जैसा खिलाड़ी जिसने टूर्नामेंट में एक डबल सेंचुरी स्कोर की है, एक सेंचुरी स्कोर कर रखी है, और अगर आप ऐसे प्लेयर्स को इनिंग्स के शुरू में ही मौका दे दें
तो इन प्लेयर्स की खासियत होती है कि वो इस मौके पे बड़ा उम्दा अंदाज से कैपिटलाइज करते हैं। आगाज़ अच्छा किया है जीसीयू ने और पहले 3 गेंद बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर किए हैं बकर ने, और एक चांस भी एक क्रिएट किया था जिसको वो पकड़ नहीं सके स्लिप के फील्डर। और अगर हम डीपीएस के फास्ट बॉलर से मुवाजना करते हैं तो इनकी रफ्तार कदरे ज़्यादा है। बकर जीसीयू के लिए बॉलिंग करते हुए, ये आगे गिरा हुआ गेंद था, ड्राइव किया लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बॉलर्स हैं, स्पेशली जो शुरू के 5 ओवर्स हैं उसमें लगभग 1 से 2 विकेट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप 177 रन का को डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपकी यही कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो ब्रेक थ्रू हासिल किए जाएं। और शुरू में एक चांस जरूर क्रिएट किया था बकर ने, जहां अबू बकर को वो आउट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन स्लिप में फील्डर उस गेंद को कैच नहीं कर पाए। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग यहाँ पर कवर रीजन में, और कोई भी रन हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। अभी तक कन्विंसिंग स्टार्ट रहा है अबू बकर का, लेकिन दूसरी जानिब जो बकर हैं वो भी लाइन और लेंथ को मेंटेन कर रहे हैं। और दोनों टीमों के जो फास्ट बॉलर्स में नुमाया जो फ़र्क दिखाई दे रहा है वो ये है कि डीपीएस के फास्ट बॉलर्स ने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की थी, और यहाँ बकर आते ही नए गेंद के साथ आगे बॉल कर रहे हैं ताकि इनको स्विंग मिले, विकेट के चांसेस मिले। ये अच्छा गेंद था, इसको दिफाई अंदाज से खेले, कोई रन यहाँ पर नहीं होगा। और इसे एक बाउंड्री के साथ पहला ओवर मुकम्मल हुआ, स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑयलियन एंड से बॉलिंग के लिए आए हैं मोहम्मद अली। तो पहले ओवर में काफ़ी अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग की है बकर ने, और एक विकेट हासिल करने का यकीनी मौका उन्होंने ज़रूर पैदा किया। तो आगाज़ अच्छा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, और 176 रन्स के दिफा के लिए नुमान इन्हें विकटें हासिल करना होंगी। तवातर के साथ अगर विकटें लेते रहेंगे तो इस मैच में रहेंगे, वरना ये हदफ इतना मुश्किल नहीं है कि डीपीएस की टीम ये पूरा ना कर सके। और ये गेंद स्विंग ज़रूर हुआ है, रफ्तार कम है अली की, लेकिन इस पहली गेंद में स्विंग के आसार ज़रूर दिखाई दिए। जी हाँ बिल्कुल, और जिस तरह लग रहा है कि ये मीडियम पेसर हैं और नई गेंद के साथ यकीनी तौर पर इन्हें मूवमेंट मिल रही है। सरकम का साथ दे रहे हैं अबू बकर, और यकीनी तौर पर जो कोशिश दिखाई दे रही है अभी तक, जिस अटैकिंग अप्रोच के साथ हमने देखा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम अप्रोच करती हुई, फिर सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, लेकिन फील्ड को अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। शॉर्ट कवर से फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। और अगर हम बात करें कुछ फील्ड प्लेसिंग की, तो एक पैक्ड आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है वो फील्ड रखी हुई है। ऑफ साइड की जो फील्ड है वो बड़ी पैक्ड है। हम देखें कि पॉइंट पे फील्डर मौजूद हैं, इसके साथ एक्स्ट्रा कवर और एक फील्डर को कदरे शॉर्ट कवर भी रखा हुआ है। तो यकीनी तौर पर जो अप्रोच है वो यही है कि जल्द से जल्द जो है वो विकेट कॉलम को जो है वो फिल किया जाए। अच्छा गेंद था, आगे गिरा हुआ, ड्राइव करना चाहते थे, कोई रन यहाँ हासिल नहीं हुआ। तो दोनों बॉलर्स की अप्रोच यही है कि आगे गेंद करें, बॉल को स्विंग हो, स्लिप मौजूद है। तो कोशिश में अभी तक खासे हद तक कामयाब दिखाई दी है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम। और दूसरी जानब डीपीएस को इतनी जल्दी नहीं है, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, वक्त लेंगे ये दोनों ओपनर्स और कोशिश करेंगे कि एक अच्छी ओपनिंग शराकत कायम करें।
ये गेंद भी आगे गिरा हुआ था, ड्राइव किया लेकिन कोई मौका नहीं दे रहे। ऑफ साइड पर सर्कल के जो फील्डर्स हैं नहायत ही मुस्तैद और चाको चौबंद, इनके दरमियान से गेंद निकालना ये एक बड़ा टास्क होगा इन दोनों ओपनर्स के लिए। जी हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं जो ऑफ साइड की फील्ड है, 4 फील्डर्स दायरे के अंदर मौजूद हैं और ऑफ साइड पे एक रिंग बना हुआ है फील्डर्स का, और इन फील्डर्स को अबूर करना यकीनी तौर पर इतना आसान नहीं है इन बैटर्स के लिए। ये गेंद कदरे नीचे रहा। पहली इनिंग्स में भी हमने देखा फास्ट बॉलर्स के कुछ गेंद नीचे रहे थे। देखिए पीछे गिरा हुआ गेंद था और जिस हाइट पर तवक्को कर रहे थे वहां पर ये बॉल नहीं आया। थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, गेंद की लाइन में आए बगैर यहाँ पर सरकम ने। ये गेंद भी आगे गिरा था, इनवाइट कर रहे हैं कि ड्राइव खेलें। और एक और डॉट बॉल के साथ ये ओवर मुकम्मल हुआ। मेडन ओवर रहा अली का। स्कोर बदस्तूर 4 रन 2 ओवर्स के इख्तिताम पर। ये डीपीएस का डग आउट है। विकेट कीपर मोहम्मद सलमान, जो 2011 में वेस्ट इंडीज़ के टूर पर इनका डेब्यू हुआ था। और बहुत ज़्यादा जो थिंकिंग क्रिकेटर्स कहा जाता है उनमें मोहम्मद सलमान का शुमार होता है। ज़्यादातर क्रिकेट कराची में इन्होंने अपनी खेली है, लेकिन फैसलाबाद से ताल्लुक़, और अब फैसलाबाद में अपने क्लब को और स्कूल की क्रिकेट को देखते हैं। ये इसको थर्ड मैन की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद। तो मोहम्मद सलमान का किरदार बहुत अहम रहा है फैसलाबाद जैसे छोटे शहर को। जब से सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने स्कूल और कॉलेज क्रिकेट रिवाइव किया है, तो ये डीपीएस की टीम हर फाइनल हमें खेलती हुई दिखाई देती है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर होने का बड़ा एडवांटेज होता है कि जब आप जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनमें अपना तजर्बा ट्रांसफ़र करते हैं, तो यकीनी तौर पर उससे न सिर्फ वो बहुत कुछ सीखते हैं, बल्कि वो मुस्तकबिल में जाकर पाकिस्तान की यकीनी तौर पर नुमाइंदगी भी हम करते देखेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, एक मरतबा फिर इस पर जो है वो कवर के फील्डर को अबूर करने में कामयाब नहीं हुए। तो अभी तक जो अप्रोच हमने देखी है, कुछ पहले हम क्राउड की बात भी कर लें कि काफ़ी बड़ी तादाद में इन प्लेयर्स की फैमिलीज़, इनके कोलीग्स, इनके टीचर्स, इनके सपोर्टर्स इस मैच को देखने आए हैं, और यकीनी तौर पर ये बड़ी खुशाइंद बात होती है जब आप एक बतौर खिलाड़ी एक मैच में फीचर कर रहे हैं और आपकी फैमिली, आपके प्लेयर्स, आपके असातिज़ा आपको बैक कर रहे हैं, तो बड़ा यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव और एक प्लस फैक्टर होता है इन प्लेयर्स के लिए। आगे गिरा हुआ गेंद और तीनों स्टंप्स को ये टारगेट कर रहे हैं दोनों बॉलर्स, और कोशिश इनकी ये है कि जहाँ पर बल्लेबाज गलती करेंगे वहाँ इन्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अबू बकर डार बहुत ज़्यादा मुस्तहकम, और ये ज़रूरी है जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो, लाहौर में क्रिकेट हो, कोई फाइनल हो, तो वहाँ पर फिर ढोल होना चाहिए, मौसीकी होनी चाहिए, और ये लोग भी इस क्रिकेट से महजूज होते हुए यकीनन इनका ताल्लुक इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम के साथ है। इस मरतबा आगे गिरा हुआ गेंद, इसको ड्राइव किया, कोई मौका नहीं कवर्स के फील्डर के पास, और ये दूसरी बाउंड्री मिली है यहाँ पर डीपीएस को और अबू बकर डार को। खूबसूरत बैटिंग यहाँ पर अबू बकर डार की, से आप कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो टेक्स्ट बुक ड्राइव अगर हम कहें तो भेजा ना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खूबसूरती से अपना बल्ला निकाला, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से गेंद तीनों फील्डर्स को चीरती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये देखिए एक मरतबा फिर फ्रंट लेग क्लियर किया और शानदार अंदाज से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के उस पार पहुंचाया। स्कोर बढ़ते हुए 8, तीसरे ओवर का खेल जारी है। तमाशाई मौजूद हैं इन खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के लिए। ये गेंद थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ था, इसे गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ। अबू बकर डार स्क्रीन पर, यकीनन इस नौजवान का मुस्तकबिल भी ताबिकनाक है, जो इस टूर्नामेंट में बड़े रन्स करने के बाद यहाँ फाइनल तक पहुंचा है।
ये गेंद भी आगे गिरा हुआ था, इसको ड्राइव किया मिड ऑन के फील्डर, जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन हासिल किया अबू बकर ने। 3 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, और ये 9 के 9 रन ही अबू बकर डार के बल्ले से आए हैं, जिन्हें इस मैच के पहले ही ओवर में एक चांस दिया गया स्लिप के फील्डर की जानिब से, जब उनका कैच ड्रॉप किया गया। और जिस तरह हम क्राउड की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं इन दोनों टीम्स को सपोर्ट करने के लिए और क्रिकेट से महजूज होने के लिए। और किसी कॉलेज टूर्नामेंट के अगर नुक्ता निगाह से देखें तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है, और अब जैसे दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ेगी तो इन तमाशाइयों की तादाद में भी इजाफा होता जाएगा। अली अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए, पहला ओवर इन्होंने मेडन किया था, इस गेंद को खेलना चाहते थे, आखिरी वक्त पर अपना बल्ला हटाया अबू बकर डार ने। या अगर हम अली की लाइन की गेम बात करें तो वो एक प्रॉबिंग लेंथ होती है जिस पे आप बैट्समैन को खिलाना चाहते हैं, और काफ़ी वो रिस्की लाइन होती है बैट्समैन के लिए। अगर वो उस शॉट को कमिट करते हैं तब भी वो आउट हो सकते हैं, अगर वो लीव करते हैं तब भी वो डबल माइंड होके लीव करते हैं। तो यकीनी तौर पर अली का जो ये स्पेल है वो बड़ा मानी खेज हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम के लिए। क्रीज से कदरे बाहर खड़े हो रहे हैं अबू बकर डार, और आमतौर पर बैट्समैन इसलिए करते हैं कि जो स्विंग है उसे ख़त्म किया जाए इस कोशिश में। और पहली इनिंग्स में भी हम नुमान बात कर रहे थे कि जो दोनों टीमों की जो गेम अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा इस लेवल पर इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस जो है वो कम ही देखने को मिलती है। ये देखिए अपनी क्रीज से काफ़ी बाहर खड़े हो रहे हैं अबू बकर डार। फिर डबल माइंडेड हुए इस गेंद को खेलने के लिए, लेकिन सिर्फ पॉइंट के फील्डर तक की गेंद जा सकी। और जिस लेंथ की हम बात कर रहे थे फरहान की, वो आउटसाइड द लाइन ऑफ स्टंप प्रॉबिंग लेंथ है कि जहाँ पे बैट्समैन जो है वो बिल्कुल डबल माइंड हो जाता है कि आया वो गेंद को छोड़े या गेंद को खेले। तो वहां पर जो है वो अली गेंद कर रहे हैं और अभी तक बड़े कामयाब हुए हैं उसमें। 1.3 ओवर जो है वो किए हैं अली ने और अभी तक कोई रन कंसीड नहीं किया। फुल लेंथ बॉल था जिसे, और पूरा बैट को स्विंग नहीं कर रहे अबू बकर, जितनी भी शॉट्स खेली हैं बैकलिफ्ट इतनी ज़्यादा हाई नहीं है और वो पूरा बैट को घुमाते नहीं है शॉट खेलते हुए। और ये जानते हैं कि इन पर भारी जिम्मेदारी आयद है, पिछले मैचेस में रन्स करते हुए आए हैं और यही इन्हें समझाया गया है कि जितना वो वक्त क्रीज पर गुजारेंगे उतना इनकी टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा। एक और डॉट बॉल, अभी तक कोई रन नहीं दिया अली ने, अपने दूसरा ओवर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिस प्लान और गेम अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे फरहान, वो अभी तक वाजे दिखाई दे रहा है कि जो डीपीएस की टीम है, डीपीएस फैसलाबाद की, उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादातर गेंदों का सामना अबू बकर डार खुद करें, क्योंकि उनके जो अप्रोच है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, उनका तजर्बा भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो फिर सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला और इसके साथ ही 4 ओवर्स का इख्तिताम। मजमूई स्कोर है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान के, और अली ने अपना दूसरा मेडन ओवर मुकम्मल किया। सारकम अब सामना करेंगे बकर का, और ये गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, काफ़ी तेज़ी से सीम हिट किया और इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे सारकम। खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद इनके बैट या विकेटों को नहीं छुई, उसके पास से होती गई विकेट कीपर के पास।
जी हाँ, बिल्कुल। एक ये अप्रोच थी यहाँ पे, गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर की जाने भाई, इसे आप कहते हैं कि जिप थ्रू होना। और एक बड़ा अच्छा टेक किया यहाँ पर विकेट कीपर ने, लेकिन चूंकि उसको फिनिश नहीं कर पाए, एंड में गेंद ग्रैब नहीं कर पाए सही तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो अप्रोच दिखाई दे रही है हमें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम की, वो यही है कि थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली जाए, जल्दी विकेट्स हासिल की जाए। लेकिन दूसरी जाने जो डीपीएस फैसलाबाद की टीम है, वो एक लगता है प्लान से आई हुई है कि शुरू के ओवर्स का जो है वो बेहतर अंदाज से सामना करना है। ये गेंद काफ़ी बेहतर था, इसको ड्राइव किया लेकिन ऑफ साइड पर। पैक्ड फील्ड है और जीसीयू की अप्रोच बिल्कुल वाजे है कि वो अटैक कर रहे हैं, विकेटें लेना चाहते हैं। और अभी तक इन पहले 4 ओवर्स में बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है इन दोनों बॉलर्स ने, ख़ास तौर पर बकर ने, जिनके पास पेस भी है, स्विंग भी है, और 2 मरतबा वो बल्लेबाजों को सरप्राइज कर चुके हैं। बिल्कुल, बकर अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। फुल बॉल थी, एक मतलब फिर इसको निकालना चाह रहे थे लेग साइड की जानिब। एक शानदार अपील यहां पर बकर की जानिब से, लेकिन अंपायर ने नफी में सर हिलाया। यकीनी तौर पर ये गेंद लेग स्टंप मिस कर रही होगी, इसलिए अंपायर ने जो है वो किसी किस्म का इसमें इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। और अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन कर रहे हैं बकर यहाँ पर, और जिस तरह नई गेंद है इन्हें ऑफ द सीम मूवमेंट भी मिल रही है। कैसर वहीद काफ़ी मंझे हुए अंपायर हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल है इन्हें। इस मरतबा ज़ोरदार अंदाज से खेलना चाहते थे, बीट हुए। और यहाँ लग रहा है कि जो सरकम है वो जल्दी करने की कोशिश में है, क्योंकि 10 गेंदें वो डॉट खेल चुके हैं, पहला रन अपना हासिल करना चाहते हैं। ये देखिए ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद था, इसको चेस करने के खुशकिस्मत रहे कि ये गेंद इनके बैट से टकराते हुए विकेट कीपर के पास नहीं गई। शॉर्ट बॉल थी और गेंद विकेट कीपर की जानिब गई। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बकर, और जिस लाइन और लेंथ की हम बात कर रहे थे उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। ये देखिए एक शॉर्ट पिच बॉल था और डक किया बैट्समैन ने। और जिस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम। फिर सीधे बल्ले के साथ खेला और एक तेजी से सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए। द फर्स्ट रन ऑफ द बैट 12 गेंदों के बाद, और इसके साथ ही 5 ओवर्स का इख्तिताम। मजमूई स्कोर है 10 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। शाबाश बॉय शाबाश। अली अपना तीसरा ओवर करेंगे। पहले दोनों ओवर्स इनके मेडन रहे हैं, 5 ओवर्स में सिर्फ 10 रन्स बना पाई है डीपीएस की टीम। जीसीयू की कोशिश है कि जितना ज़्यादा दबाव बढ़ा सकें वो उसमें कोशिश करें। और इस मरतबा अपील विकेट कीपर ने ज़रूर अपील की थी, लेकिन बॉलर्स जानते थे कि गेंद पड़ने के बाद लेग स्टंप की जानिब जा रहा है। और इन दोनों बॉलर्स ने ज़्यादातर इन स्विंग बॉल किया है, जो ये देखिए मिडल एंड लेग पर पिच हुआ और उसके बाद और लेग साइड की जानिब जा रहा था। अभी तक अगर हम देखें तो किस्मत ने साथ दिया है डीपीएस की टीम का, क्योंकि तवातर से 3 से 4 अपीलें जो हो चुकी हैं, और यकीनी तौर पर अंपायर ने तमाम अपीलों पर नफी में सर हिलाया है। फिर यहाँ पर गेंद यकीनी तौर पर उनके हाथ से ख्याल निकल गया था। अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और इसके नो बॉल के साथ एक फ्री हिट भी मिलेगी यहाँ पर डीपीएस फैसलाबाद की टीम को। और थोड़ा सा
यहाँ पर बदकिस्मत रहे हैं अली, क्योंकि वो बड़ी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे थे। 2 कंसेक्यूटिव जो है वो मेडन ओवर करने के बाद ये देखिए गेंद बिल्कुल उनके हाथ से स्लिप हो गया था और विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट किया और नो बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। फ्री हिट है, बल्लेबाज के पास मौका है कि जहां चाहें शॉट खेलें, आउट होने के इम्कानात नहीं है। फील्ड का जायजा ले रहे हैं सरकम। 14 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया है। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल किया, फील्डर्स देखते रह गए और यूं ये बाउंड्री हासिल की सरकम ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। जी हाँ बिल्कुल, काफी देर से अंडर प्रेशर थे सरकम। डॉट बॉल्स का उनके पास प्रेशर था, लेकिन ये यकीनी तौर पर एक गिफ्ट था और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो भरपूर फायदा उठा सकते थे और उठाकर खेला मिड विकेट की जानिब। 4 रन हासिल किए और इसके साथ ही डीपीएस का स्कोर बढ़ते हुए 15। ये देखिए शॉर्ट बॉल थी कि ये फ्री हिट थी तो इसे किसी भी तरफ खेल सकते थे। मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया और 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। इस मरतबा ड्राइव किया लेकिन ऑफ साइड पर 5 फील्डर दायरे के अंदर मौजूद हैं। इनके करीब से गेंद को निकालना इतना आसान नहीं डीपीएस के बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, 177 रन का हदफ है यहाँ पर डीपीएस फैसलाबाद के लिए और काफी मोहतात अंदाज में उन्होंने इस इनिंग्स का आगाज किया है अबू बकर और सरकम ने। और फिर अच्छी गेंद थी और दिफाई अंदाज से इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए। डीप स्क्वायर लेग से आकर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया। और ये वो चमकती दमकती ट्रॉफी है जो आज की फातेह टीम अपने साथ लेकर जाएगी, जिसका फैसला होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं है। इनफरादी इनामात भी आपकी स्क्रीन पर और रनर अप ट्रॉफी भी, जो टीम फाइनल हारेगी उसे ये ट्रॉफी मिलेगी। दिफाई अंदाज से खेला अबू बकर ने। 6ठे ओवर का खेल जारी है और ये दिन ये शाम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है इन दोनों टीमों के लिए, इन 22 खिलाड़ियों के लिए, और ये इनकी यादों का हिस्सा बन जाएगी चाहे इस मैच का नतीजा कुछ भी हो। मतलब ये ऑन साइड पर गिरा हुआ गेंद था, लो फुल टॉस था, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। और इसके साथ 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ। स्कोर है 16 रन बगैर किसी नुकसान के। ये हैं वो शानदार चमकती दमकती ट्रॉफीज इस मैच के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए और उनके साथ दाएं और बाएं जाने मौजूद हैं विनर्स और रनर्स अप की ट्रॉफीज। इस टूर्नामेंट में शानदार मुकाबले में देखने को मिले। 155 कॉलेज की टीम्स 18 डिस्ट्रिक्ट से 3100 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत की और 48 मकामात पर इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले गए। इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और फैसलाबाद डिविजनल पब्लिक स्कूल के दरमियान कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। इस मरतबा ड्राइव किया, कोई मौका नहीं कवर्स के फील्डर्स के पास और यूं 4 रन हासिल किए इस ओवर की पहली ही गेंद पर। अच्छा आगाज इस ओवर का डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद के लिए और जिस प्रेशर में दिखाई दे रहे थे ये दोनों बल्लेबाज, बस एक नो बॉल और फ्री हिट पर बाउंड्री हासिल करने के बाद यकीनी तौर पर लग रहा है कि अब सरकम भी जो हैं वो अपने ग्रूव में वापस आ रहे हैं। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसको फ्लैश किया खूबसूरती से और कवर पे मौजूद चारों फील्डर्स का कोई मौका नहीं था और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है 4 रन के लिए। इस मरतबा दिफाई अंदाज से खेले
और जहां मौका मिलता है वो मौका ज़ाया नहीं कर रहे ये दोनों बल्लेबाज। 4 बाउंड्रीज हासिल कर चुके हैं। सरकम और अबू बकर की जोड़ी डीपीएस के लिए इस हदफ के ताकुब में मैदान में उतरी है। कुल स्ट्रेट बैट के साथ खेले, लेकिन 5 फील्डर्स रिंग में मौजूद हैं ऑफ साइड पर। और ये डीपीएस के वो खिलाड़ी जो इस मैच में शरीक नहीं हैं, लेकिन अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इस ग्राउंड में, इस मैदान में मौजूद हैं। और यकीनन ये तमाम बच्चे पहली मर्तबा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आए होंगे, पहली मर्तबा ये मंज़र उन्होंने देखे हैं, और ये मंज़र यकीनन उनकी यादों का हिस्सा बन जाएंगे। और दूसरी जानिब तमाशाइयों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है इस बड़े फाइनल को देखने के लिए। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, ऑन साइड पर था। पहला रन तेज़ी के साथ मुकम्मल किया, लेकिन एक ही रन मिलेगा। स्क्वायर लेग के फील्डर वहाँ पर मौजूद थे। और अब नुमान रन्स की रफ्तार में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी जानिब अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल है यही ओवर है जिसमें अगर वो विकेट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नई गेंद अब थोड़ा सा पुराना होना शुरू हो गया है। 7वें ओवर में पहुंच गई है गेंद, तो जो नए ओवर्स में विकेट हासिल करने का उनका जो ख्वाब था, लग रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बकर अपना चौथा ओवर कर रहे हैं और ये गेंद यकीनन वाइड करार देंगे अंपायर कैसर वहीद। ये पीसीबी की प्रोडक्शन है और ये दुनिया भर में आप बराह रास्त देख सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर भी इस मैच का लुत्फ़ उठाया जा सकता है, और इसके अलावा पीटीवी स्पोर्ट्स पर भी आप ये मैच देख रहे हैं। बैकफुट पर इसको दिफाई अंदाज से खेले, रन लेना चाहते थे, लेकिन अबू बकर के साथी ने मना किया। मुहतात अंदाज है दोनों ओपनर्स का, और जहां पर उन्हें ख़राब गेंद मिलती है, जहां मौका मिलता है वहां पर रन हासिल करते हैं। 7वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान भर में जो स्कूल क्रिकेट की तारीख रही है, हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि स्कूल क्रिकेट से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं वो आए हैं। और इस गेंद को पिक किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं और दूसरे रन का इरादा था अबू बकर का, लेकिन उन्हें मना किया सरकिम ने। थोड़ी सी वाइल्ड थ्रो थी, लेकिन अच्छा बैकअप मौजूद था। और इसके साथ ही 7 ओवर्स का इख्तिताम, और डीपीएस फैसलाबाद की टीम 23 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। टारगेट है उनके सामने 177 रन का। $23 for none. A very circumspect start there for DPS Faisalabad. What they've done well is that they kept their wickets intact. All the 10 wickets in hand, and these are the glittering trophies that they're playing for. Winners will take away the prize of ₹500,000 alongside this beautiful trophy on the right of your picture. The runner-up will take 0.3 million Pak rupees, and the trophy towards your left. Plenty of individual prizes as well. Very chirpy and a very happy Ali Yunus alongside me. Good evening, Ali. Very good evening to you, Shah Faisal. And why not? So what makes you very happy today, other than the obvious? Well, I just love the way these youngsters have performed here, the way they've come here in Qaddafi Stadium and performed. I know they've been under lot of pressure of playing at big stage, being televised, a lot of things happening, championships at stake. But at the moment, I think Faisalabad team has done a wonderful job. 177 they restricted GCU at. I think that to start off things was very nice. But now I think this partnership looks very solid for DPS Faisalabad. And why not? This target is just 177. They can afford to do it.
But remember, Ali, it's a pressure game, and these are only youngsters. That will have to be important for them to keep their nerves. That's why it's important that they haven't lost any early wickets. Early wickets would really put panic inside the dressing room, and these two have done well so far. Well, no slips, but the ring of fielders on the offside, it's clear from the GCU camp that they want to restrict the scoring in this power play and build pressure that way. Yeah, that's one way of doing it. You dry up the runs, try to get wickets, try to force a mistake to the batters. But these two, Abu Bakr and Sarkam, both, they look very solid. They mean business. They don't afford any lapse in concentration here because this is the big match. A little bit of movement there for Hassan. He hasn't got a very long run up, but a good run up. Hassles into the crease, and look at that, nice high action. Gets pretty tight on the stumps as well, and look at that shape. Well, of course, if you talk about the result, it does matter, but more than result, it's the purpose of giving the exposure to these youngsters to come and play here at a big stage. I think that's what I'm really happy about. And I'm sure people who have performed, we saw in the first inning, the batter performed Arham bowled beautifully. I think that's what you want to see, youngsters performing. Momin, another one, the left arm wrist spinner. I think this is what we want to see. These youngsters from college cricket coming here and performing. It's wonderful to see. It's got a very strong action. Really want to have another look at it. Hassan, really strong action. Hits the crease hard and goes through his action very nicely. It's very tall as well. The point of release is he's pretty much using his maximum height. That's Mubashir. He had a good knock earlier. That shape once again close to the stumps and leaving the right-hander, playing a miss. On another day, he could easily have ate that one. Excellent over done from Hassan. 23 for none. Chasing that one. A touch fuller would have helped. Still searching for a wicket, GCU. It's just not the test of your batting and your bowling, the test of your nerves, how well you adapt to these conditions, to this big stage. And I was just about to say that it's about time that spin has been introduced. Muzammil, the GCU captain, being very proactive, has done well so far. They've not let DPS Faisalabad get away with the game. These are good scenes. This is what you want to see. People coming here and supporting these youngsters. There are not many, they're not big stars, but still they're enjoying, still they're right behind these young boys. Lovely scenes. Got the moves, just like you, Ali. The guy in the red shirt reminds me of you. When have you seen me dance like that? We've never been to such place. Faisal, assuming things? Ali, you're very modest. You're very famous. I get around to a lot of people that know you. Left arm spin in action immediately. That will be the key phase of the innings, because we saw in the GCU innings that spinners did put a stranglehold. Look at those moves. Yeah, that's more like me. The guy in white shalwar kameez, that's more like me. Not bothered about what people are saying, just dancing to the moves. This is going to be another test for these DPS bowlers. Spinners, the spinners have done a good job in the first inning, and I'm pretty sure that in second inning they will be very handy. Crowd's catch.
You're talking about those moves in the crowd and the dhol beating down. It's really created good atmosphere. I was outside just before the start of the game. The lights are on. It is really beautiful, and I'm sure these youngsters will remember. Knocked him over. Talk about the moves a little bit later. It's this time the breakthrough, and Jahangir went through the gate. That was GCU looking for that breakthrough, and Jahangir provided them with one. Look at the jubilation. That's what I was thinking about. The spinner is coming into play, and straight away we see first wicket going down. An armour that the batter had no idea. Lost his wicket. Have a look at that. Well flighted. Played for spin, kept straight. This is called an armour. Had no idea how to play this one. Right through the gates. First wicket down for DPS Faisalabad. Circumcised, going for 11 of 25. It's 23 for 1. Spin would always be crucial. That was the feeling, and it did make immediate impact. First wicket down. Abdur Rahman is the new batter in. Left-hander. It'll be interesting contest because ball coming into the left-hander, left arm over the wicket. I think he's staying left arm around, but that was a good delivery. Good start for Rahman. Knocks it down the ground immediately for his first run. Yeah, this match is definitely reminding me of the match that we played, the final back in 2002 against MU College. We were defending about 167 runs. Same sort of situation. And one of our spinners, Ishan Bhatt, I remember the leg spinner, he got us the first wicket. And then it was flurry of wickets after that. Can GCU do that again? The spell of Jahangir, I think, is going to be very crucial because this boy has a good head on his shoulders. 9 overs have passed. 24 for 1 is DPS. Yeah, this guy was in the commentary box just a while ago. Right in the from second from right. Our commentator with us. The groundsman. As the GCU camp was pretty relaxed. I think it's twin spin attack. Spin from the pavilion end as well. I think spin is the name of the game from now on. They realized it. I think he's realized it pretty quickly. We're just into the 9th over and we see there is a lot of change in the field, a slip coming into place, an off spinner bowling to left-hander. I think a very good move by the captain, bringing himself on. Flighted delivery to start off. I think that's courageous, Faisal, giving the ball some air. Absolutely, I think you called it correctly. Spin it to win it. Keep an eye on this bowling action, Ali. It may remind you of someone very, very famous and successful off spinner. Say that well? Are you talking about the same person? Absolutely. And that bounce, and it did look like it was Dusra. We can't tell from here, obviously. But it did come back into the left-hander and bounced, hit the inside half of the bat and onto the pad. This is interesting. That's the most intriguing part of this competition. There's plenty of surprises. And a talent like this can really surprise. He's wearing a half-sleeve shirt.
It's got to slip in. Nice flighted delivery. He's a very tall lad, Muzammil. These days, since the ICC had come down hard on off spinners when they started to bowl Dusra, we haven't seen many off spinners. They try to attempt to bowl Dusra. That's why you don't see a lot of off spinners in top class cricket anymore. Keep an eye on Muzammil. The first ball did give me an impression that he can bowl a Dusra. That one was a Dusra actually, and it went off the edge and dropped. There was a big deflection, plenty of bounce as well. You cannot do this. No way you can drop catches when you're just defending 177 runs. You got to take every chance that is given to you. This was pretty straightforward. Oh, that hurried the keeper, the gloves, stiff hands. Should have been taken at this level. Interesting. Very, very interesting. A good start from Muzammil. This is really pressure times here for DPS Faisalabad, because I think the spin is putting a stranglehold on their run chase. 10 gone, 25 for 1. A big test for Rahman and Abu Bakr to come up with a plan against this spin. Pressure definitely showing on the faces of the batters. They just lost 1 wicket though. But the pressure of dot balls, the pressure of not scoring runs, I think that's what it is hurting them at the moment. They've just faced 10 overs and just scored 25 runs. The same mistake what GCU did in the first inning when the captain was and the Mubashir, both were playing, took too many deliveries to score that 50. Same is happening here with DPS Faisalabad. That flighted delivery side on angle. Keeper just got up too soon. He didn't come up with the ball. He was pretty upright. This time he got it in the middle of the gloves, but no edge on that occasion. But it is splendid bowling. The dots are building, the pressure's building. There's plenty of time, but at least strike rotation should continuously happen to build the partnership. There's not many bad balls around, but you can't allow the spinners to bowl. That's good. Good use of the wrist to find the gap. Knock the ball into the gaps. Like I was saying, the DPS batters would need to come up with a plan to tackle this spin. They cannot allow them to bowl the way they are. Over. 11 gone, 26 for 1. Another over gone by, just 1 run off that score. I think the rotation of the strike, Shah Faisal, is the key here. Because the target is not much, 177 runs. You can do it with singles and twos. Not necessarily you need big boundaries. But the way they are playing, they just put themselves under a lot of pressure. Unnecessary pressure. Also what it does, Ali, the singles, as we look at the scorecard, it's slightly behind, I think. But talking about those singles and rotation of strike, as we watch Jahangir once again
Zammil, beg your pardon. That when you do rotate the strike, you hit the ball, knock the ball into the gaps, and you take singles. The fielder in the ring, they try to come up close on you, trying to stop that single. And that gives you that angle where you can hit it slightly firmly and get yourself a couple of runs. And that does make the bowler change his line and length if you continuously keep doing it. Well, one thing is for sure that Government College is not going down without a fight. They're giving everything they have at the moment. And why not? This is the big occasion, the final of this championship. I know how Saud Khan, the coach of GCU, how he must be feeling. I'm lucky enough to play it under him. I know what sort of a character he is, that never give up approach he has in himself. That is what we need to see from these GCU guys. Never give up. One thing for sure, Muzammil is throwing a challenge to the batters every delivery. Are you brave enough? You want to come down at me? Long on, long off or back. But cover fielder is up in the ring. The mid wicket is up in the ring. This one was slightly shorter. That did allow for the rotation of strike we were talking about. Like, would you challenge, Ali? You've been very attacking batsman in your times. Would you take him on? Why not? Feel inside the circle. Abu Bakr has taken 38 deliveries. Oh, that's going down. Abu Bakr has taken 38 deliveries. Why not? But at the moment, it's all the GCU bowlers and fielders are all over these batters. End of 12 overs, it's 28 for 1. I think Muzammil wouldn't allow you to play from the crease the way it looks like it. 28 for 1 rather after 12 overs. Slow going, definitely. Ali Yunus, this spin attack, put a stranglehold. What would be your game plan? Well, there's no point in blocking the deliveries like Abu Bakr is doing. 39 deliveries for 12 runs. You're gonna lose the match like this way. You have to keep rotating the strike, get a boundary here or there. That's probably the way to go about this chase, because 177 is not a less target. You got to change your approach a little. But the credit must be given to these two spinners. They've definitely pulled up the string. They're not giving anything away. 30 at the moment. Like I said in the last over, there's single available down the ground. Every time you knock the ball down the ground, you have two fielders. That's the kind of delivery that batter would think that he's missed out on. Not for a boundary, but could easily have played either side of that fielder. That's better. 3 singles in 2 deliveries. That's good result for DPS Faisalabad. Right hand, left hand combination should help them. Well, if you realize there's left and right hand combination bowling too. There's an off spinner in operation. There's a left arm spinner in operation. Probably the cricket of the highest order at the moment. Because GC they're giving their best. They're trying so hard to restrict them, not giving away any runs. Fielding have been spot on. Just one catch going down from the wicketkeeper. Other than that, they have been spot on with the decision making, with the fielding, with their bowling. Spot on. 13 overs have passed. 31 for 1. DPS.
Good use of the wrist there from Abu Bakr. Like I was saying, Muzammil is throwing a challenge. And in the meantime, if you look at the Fazal Mahmood enclosure, right across from us to the other side of the ground, the crowd has really swelled, creating a good atmosphere. We saw some dole beating earlier on. We need some fireworks in the middle, maybe, from the DPS batters as well. Yeah, they've been well entertained by some quality cricket too. That is why the energy is there in that crowd. Had it been just one-sided match, it would have been different. But at the moment, both colleges, the supporters will be thinking they're in the game. GCU, I'm sure they've done a good job. They're back in the game. But still, a little, I would say, the advantage is with DPS boys. Bold call, Ali Yunus. 32 for 1 into the 13th over. 14, beg your pardon. Singles are coming. Not more than 2 or 3 in an over, which at this stage, the GCU be pretty happy with 2 or 3 runs an over. And that would mean that the batters in the middle would be feeling the pressure. So full toss, a rare gift there. Couldn't make full use of it. Just a couple of runs. Although that ball dipped at the last minute, so Abu Bakr couldn't time it properly. With those couple of runs, Muzammil has ended his 3rd over. 35 for 1 after 14. Jagir will continue into his 4th over, and what a wonderful job that he's done. Just 5 runs given and taken 1 crucial wicket at the moment. Shah Faisal, I know it's too early to say, but I think if these 2 spinners carry on the bowling the way they are, it's gonna get very difficult for this DPS young boys. That's better. You keep on taking singles, keep on rotating the strike. Just don't let the pressure get to you, because at the moment it's fine. And that hole you were talking about, the moves, nice. That's Lutti, we call it in our Punjabi language. And my fellow commentator, they both are master at it. Especially Farhan. That's his part-time job too. He's wonderful with that Lutti. Excellent. Farhan is very shy about it, to admit. But that's the atmosphere I was talking about. It's really built here. Absolute fun evening here at the Gaddafi Stadium. Contest is heating up. Chance at the non-striker end. Not quite. And they have gone for the run off the overthrow. That was a ricochet off the batter. Captain is not happy with it, but both the batters are well within their right to go for that run. Spirit of cricket, you might have to say something else about it, but by the laws of the game, there's nothing wrong with them going for that 2nd run after the ricochet. Contest is heating up in the middle. I think both the teams are well in it. Partnership is building. They need to put the foot on the pedal just a little bit. Tell you more about it for the next half an hour. It's going to be Noman and Farhan.
15 gone, 38 for 1. शुक्रिया शाह फैसल। एक शानदार मार्का जारी है कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुकाबला चल रहा है डीपीएस फैसलाबाद के साथ। रन्स खुश कर दिए हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्पिनर्स ने, और ये लगता है गवर्नमेंट कॉलेज की सपोर्टर हैं जिस ज़ोरदार अंदाज से ये दाद दे रही हैं खिलाड़ियों को। और ये अच्छा लग रहा है, इतनी बड़ी तादाद में तमाशाई मैदान में मौजूद हैं इन नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। नुमान पहली इनिंग्स के बाद लग रहा था कि शायद ये एक तरफा मैच हो जाए, लेकिन जीसीयू के बॉलर्स ने, ख़ास तौर पे स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है और इन तमाशाइयों को एक भरपूर क्रिकेट देखने को मिल रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बॉलर्स ने और डीपीएस के बैट्समैनों ने, दोनों की कोशिश है कि ये मैच बड़ा सनसनीखेज हो। राइटेड बॉल था, इसको ड्राइव करना चाहते थे। अबू बकर क्रीज पर मौजूद हैं और अभी कुछ देर पहले नीचे डीपीएस के जो कोच हैं सलमान से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अबू बकर जो है बड़े हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, ऊंचे शॉट्स खेलने में महारत रखते हैं और चाहते हैं कि वैसे शॉट्स खेलें, लेकिन इनको हमने रोका हुआ है। इन्हें कहा गया है कि आपने ऐसे शॉट्स नहीं खेलने, एक एंड पे खड़े रहना है, एंकर करना है इनिंग्स को, और वो पूरी तरह से अपने कोच की हिदायत पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़े फर्माबरदार तालिबे इल्म की तरह बारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फर्माबरदारी में आगे निकल गए हैं। 48 गेंदों का सामना किया है, 18 रन पर खेल रहे हैं और यकीनी तौर पर अभी तक कोई विकेट नहीं, सिर्फ एक ही विकेट माफ कीजिएगा गा सकी है यहाँ पर डीपीएस फैसलाबाद की टीम। 16वें ओवर का खेल जारी है, मजमूई स्कोर है 40, एक विकेट का नुकसान हुआ है 177 रन के हदफ के जवाब में। फिर अच्छी गेंद थी और इधर की जानिब गई ये गेंद। मुजम्मिल अपना तीसरा ओवर कर रहे हैं। ये आखिरी गेंद काफ़ी अच्छा बॉल था, इस पर चांस ज़रूर था। 16 ओवर में 40 रन्स बना चुकी है डीपीएस की टीम। मज़ीद 136 रन्स दरकार हैं 24 ओवर्स में और 5.5 से ज़ायद का रन रेट है जिसके मुताबिक ये रन्स बनाना होंगे। और जिस तरह पहली इनिंग्स में देखा कि डीपीएस के स्पिनर्स ने सूरत हाल को काबू किया था, अब दूसरी जानिब जहांगीर और जो दूसरे स्पिनर्स हैं वो इस इनिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर फील्डर्स मौजूद हैं बाउंड्री बचाने के लिए। एक रन हासिल हुआ यहाँ पर अबू बकर को। जी हाँ बिल्कुल, अबू बकर से मुतल्लिक अभी हम बात कर रहे थे कि बड़े जारहा में था जो बल्लेबाज हैं इस टूर्नामेंट में, एक डबल 100 और एक सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। आज इस फाइनल में बड़ी भारी जिम्मेदारी है पर कि एक अच्छी बारी खेलें, लेकिन यहाँ पर दोनों एंड से स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं फरहान, और मुश्किल हो रही है, हमने देखा है स्पिनर्स को टैकल करना। पर जहांगीर जिन्होंने इस टूर्नामेंट में कदरे बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट रहे हैं अपनी टीम के लिए और आज भी जो है उन्होंने एक विकेट हासिल की है। तो अभी कोशिश यही होगी जहांगीर की कि किसी तरह अबू बकर की जो है वो यहाँ पर विकेट हासिल की जाए और गेम में वापस लाया जाए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम को। और दबाव बढ़ा रहे हैं ये दोनों स्पिनर्स और कोशिश यही है कि जो रन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए। विकेट के सामने फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री लाइन पर तैनात किए हुए हैं, कोशिश यही है कि बाउंड्री ना दी जाए। और अब एक फील्डर बिल्कुल जो दूसरी विकेट है उस पर खड़ा किया है ड्राइव के लिए, लेकिन ये गेंद पीछे थी, इसको बड़ी आसानी से लॉन्ग ऑन की जानिब खेला और एक रन हासिल किया। और दोनों स्पिनर्स फ्लाइट कर रहे हैं। ज़्यादातर बॉल्स हम देखें नुमान तो आगे गिरी हुई बॉल हैं, चाहते हैं कि वो बैट्समैन ड्राइव करें और वहाँ पर जो
विकेट हासिल करने के इम्कानात हैं वो पैदा हों। जी हाँ, बिल्कुल। जो विकेट हासिल करने के इम्कानात की बात कर रहे हैं फरहान, उसके लिए आपको थोड़ा एग्रेसिव फील्ड सेट से जाना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि बिल्कुल कैचिंग पोजीशन पर एक फील्डर को जो है वो ले लिया है यहाँ पर। तो अब जहांगीर की कोशिश भी यही है कि वो विकेट्स हासिल करें। चांस ऑफ एक रन आउट का चांस था यहाँ पे क्रिएट हुआ, लेकिन कीपर जो है वो उस गेंद को सही तरह गैदर तो कर पाए, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स बड़ी शानदार रही है इस मैच में। हमने देखा है एक खास तौर पे डीपीएस फैसलाबाद की जानिब से, और एक रन को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। अगरचे यहाँ पर बड़ा क्लोज कॉल हो सकता था, गेंद को हिट किया, शॉर्ट पॉइंट लेग से फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, अच्छी थ्रो थी, लेकिन अबू बकर की रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बड़ी शानदार रही है। अगरचे जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम है वो 3 से 4 बल्लेबाज जो है वो रन आउट हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डीपीएस की टीम कतरे संभल के बारी कर रही है। एक मरतबा फिर सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला और कोई रन हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे अबू बकर। ये पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुश किया लॉन्ग ऑन की जानिब, एक रन मिलेगा। और जिस रन आउट की थ्रो की आप बात कर रहे थे, तो बैट को ड्रैग करते हुए गए अबू बकर। तो ये वो बेसिक्स हैं जो अगर इस एज में समझ आ जाएं तो खिलाड़ियों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। 17 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, स्कोर है 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर डीपीएस फैसलाबाद। रन रेट अब बढ़ के 5.74 पर पहुंच चुका है, और यहाँ पर जीसीयू की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स की जाएं, कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है इसको 6 से ऊपर लेके जाया जाए। अगर ये 7 के आसपास पहुंच जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा डीपीएस को, और उसमें मुमकिन है कि कुछ ऐसी शॉट्स हमें देखने को मिले इस पे विकेट गंवाने का ख़तरा हो। मुजम्मिल ने अभी तक 4 ओवर्स किए हैं, सिर्फ 9 रन्स दिए हैं अपने 5वें ओवर के साथ। फ्लाइटेड बॉल था, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, और यही कोशिश है दोनों स्पिनर्स की कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर ही इन दोनों बल्लेबाजों को खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल्स करें। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम मुजम्मिल की बात करें तो फरहान, हमने देखा है कि वो स्पिनर्स जो हाई बैकलिफ्ट के साथ गेंद करते हैं उनको ऑफ द विकेट जो है वो थोड़ा सा बाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो इनकी भी हम अगर हम बात करें मुजम्मिल की, ये देखिए गेंद पड़ने के बाद तेजी से जो है वो अंदर की जानिब आया, थोड़ा सा इनसाइड एज भी हुआ। तो मुजम्मिल हाइट में जो है वो उनकी हाइट कदरे ज्यादा है, तो उन्हें जो बैकलिफ्ट है उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा है। तो यकीनी तौर पर जो लेफ्ट हैंडेड बैटर है यहाँ पर रहमान, उनके लिए कदरे मुश्किल हो रहा है मुजम्मिल को खेलना। बड़ा अच्छा साफ इनका बॉलिंग एक्शन है। ऑफ स्पिनर्स के बारे में पिछले बरसों में ये था कि नीट बॉलिंग एक्शन वाले ऑफ स्पिनर्स पाकिस्तान को मैसर नहीं थे डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो आज हमने अरहम नवाब को देखा, मुजम्मिल को देख रहे हैं, दोनों दराज कद हैं और बहुत ही साफ सुथरा इनका बॉलिंग एक्शन, और जंप इनकी ज़्यादा है जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एयर मिलता है इनके गेंद को। दराज कद हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एयर दे दिया। फुल टॉस था, उसका पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, यहाँ पर सिर्फ एक ही रन हासिल किया। ख़राब गेंद था, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि बाउंड्री नहीं मिली। जी हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि कभी कभार कमेंटेटर्स कर्ज का सामना भी करना पड़ जाता है आपको। मुजम्मिल तवातर से अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन एक गेंद वो थोड़ा सा ज़्यादा ही एयर दे बैठे। फुल टॉस था, इसको लॉन्ग ऑन पर खेलकर 1 रन हासिल किया। मुजम्मिल अपना 5वां ओवर कर रहे हैं, अभी तक काफ़ी नफी तुली गेंदबाजी की है उन्होंने। फिर वाइड ऑफ द क्रीज गेंद की, लेकिन कवर के फील्डर को अबूर नहीं कर पाए। और जिस तरह फरहान हम बात कर रहे थे कि अबू बकर कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है कि उन्होंने जो है वो आखिर तक रहना है विकेट पे और बड़ी संभल के बारी करनी है। तो फिर फुल टॉस, इसको उठाकर खेला मिड विकेट पर, और यहाँ पर विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं मुजम्मिल। और दूसरी कामयाबी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम को। वो अबू बकर जिनकी हम तारीफ कर रहे थे कि वो आज बिल्कुल दिफाई अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस गेंद को मिड विकेट पर खेलने की गलती की और अपनी विकेट गंवा बैठे हैं अबू बकर यहाँ पर। कीमती विकेट हासिल की है यहाँ पर जीसीयू ने अबू बकर की सूरत में। पिछले मैचेस में काफ़ी रन्स किए हैं और ये ख़राब गेंद थी। 22 रन्स की इनिंग्स खेली अबू बकर डार ने,
25 गेंदों का सामना किया और 47 पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है डीपीएस फैसलाबाद को। जी हाँ, बिल्कुल। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम यकीनी तौर पर काफ़ी खुश होगी इस ब्रेक थ्रू से, क्योंकि जिस तरह हम बात करते आए हैं। या ये देखिए फुल टॉस था, ऐसे लगा कि जिनके हाथ से वो बॉल ठीक से रिलीज नहीं हुआ। बहुत ही ख़राब गेंद था, लेकिन अबू बकर ने जो शॉट खेली बिल्कुल शॉट मिड विकेट के फील्डर के हाथों में गई। बदकिस्मत रहे यहाँ पर अबू बकर, क्योंकि इतना अच्छा बॉल नहीं था जिस पर विकेट हासिल की जाती। लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, कभी अच्छी बॉल्स पर विकेट मिलती है और कभी ख़राब गेंदों पर भी आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं। बड़ा नुकसान है ये डीपीएस के लिए, और अब जो रन रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और जैसे ये 6 से तजावुज़ करेगा तो नफसियाती तौर पर भी डीपीएस के जो बल्लेबाज हैं उन पर दबाव आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह फरहान हमने तवातर से बात की है कि आपकी गेम अवेयरनेस का अंदाज़ा होता है बड़े मैचेस में, जब आप या तो हदफ की जानिब बढ़ रहे होते हैं या आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं, तब आपकी अप्रोच क्या होती है, उससे आपके गेम सेट का, आपकी अवेयरनेस का अंदाज़ा होता है। या आप देख सकते हैं जो है वो डग आउट है डीपीएस फैसलाबाद का, और अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है इनके डग आउट में। 47 पर इन्हें दूसरी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है, और इनके जो तजर्बाकार प्लेयर हैं अबू बकर वो आउट हुए हैं। तो यहाँ से जो इनके बैटर्स की अप्रोच है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए कि किस तरह वो इनिंग्स को लेके चलते हैं। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रही है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम। इनके फील्डर्स अपने बॉलर्स को बैक कर रहे हैं, और जो तमाम इनके जो फील्डर्स हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो यकीनी तौर पर डीपीएस फैसलाबाद पे होगा। 18वें ओवर के बाद उनका सिर्फ 47 स्कोर है, 2 विकेट्स का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, नाम जानना चाहेंगे हम इनका। एक स्लिप यहाँ पर हासिल है। और ये गेंद काफ़ी बाहर थी, वाइड का सिग्नल दिया अंपायर ने। साद ने अपने स्पेल का आगाज़ किया है और अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया है रहमान को। आगे गिरा हुआ फ्लाइटेड गेंद था, इसे थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाहते थे लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। और अब इन दोनों कदरे नए बल्लेबाजों पर काफ़ी दबाव होगा, और यही वो मौका है कि जब जीसीयू को चाहिए कि रिक्वायर्ड रन रेट को मज़ीद बढ़ाए। फिर की बार बैकफुट पर गए गेंद, लेकिन पड़ने के बाद ज़्यादा टर्न नहीं हुई। और जी हाँ फरहान, अगर हम बात करें स्पिन टू विन की, जिस तरह ये कहा जाता है कि आपके स्पिनर्स ही तवातर से आपको मैच जितवाते हैं, तो आज भी यही लग रहा है कि स्पिनर्स का जो रोल है इस मैच में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है। बट फिर अच्छा गेंद था। गेंद बिल्कुल जो अटैकिंग क्रिकेट है उसकी निशानी यही है कि आप स्टंप्स को अटैक करें और अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी करें। और यहाँ पे बिल्कुल साथ वही कर रहे हैं कि बिल्कुल 3 स्टंप्स में गेंद कर रहे हैं, एक स्लिप भी ली हुई है। और रहमान और अब्दुल्ला दोनों पर यहाँ पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है अपनी टीम को आगे लेके जाने के लिए। ओवर दी विकेट बॉलिंग करने का फैसला किया, रन लेना चाहते थे। और ये अब जो पैनिक है वो हमें दिखाई देगा डीपीएस में, क्योंकि ये 4 डॉट बॉल्स हुई हैं और बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। यहाँ पर साथ ने आमतौर पर लेग स्पिनर्स को सेटल होने में टाइम चाहिए होता है, लेकिन पहली गेंद के बाद से ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई दिए हैं। इस पर ड्राइव किया लेकिन कवर्स में फील्डर मौजूद हैं। Bowling over. कि ओवर की आखिरी गेंद को भी दिफाई अंदाज में खेला और कोई रन हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं बैटर। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि विकेट गिरने से जो बैटिंग टीम पर प्रेशर आता है, खासतौर पे जब आप हदफ चेस कर रहे हो, तो वो वाकई दिखाई दे रहा है यहाँ पर
डीपीएस फैसलाबाद के लिए कि उनके रन बनाने की शरह जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। और इसके साथ ही एक और ओवर का अख्ताम हुआ, बड़ा अच्छा ओवर 7 का, इसमें सिर्फ उन्होंने एक ही रन दिया। और यहाँ पर यकीनी तौर पर डीपीएस को जब इस हदफ के ताक़ुब के लिए जाना है तो उन्हें अब लगभग 5.78 या 5.80 का रिक्वायर्ड रन रेट दरकार है। तो दोनों बल्लेबाजों की अब यही कोशिश होनी चाहिए कि एक जो है वो ऑड बाउंड्री ज़रूर हासिल करें ओवर में, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश करें। शाबाश शाबाश मुजम्मिल। 19 ओवर में स्कोर है 48 रन्स, 2 विकेटें गंवाने के बाद। और जो दोनों स्पिनर्स हैं, बल्कि तीनों स्पिनर्स हैं, वो पूरी तरह से हावी हैं। मुजम्मिल अपना छठा ओवर करेंगे, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। मुजम्मिल, इशफाक, ओए इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। दफाई अंदाज से इसे खेला, स्लिप मौजूद है, ऑफ साइड पर पैक फील्ड है, रन्स बनाने के मौके कम है, गैप हासिल करना इतना आसान नहीं है। और 4 फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर भी तैनात हैं। और एक और डॉट बॉल, और जैसे जैसे नुमान डॉट बॉल्स बढ़ती जाएंगी, फैसलाबाद डीपीएस की मुश्किलात में भी इजाफा होता जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह हम बात कर रहे थे पैनिक बटन की, देखते हैं कि वो पैनिक बटन कब जाके प्रेस होता है डीपीएस फैसलाबाद की टीम के लिए, क्योंकि 20वें ओवर का खेल जो है यहाँ पर चल रहा है। लेकिन तो फिर दिफाई अंदाज से खेला, तेज रन लेने की कोशिश, और उसमें ये दोनों बल्लेबाज जो हैं वो कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप एंड रन का जो फार्मूला है मेरे ख्याल है वो अपनाना होगा कि आपको जो ऑड सिंगल जहाँ मिल रहा है आप वो लें, और ताकि जो फील्डिंग साइड है उन पर भी थोड़ा सा प्रेशर हो। हमने देखा है कि जैसे ही विकेट गिरी है, क्लोज इन फील्डर्स भी जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, तो इस वजह से जो अप्रोच है वो यही होनी चाहिए कि आप जो सिंगल्स हैं उनको मत रोकें, आप सिंगल डबल की जो अप्रोच है उसको जारी रखें। ये अच्छा गेंद था, हवा में खेला, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। 20वें ओवर में डीपीएस के 50 रन्स मुकम्मल हुए हैं और अभी एक तवील सफ़र तय करना है। 127 रन्स मज़ीद बनाने अगले 20 ओवर्स में। कतन इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पर नए बल्लेबाजों की मौजूदगी में। इस मरतबा थर्ड मैन पर खेला, 2 फील्डर गेंद के पीछे हैं। पहला रन तेज़ी से मुकम्मल किया और बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी हासिल कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर स्पिनर्स के रोल के हवाले से हम बात करते आए हैं। फरहान का किस तरह पहले इनिंग्स में भी हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स आए उन्होंने ना सिर्फ रन्स बनाने की रफ्तार को कम किया बल्कि यके बाद दीगरे कुछ विकेट्स भी हासिल की। दूसरी इनिंग्स में भी हम ये देख रहे हैं कि स्पिनर्स का बड़ा शानदार रोल रहा है। एक फुलर गेंद थी, इसको जो है वो सिर्फ कवर रीजन में ही खेल पाए, और इसके साथ ही 20 ओवर्स का अख्ताम। मजमूई स्कोर है 52 डीपीएस फैसलाबाद का 2 विकेट्स के नुकसान पर, और जो है वो 177 रन्स के हदफ के ताक़ुब में डीपीएस की टीम। यहाँ 20 ओवर्स मुकम्मल होने के बाद अब ये ड्रिंक्स ब्रेक है, पानी का वक्फा है। ये दोनों टीमें अपने ड्रेसिंग रूम की जानिब रवां दवा। तो 20 ओवर्स में महज 52 रन बनाए हैं डीपीएस ने, और 125 रन अब अगले 20 ओवर्स में बनाना होंगे। तो ये जो मतलूबा रन रेट है वो 6 से भी ज़ायद है, इतना आसान नहीं है डीपीएस के लिए। तो यहाँ कुछ मुख्तलिफ करना होगा। डीपीएस के डगआउट में भी ये बात हो रही होगी, और इस जो ये ड्रिंक ब्रेक है इसमें भी एक हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि अगले जो 20 ओवर्स हैं उन्हें किस तरह से खेलना है, कैसे रन्स करने हैं और किस तरह से इस टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि ये बड़ा फाइनल है, बड़ा मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो दोनों टीम्स इस मैच को जीतने की कोशिश में है, दोनों टीम्स चाहती हैं कि इस मैच में कामयाबी हासिल करें, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का पलड़ा भारी है।
मैच जिसमें मध्य मुकाबिल टीमें हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद। साद अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं। अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला है क्रीज पर। एक गेंद पीछे गिरा हुआ था, पुल करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी ताखीर हुई। मतलूबा रन रेट हर गुजरती हुई गेंद के साथ बढ़ता जा रहा है। लेग स्पिनर साथ फ्लाइट हिट गेंद था, इसे खेलना चाहते थे, एज हुआ, थर्ड मैन की जानिब ये गेंद गया। गेंद को फिर पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा ये बॉल नीचे रहा, कनेक्ट नहीं कर पाए। तो अनुमान वक्त गुजरने के साथ साथ अब गेंद थोड़ा सा नीचे भी रह रहा है जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों को खेलने में। जी हाँ बिल्कुल, और इस मुश्किल के साथ साथ अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो जैसे जैसे गेंदें बढ़ रही हैं रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ता जा रहा है और प्रेशर ज्यादा अमाउंट कर रहा है। उठाकर खेल दिया इसको लेग साइड की जानिब और फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन वो गेंद को तकते ही रह गए और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। एक वेलकम बाउंड्री यहां पर डीपीएस फैसलाबाद के लिए। ऐसी शॉट्स की ज़रूरत है यहाँ पर डीपीएस को। रिक्वायर्ड रन रेट आप देख सकते हैं 6.2, और अगर इस रन रेट को नीचे लाना है तो फिर इस तरह की शॉट्स तवातर से खेलना होगी डीपीएस के बल्लेबाजों को। साथ नदीम दाएं हाथ के लेग स्पिनर, इस मरतबा पीछे गिरा हुआ गेंद था, कट किया, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन लिया और दूसरे रन के लिए बड़ी तेजी से वापस आए। अपील जोरदार थी लेकिन दोनों बैट्समैन अपनी अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। तो ड्रिंक्स के बाद अब लग रहा है कि डीपीएस की जो टीम है उन्होंने अपना जो खेल है वो तब्दील किया है। जी हाँ बिल्कुल, रिक्वायर्ड रन रेट अभी 6.16 है और ख्याल है इतनी भी ये बाजी हाथ से निकली नहीं है डीपीएस फैसलाबाद के। मतलब फिर सीधे बल्ले के साथ डिलाइटफुल पुश यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 ही रन हासिल कर पाएंगे। 21 ओवर्स का इख्तिताम और डीपीएस फैसलाबाद की टीम 62 विकेट्स के नुकसान पर 177 रन के ताक़ुब में। Run chase is stuttering. In need of a partnership with DPS Faisalabad. Both of these batters have strung a little partnership. They need more. Good use of the feet. Couldn't find the gap. Another 117 needed in the 19 overs remaining. The run rate is not very daunting. The spinners has put a stranglehold on these two batters. Gone into the gap. We'll get a couple of runs. They need more of that. This partnership is crucial. You know, things have dried up
as this match carries on. We've got Parva Waheed on the boundary line lineup with an interview. Thank you, Shah Faisal. The match is in an interesting phase now and we are enjoying it. मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सरफराज बाजवा साहब जो कि बोर्ड मेंबर हैं CPCA के. It's a good match और it's a good initiative. Congratulations to you for the tournament. कैसा रहा ये टूर्नामेंट आपका? थैंक यू वेरी मच. बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट रहा और इसका इनिशिएटिव लिया गया कि हमने सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने जब इनिशिएटिव लिया अब्दुल्ला सुंबल साहब की सरबराही में और CEO खुरम न्याजी और हम कोई 5-6 मेंबर्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कोई 155 मैच लगे हैं और हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इसके PCB के और हायर एजुकेशन कमीशन के और जो जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली ये PTV वालों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया. और इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क था जिसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया और बहुत ज़्यादा इसमें जो टैलेंट्स उभर के सामने आया, नए नए बच्चे आए और जो कि रस्टी हो चुका था स्कूल का और कॉलेज का सिस्टम, उसको हमने रीहैब करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ कबाहतें आईं क्योंकि सिस्टम रस्टी हो चुका था. इस वजह से फिर हमने इस पे पूरी एफर्ट की और अब्दुल्ला सुंबल साहब की सरबराही में और PCB की गाइडेंस में हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया. 3100 प्लेयर्स और फिर उसमें से बेहतरीन को चुनना, ये कितना मुश्किल था फैसलाबाद में रहते हुए? क्या क्या हर्डल्स थे? या डेफिनेटली इट वाज सो डिफ़िकल्ट, लेकिन इतनी क्रिकेट करवा चुके थे कि उसमें से बहुत सारा टैलेंट रिफ़ाइन होकर खुद ब खुद ही ऊपर आ चुका था जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई. और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का, अगर मैं फैसलाबाद की बात करूँ, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, तो उनके प्रिंसिपल्स का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं हम सेंट्रल पंजाब वाले कि उन्होंने ओन किया, माना और उन्होंने हमारे साथ चलते रहे और हर चीज़ को. कुछ प्रॉब्लम्स आए, हर चीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं. जब इतनी देर बाद किसी सिस्टम को रीहैब करते हैं तो उसमें इश्यूज़ तो डेफिनेटली होते हैं और उन इश्यूज़ को हमने एमिकेबली मिल के, इट वाज अ ग्रेट टीम. जो टीम अब्दुल्ला सुंबल साहब के साथ थी, दैट इज़ द एक्सीलेंट टीम, जिनमें अपना आमर इलियास भट्ट साहब, अली भाई हैं, अरशद साहब हैं और उमर मीर साहब हैं. हमारे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले सारे मेंबर्स थे और उन्होंने बड़ी एनर्जी शो की जिसको हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यहाँ तक पहुँचने के हम बड़ा एक प्लेयर फील कर रहे हैं कि हम क्रिकेट को इस मुकाम तक लेके आए. ठीक है. बॉयज आर प्लेइंग वेल बाय द वे. वेयर डू यू सी देम? व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम तो 11 प्लेयरों की बनेगी, वो तो ऐसे ही है, लेकिन हमने क्रिकेट को मैक्सिमाइज़ किया, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स में लेके आए और जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ही टैलेंट रिफाइन होकर बाहर आएगा और ऑटोमेटिकली इसमें से अच्छे बच्चे जो पाकिस्तान खेलेंगे, जो पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त का बायस बनेंगे, वो सारा इसका ये बाई प्रोडक्ट है. इस सिस्टम की बाई प्रोडक्ट है पाकिस्तान की टीम बनना. लेकिन सबसे पहला इनिशिएटिव था कि हम मैक्सिमम बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आएँ जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब रहे. बेहतरीन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन. बाय द वे, ये गेम सिर्फ ऑन नहीं है बल्कि गेम ज़बरदस्त भी है. ओवर टू यू शाह फैसल. Thank you very much, Parva Waheed. She was with Sarfaraz Bajwa. What a wonderful effort they've done in initiating this tournament for these young college lads. I would say it again that it's not about winning, losing, it's about the purpose, the pathway that they have provided to these youngsters to come and showcase their talent at this big stage at Gaddafi Stadium, being televised on PTV Sports. Doesn't get any bigger than this at this level for these young boys. At the moment, DPS Faisalabad a little behind where they should have been. That is courtesy to some wonderful bowling by the spinners of GCU. They've kept things very tight. Although 2 wickets, but not many runs given away. More spin in action. Saad into his third over. Right arm wrist spin. We've seen plenty of wrist spin today. Earlier on, Momin bowled a good spell. That was left arm wrist spin. Really, we were just sitting outside just a while ago. It's very humid outside. You could see the perspiration on the batter's forehead. So it is humid. It will be taxing for these youngsters in these conditions. I wonder if many of them has ever played under lights. Take this into the equation as well. Yeah, under lights and also with pink ball and white shirt. That's a different level. We see a lot of cricket happening in Lahore under lights, this club cricket, the corporate cricket going on.
But with pink ball, white shirts, it's a little different. I won't say difficult, but different, yes. There's evidence of that because that ball was knocked towards the right of long on and he couldn't pick it. Fielder from mid-wicket had to come and pick it up. Couple of runs for DPS Faisalabad. They won't mind because they need some impetus in this innings. They would like to reduce this target to less than 100 first with 2 wickets in hand. If they can build a partnership, they are in with a chance. Another fumble by the wicketkeeper. I think he's fluffed his lines once again. We'll have to wait for the umpire's signal. Surprisingly, hasn't gone for the third umpire, I believe. He's just walking towards the wickets, the umpire. It's going to get very interesting. He's given it not out. Yes, probably the third umpire not available in this game. That was a costly miss. Not the first time that wicketkeeper has missed a chance. Probably that awkward bounce probably doing him a little. Whoa, that was touch and go. That was touch and go. Should have gone to third umpire if... Oh, that was mighty close. But it was regulation in the first place because it did beat the outside edge. It means that the wicketkeeper saw the ball all the way into his gloves. This is second chance that he's missed and caught behind, and now the stumping. Once again, that fielder at long on seems to have misjudged the pace of the ball. In the end, was able to stop the ball. 23 gone, 70 for 2. Two chances have gone begging, both by the wicketkeeper. And you, Shah Faisal, alongside me, he's been the wicketkeeper all his life, played first-class cricket as a wicketkeeper. Where is he going wrong? Is it too hard hands? Is he jumping up pretty early? What is happening? Ali, the key to keeping wickets against spin, when you're standing close to the stump, up to the stumps, you rise with the ball. And with these bowlers having slightly slower pace at this level, you can easily have the tendency to get up too soon. And it's always difficult to go down once you're up. And if your head is moving up and down, you lose sight of the ball. Hard hands as well, that was evident. But I think he's misjudging the flight of the ball and he's getting up too soon. Regulation, because the last one, like I said, was straightforward because it beat the outside edge. So he saw it from the bowler's hand all the way into his gloves. There was no deflection either. So he would be disappointed with that. Any youngsters? Just rise with the ball. That's the key. In case you were wondering, those batters have got the helmets back. It means the fast bowler is being introduced now. Bakar has bowled 4 overs for 17 runs. Tidy job he has done. But that wicket column, it's still empty. GCU captain Muzammil would be hoping to get a breakthrough here because this partnership is slightly building up for DPS Faisalabad. Rahman has taken 43 deliveries for 17. Abdullah has taken just 16 deliveries for his 17. I think that is the way forward. Abdullah is the key from here on. Probably the Faisalabad batters, they wouldn't mind a little bit of pace on the ball because spinners weren't offering them any. They had to make their own pace, but now with the quicks on, see if they can use it to their advantage. Got a third man, deep cover, sweeper on the offside, 2 of them. Beautifully clipped, straight to the fielder though. That was a leg stump half volley. He should have done better with it, but already good signs, found the middle of the bat. Yeah, pace on probably is easier for the batters. We've seen that in the first inning. We're witnessing it here also. The fast bowlers, the ball is coming nicely onto the bat. And that is what we saw in the series against Australia here at Gaddafi Stadium. The batting got easier. The ball comes nicely to the bat. There's a little bit of dew there also. Probably the spin is the course, but here Muzammil showing confidence on Bakar. Good delivery, good length as well, cramping him for space. Hey, you're right, in the drinks break we saw the super soppers were out, the ropes were out. There is a little bit of dew, which means that the ball will slide onto the bat better. And pace on the ball,
these batters could propel, because they've spent good amount of time in the middle already. That's another advantage for DPS Faisalabad, because two batters in the middle, they have spent time. They can capitalize here. This could be an important phase of this big final. Bit of a change in the field at the last moment. Captain deciding to send that fielder at fine leg back on the boundary line. Maybe we can see some short stuff coming here. Fuller in length, angling away from the left-hander. This is what they need to guard against the DPS batters now. Not many dots. It's okay if you can't find a boundary, but look to hit the gap on every ball and rotate the strike. There's only 5 fielders in the ring. 3 on the offside, 2 on the onside. Plenty of gaps to knock the ball into. This one is angled away to third man. That's better. If you keep on taking those singles, that won't let that run rate go beyond your reach, because at the moment it's just 105 more runs to win. They've got 16 overs after this. It's tough, but it's definitely doable at the moment for DPS Faisalabad. There's a fielder at deep. Long on now. Nicely played. On the up. That's where the pace came handy. Hit through the line. That's another sign that the ball is sliding on very nicely onto the bat. That's the thing that the DPS coach Salman would be telling his charges inside the changing room, that this pitch is a good one to bat on now. Keep your nerves, take the game deep, and put pressure on the opposition. Good call, a direct hit. He was gone for all money. He had all the 3 stumps to aim at, almost 20 yards out. Couldn't find the timber. 24 gone, 74 for 2. That's DPS Faisalabad's dugout. Lots of team members there. The manager also there. Salman, you were talking about the coach. Such a great event, such a huge opportunity for these two teams. Earlier we were talking about at this level when we used to play, we never had such facilities, such good coaches. Salman, one of them. Saud Khan, different another coach. Akhtar Mumtaz Bhatt. I think he's probably one of the best coaches at this level in school or college cricket. I've never played under him, but I've heard a lot about him. I've played against him. I think he was probably one of the most charismatic and enigmatic coaches of that time when we used to play college cricket. Yeah, of course, Saud Khan also in that list. Now Salman also doing a wonderful job with DPS Faisalabad. That's what you want to see at this early age. These youngsters being coached by the professionals, by the good coaches. That's your way forward. Now the fumble by the wicketkeeper. We'll have to wait and see if he got an edge on it. Looked like a googly out of the rough. Have to wait for the umpire's signal. Just buys. Beat everyone. That bounce once again out of that rough. I think it was a googly. You've seen some good skills from these wrist spinners today. Absolutely. I think from both sides we have seen some quality spin. Another edge. Whoa, I wonder why there's no slip available. If you're looking to ball at that line and length, you're looking to make him drive, maybe you can take a chance with a slip, because a wicket would come very handy at the moment. He's into his 4th over sod, so he's found his groove. His first 2 overs were relatively expensive,
And now that fielder has come into the slip. But at the same time, he's changed his angle as well, coming right arm over the wicket. This is good. Wrist spinner is really showing his repertoire. Yeah, that one kept straight. So he's got some variations available with him, Saad. Changed his angle again, came round the wicket. Thinking is Saad, making sure he keeps the batter guessing. 18 runs off his 3.5 overs. I think 11 runs came off his first 2 overs, so he's made a good comeback. It can happen with wrist spinners. They need time, especially at this young level. They need time to find their groove. Last 2 overs has been much better there from Saad. Oops. Remember early when night cricket first started here at Gaddafi Stadium, we used to have this problem. A lot of bugs used to fly around. And this has been cured very nicely over the years. We don't see it very often now. It's another good one to finish off the over. 15 overs remaining, 101 needed with 8 wickets in hand, DPS Faisalabad. This is beautiful. This is beautiful. Just the way this cricket is being organized, wonderful. I'm so glad, I'm so happy. Even at the toss I mentioned this, that it gives me great pleasure just to witness this match, this college championship being televised, being played at Gaddafi Stadium, 10 on 10 for Central Punjab. It's really heartening. You're absolutely right. All the credit to all the organizers, the administration of Central Punjab Cricket Association. They really deserve a big pat on their backs for bringing about this fantastic event. Exactly 100 needed when this over started. So the run rate is not a problem. Yeah, but I'm a little concerned about this run chase. Are they leaving it too much for the last few overs? That's the concern. But then one of them has to play through, and a few blinder of innings. That is what is needed at the moment for DPS. Because at the moment they're just happy taking singles and twos, but it won't be long, Shah Faisal, that this run rate just goes up, and that's where the trouble comes. One of the big art of batting, one of the biggest aspect is at the higher level to pace your innings. I know these are youngsters, very talented, very skillful. But they would learn as their careers progress how to pace your innings according to the runs required. See if they can do it right when it's required. Angled face of the bat, another single. I don't see that urgency at the moment. This is where the experience of the coaches comes. Did you see any message come across in the last couple of overs? I didn't notice anything come from the dugout to the 2 batters. Yeah, maybe they're happy at the moment. That must be the plan from Salman, the coach of DPS Faisalabad. Maybe they have a few, because we don't know many of the youngsters that will come to bat. Maybe they've got a big hitters lined up. He took the charge, walked into the bowler and smashed him down the ground for 4. That's the urgency we were talking about. And this is what DPS Faisalabad needed. A boundary would really help to calm the nerves. Much needed, just to break those shackles. He stepped down, flat batted it. Have a look at this. Just smacked it. Flat batted it for 4. Probably the need of the hour. A few boundaries for DPS is what is needed. Still, Shah Faisal, the question remains, you got the spinners available. Why do you keep on bowling your paces? It's easier. The ball is coming nicely onto the bat. There's not much of the movement. There's no pace really. No variations.
And your spinners are doing a fine job. You've got 3 spinners. We noticed this even in the first innings. The batters have struggled to force the pace against the spin, who obviously don't offer any pace. So it was harder against spin. I mean, Hassan is bowling really good lines, but that pace is helping the batters. This one goes underneath the bat. Belated shout there, but nothing doing, says the umpire. Now, well, look at that. A floater. Just yorked himself. 83 for 2 is DPS at the moment in pursuit of 177 runs. And our fellow colleague, we've kept her quite busy. Farwa Waheed is there at the boundary line with an interview. थैंक यू सो मच अली। मैच बड़े ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है और विद एवरी बॉल हमें भी लग रहा है कि शायद डीपीएस जो है वो थोड़ा सा हौसला और बढ़ाए और शायद ये टारगेट पूरा कर ले। बात करने के लिए इस वक्त अली अहमद साहब मौजूद हैं जो कि बोर्ड मेंबर हैं CPCA कसूर। बहुत ही अच्छी एफर्ट, कंग्रेचुलेशंस, बड़ा ही अच्छा आपने इनेकाद किया इस टूर्नामेंट का। कैसा रहा ये अब तक? जी बिल्कुल, बच्चे सोच भी नहीं सकते थे कि अपने हीरोज़ जहाँ खेलते हैं वहाँ पे वो लाइव टेलीकास्ट लाइट्स में, तो ये सेंट्रल पंजाब की बहुत बड़ी एफर्ट है। हमारे जो चेयरमैन है अब्दुल्ला खान सुंबल, हमारे CEO खुर्रम न्याजी साहब और स्पेशली आमर लियास भट्ट जो हमारे मेंबर हैं, और फैसलाबाद के हैं सरफराज बाजवा साहब, सियालकोट के हैं उमर मीर साहब, और थोड़ा सा हिस्सा मैंने कसूर में भी डाला है, मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा था। तो बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट हुआ है। तो इसके अलावा भी हमने कॉलेज क्रिकेट के अलावा स्कूल क्रिकेट कराई, फिर हमने वनडे उनके कराए, फिर कम्युनिटी पे कराई, फिर अब इसके बाद आफ्टर रमज़ान हम फिर कम्युनिटी की जो 4 आई हैं टीमें फाइनल में, उनके आपस में कम्युनिटी क्रिकेट कराना है। हम एक्चुअली हमारा मकसद है बच्चों को इंगेज करना, मैक्सिमम क्रिकेट इनके लिए, ताकि क्रिकेट खेलेंगे तो ये आएंगे। जो कि बिल्कुल डेड हो चुकी थी, क्लब क्रिकेट हमने करवाई 2 डे 1 डे, ताकि इनको मैच खेलने का टेम्परामेंट पता चले कैसे खेलते हैं। 2 दिन का 1 डे T20 हो रहा है, टेम्परामेंट लूज़ कर गए थे। तो अब एक दफ़ा फिर दोबारा हमने क्रिकेट को रिवाइव कराया। ठीक है, कसूर में जब आपने टैलेंट को ढूंढा और कोशिश की कि हम अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है वो बाहर लेकर आएँ, तो कितनी मुश्किलात का सामना रहा भी या ईजी था? नहीं, मुश्किलात तो ऐसा नहीं होती, टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। ये अभी हमारे वो कसूर से ही खेले हैं जो फ़हीम अशरफ, ही बिलोंग टू कसूर एक्चुअली। तो उस वक़्त मैं क्रिकेट बोर्ड में एज ए कोऑर्डिनेटर जावेद मियांदाद साहब के साथ कर रहा था। तो हमने टीम सेलेक्ट की थी, तो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कसूर चैम्पियन हुई थी आफ्टर 40 ईयर्स के में। अगर टैलेंट देखें तो बहुत है टैलेंट, सिर्फ उनको सर्च करना है, जो कि ये अब सेंट्रल पंजाब कर रहा है। जो हमने ये जो एक होता था ट्रायल सिस्टम वो ख़त्म कर दिया है, ताकि जो परफॉर्म करे वो आए, ताकि कोई ये ना कहे जी सिफारशी आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। अब जो परफॉर्म करे वो खेले। तो इसमें हमारे CEO, हमारे चेयरमैन, मेंबरान की बहुत एफर्ट है इसमें। आने वाले वक्त में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइन अप हैं और किन किन चीज़ों पे आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि काम किया जा सकता है, ताकि मज़ीद जो जहाँ पर लैक कर रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म की जाएँ, ओवरकम की जाए? अभी ये फर्स्ट टाइम ये बोर्ड बना है, तो मेरा ख़्याल से सिर्फ पंजाब ही है जिसने इतने टूर्नामेंट करा दिए। अदरवाइज ये 6 रीजन बोर्ड है, 6 रीजन है, 6 बोर्ड है। जितना लाहौर, ये सेंट्रल पंजाब ने जितने टूर्नामेंट और जितनी एफर्ट किया, 2 हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन रहे हैं, एक फैसलाबाद में, एक सियालकोट में, ताकि वहाँ जैसे लाहौर एकेडमी है इसी तरह ही 2 ये सेंटर बन रहे हैं। तो एफ़र्ट तो बहुत, हमारे चेयरमैन साहब भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और खुर्रम न्याजी साहब सब बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, डे एंड नाइट इसमें लगे हुए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और एफर्ट दिख भी रही है और गेम जो है अभी भी जारी है। जिसके खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल कहते हैं कि वीरान रहते हैं। Thank you very much. Farwa Waheed was on the boundary line up. It's 94 for 2, and while she was taking an interview, a catch gone down, a boundary been hit. So a lot of things have happened in that last over. And another thing a good thing is that has happened is that Mr. Ali Sarfaraz, the higher education department, he's the secretary there, beg your pardon for that. He's joined us in the commentary box. We've got a few questions to ask him. A very warm welcome to the commentary box, sir.
Thank you very much. It's a pleasure to be here. It's such a great initiative, I must say. I've been saying that from the beginning, that giving these young guns an opportunity to come here, play at Gaddafi Stadium, you must be a very happy man. No, absolutely. It's brilliant. It's fantastic that we have these young teams playing against each other. And I think today, whosoever wins, cricket wins. And the Higher Education Department Punjab now plans to set up a permanent college league, which you normally see in US, for example. You have the US Football League, a similar kind of league we are planning in Punjab that will be given a permanent institutional structure so that it remains and it's not an event for a year or 2 years, rather it continues on a permanent basis. And that would actually help in producing a lot of good players for Pakistan cricket, inshallah. Absolutely. I think education, the academics are as important as the sports. So it's a very good initiative just to give them the platform. And I'm sure that this match being televised would help this cause a lot, as we see the next ball being hit towards that long on, 1 run, and they're coming back for the second. I just want to ask you a very good question for the youngsters, that how much academics is important. Are you giving it some weightage if they have to play sports, that they have to have some sort of academics with that to carry on sports? You know, sports play an extremely important role. Academics are important, but I think sports are equally important. And if we are, any person who's a good sportsman is likely to succeed in life and make a mark. I think if you're entirely a bookworm, that probably plays to your disadvantage. Being a player actually gives you those essential characters and those behaviors and attitudes that help you progress in life. Absolutely. And oh, there's a chance of a run out. Umpire, we'll have to wait his decision. He says not out again. Fielding is probably that has let GCU down today in this match. There's been a couple of chances gone down, and they just now require 76 runs of 74 runs. This DPS Faisalabad side, Ali Sarfraz Saab is still with us. Another question that I want to ask is there any added advantage that given to these youngsters for playing in academics? They're given some extra marks, or they're asked to attend the classes also, some sort of that thing? Interesting question. You know, you can't substitute one for the other. For example, if somebody is doing brilliant in academics, we don't give them a benefit of being a sports player. And vice versa, you know, if somebody is a good sportsman or a sportswoman, does not necessarily translate into good academic scores on the other side. I think there needs to be a balance between both, and both play a very important role, and both have to be given equal weightage in terms of their overall personality development, which is the key. Absolutely. I remember way back in the days when I got admission in government college, it was solely on the basis of sports, but we were made to go and attend the classes, and the attendance was definitely given the weightage. So that is my question, that academics should go alongside sports. No, you're right. If there are structures in place that somebody really excels, for example, if there are pathways which are created within these colleges for these players, and the good players can then go into Pakistan level teams, and then they go into our team that represents Pakistan in international teams, I'm sure the pathways could be found where they are given a benefit in terms of their ability as a sports person or a sportswoman or a sportsman. I'm sure we can find these ways. I think we are taking baby steps. The first important step would be to institutionalize college cricket, which we haven't done, and build a brand of it. So, you know, students are associated, bring in the cities also to associate with those college teams, like we see a lot in the US, or you know, which then really paves the way to produce good talent and bring out good talent. Absolutely. And the situation at the match is 76 runs required, 72 deliveries to go as he cuts the next one. Has it gone through? Yes, it has. This will run away. The fielder is doing the chase, but of no use. This has run away for 4 runs. A very handy boundary at the start of this over. So this match is definitely now tilting towards DPS Faisalabad. And what an amazing effort this has been from these two sides. It's never easy at this age, coming here at Gaddafi Stadium, under lights, all eyes on you, being televised, nerves, everything that you have to cop up with, and they have done it wonderfully well at the moment. As we continue talking to Ali Sarfraz Saab, he's still here with us.
So what's next for these young guys? If they score well here, if they do well at this point, is there any mechanics that they go and represent Pakistan under 19s or Pakistan at some level? I think what we have enabled through this platform, and higher education department has been the sponsor of the event for everything from their kits to the prizes. And the Central Punjab Cricket Association has been a very excellent coordinating body with the PCB. And I think this gives a pool of talent to PCB to look at. And I'm quite certain that some of them will emerge and will probably make their way to under 19. And you know, both teams are fantastic. I'm slightly biased towards DPS Faisalabad because I'm one of the alumni of DPS Faisalabad. And I'm sorry to say that I'm in alumni of Government College, so my affiliation is a little bit with Government College, and I've been the fortunate part that won the championship back in 2002. I was the part of that cricket team there. But yes, as I said earlier, it's the purpose. It's bigger than who wins and who loses. It's about the opportunity given to these young boys. It's about organizing this tournament, and you've done a fantastic job. A big thank you from my side, because this is big. No, thank you very much. It has been a very long and interesting journey. You know, we had to engage all the boards in it. We had to engage the universities in it. But I think now that we have done it once and we see how it works out, we should be able now to give it a permanent structure where permanent government funding is available for these two tournaments every year, year on year, and then it will start to take shape, inshallah. You were mentioning about talent being picked from this side. We already see one example from Faisalabad. Arham Nawab is represented Pakistan under 19. He's here playing for DPS Faisalabad. It gives you another motivation to carry on with this. No, absolutely. So he could be a beacon that could be emulated by other players, and especially those who are playing with them and playing in this kind of environment, playing at Gaddafi Stadium. I think that gives them a lot of motivation to move forward and to bring out the best of their game and to present the best. And I'm sure that some of these players have the potential to be the world class. Absolutely. And with this, we'll say thank you very much to Sir Ali Sarfraz. He had bright ideas. Anything you want to add on in the last? No, thank you very much. And I would like to thank PCB. I would like to thank PTV. I would like to thank the Central Punjab Cricket Association, the officials, especially officials of Higher Education Department, who have actually worked a lot behind the scenes. It is a pyramid that you're seeing right now, but a lot of work has gone underneath. So I would like to thank all of them and congratulate them for organizing such a exciting and excellent tournament. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Thank you very much, Mr. Ali Sarfraz, and I'm dead sure that cricket is in safe hands as long as you stay here and organize such events, because it really gives me pleasure to see all these youngsters at this age given this opportunity to come and showcase their talent at this level. It's remarkable. Thank you very much, sir. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Back to live cricket. 110 at the moment is DPS Faisalabad. They're in pursuit of 177 runs. We're in the 30th over of this inning. Abdullah has played a very solid knock, very timely, very good inning. He's moved to 34 of just 64 deliveries. Alongside Abdullah, who's had a very good side to 41 runs, 33 deliveries. It's in there. Should be taken. Should be taken. And is taken. So that's the wicket they were looking for a long time. And since the spinner has come in, they've got a wicket. I've been saying it before that it is the spinners that's going to do the damage. And now his most timely wicket been taken by Ghulam. An important wicket at an important time for GCU. Have a look at that. Just wanted to go big over mid-wicket. Top edged it. The lower hand probably. The grip losing. And an easy catch taken, and timely catch, and the disappointment on the non-striker and batter. You could clearly see that, because that was really a poor shot by Abdur Rahman Jr. Scored 34 runs of 65 deliveries, was caught and bowled by Ghulam Hafiz. Can this be the turning point for GCU? 111 for 3.
डीपीएस फैसलाबाद के कप्तान अरहम नवाब अब इस मुश्किल सूरत हाल में अपनी टीम को जीत की जानिब गामजन करने की कोशिश करेंगे। और अब से कुछ देर पहले अंग्रेज़ी में कमेंट्री कर रहे थे अली यूनुस, हम जहद शख्सियत के मालिक अली, और अब उर्दू में साथ देंगे हमारा। जी अली, बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो अब आप लोगों की ज़्यादती है, इंग्लिश में उर्दू में आप लोग बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, तो हम अब आपकी खातिर उर्दू में भी डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। 112 रन ज़रूर बना लिए। मुश्किलात जीसीयू के लिए ज़्यादा हैं ऑलरेडी, क्योंकि 3 विकेट सिर्फ गंवाए हैं डीपीएस फैसलाबाद ने, ज़्यादा रन्स भी नहीं हैं, लेकिन थोड़ा चूक गए यहाँ पे जीसीयू के कैप्टन जब फास्ट बॉलर्स को बीच में लेके आए थे दोनों एंड से, क्योंकि तब एक ऐसा मौका था जब विकेट्स चाहिए थे, तो स्पिनर्स अच्छे बॉल कर रहे थे। देखिए गुलाम नबी के इसे बड़ा हिट खेल दिया है, ये बॉल चला जाएगा 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, ऐसे ही स्ट्रोक्स की जरूरत है डीपीएस फैसलाबाद को। जी हाँ, ये मैच का पहला छक्का है जो अब्दुल्ला के बैट से बरामद हुआ है। आगे गिरा हुआ गेंद था, ये देखिए फ्लैटेड बॉल था और इसका पूरा फ़ायदा उठाया, बिल्कुल सीधा स्क्रीन के पास इस गेंद को फेंका। और ऐसे ही शॉट्स की ज़रूरत है अगर डीपीएस फैसलाबाद की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करना चाहती है। देखिए चेहरे टेंस हो गए हैं, परेशानी तो दोनों साइडों पे है, लेकिन जिस तरीके से अब्दुल्ला खेल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा मुश्किलात होंगी। बहुत ही शानदार इनिंग खेली है, मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं, नीट खेलते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अभी जैसे आपने देखा कि हिट भी मारी है, तो ऐसे प्लेयर की ज़रूरत थी डीपीएस फैसलाबाद को। 30 ओवर के इख्तिताम पे 119 पर 3 खिलाड़ी आउट डीपीएस फैसलाबाद के। जी हाँ, रावियंस इस वक्त मैदान में है और हिम्मत नहीं हारते रावियंस, इनके बारे में यही कहा जाता है और जिद्दोजहद करते रहते हैं, आखिरी गेंद तक लड़ते हैं। और अली यूनुस भी रावियन है, इस 158 साल कदीम दरसगाह से फारिगुल तहसील हैं अली यूनुस। और अली, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो अभी भी हर साल एक रावियंस का, ओल्ड रावियंस का एक मैच मुनक्किद करवाया जाता है इन्हीं मार्च अप्रैल के दिनों में, तो आपने भी उन मैचेस में शिरकत की है? जी अब ओवल के ग्राउंड पे ये मैचेस मुनक्किद किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से तो मैं नहीं जा सका हूँ क्योंकि कोविड की वजह से कुछ मैचेस हुए भी नहीं, बट बिल्कुल जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं अपने पुराने टीममेट्स, जिस जब हम ट्रॉफी जीते थे वो टीम हमारी बहुत स्ट्रांग थी, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। इसको खेल दिया हवा में, फील्डर मौजूद हैं, क्या ये कैच कर पाएंगे? बॉलर नो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। आपको विकेट चाहिए तो एक एक कैच पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कैच बहुत आसान था, शायद अगर मिड विकेट पे खड़े हुए फील्डर अटेम्प्ट करते, क्योंकि गलत साइड पे भाग रहे थे जहांगीर, मिड विकेट के फील्डर के लिए बेहतर चांस था। फरहान जी हाँ, उनके जानिब ये शॉट था और वो गे भी हैं, लेकिन जहांगीर ने कॉल की और बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब वो गेंद के नीचे आ गए थे तो वो रुक गए। शायद मिड विकेट के फील्डर से ये तवक्को कर रहे थे वो कैच लें, लेकिन कॉल जहांगीर की थी तो इन्हें ये कैच करना चाहिए था। और मजमूई तौर पर देखें तो डीपीएस ने ज़्यादा बेहतर फील्डिंग की है इस मैच में अगर हम जीसीयू से उसका तकाबुल करते हैं। इस दौरान 1 रन हासिल किया अब्दुल्ला ने और दूसरे रन के लिए वापस पलटे। जी हाँ, 50 रन अपने मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही शानदार इनिंग रही है अब्दुल्ला की जानिब से, एक ऐसे मौके पे जब टीम को बहुत ज़रूरत थी, उस टाइम पे मिडल में आके अपनी टीम को सहारा दिया और बिल्कुल ये दाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरीके से उनके टीममेट्स, उनके कॉलेज मेंबर्स उनको दाद दे रहे हैं, ये बहुत शानदार है। और आई एम श्योर जब ये यहाँ से वापस जाएंगे फैसलाबाद में तो एक डिफरेंट नाम होगा इनका, क्योंकि ऐसे मौके पे जब बड़े मैच में आप परफॉर्म करते हैं तो आपका नाम अपने एरिया में, अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा बनता है। और यही अपॉर्चुनिटी है इन लड़कों के लिए कि बड़े मौके पे मैच टेलीवाइज हो रहा है, परफॉर्म करें यहाँ पे, अपना नाम बनाएं। और यही अब्दुल्ला शाहिद ने यहाँ पे किया और बहुत ही अच्छे रेट से रन किए, सिर्फ 39 बॉलों पे किए। और शायद यही डिफरेंस रहेगा फरहान इन दोनों टीमों के बारे में। जी हाँ, पहली इनिंग्स में जो हमने हाफ सेंचुरी देखी मुबशर की तरफ से वो काफ़ी सुस्त थी, लेकिन अब्दुल्ला ने बहुत ही तेज़ी के साथ
ये रन्स बनाए हैं और इस दौरान कप्तान अरब ने 1 रन हासिल किया। और ये मैच अली रातों रात इन खिलाड़ियों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। जैसा आपने कहा कि जब ये अपने इलाके फैसलाबाद में जाएंगे, जीसीयू के लड़के जब लाहौर में अपने गली में मोहल्ले में जाएंगे तो लोग इन्हें देखेंगे कि यही वो खिलाड़ी हैं जो कल शाम कजाफी स्टेडियम में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे थे। यकीन कीजिए जब हम लोग ट्रॉफी जीते थे काशिफ महमूद की कप्तानी में, तब इतना टेलीवाइज इतना सोशल मीडिया तो नहीं होता था, बट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारी बहुत वाह हो गई थी क्योंकि 13 साल के बाद हम लोग वो टूर्नामेंट जीते थे। एक बहुत ज़रूरत थी गवर्नमेंट कॉलेज की स्पोर्ट्स फैकल्टी को वो टूर्नामेंट जीतने की। सऊद खान हमारे कोच थे, तब भी हैं आज भी हैं। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट था वो हमारे लिए। काशिफ महमूद हमारे कप्तान थे, अदनान रज़ा लेफ्ट हैंड बैटर, काफ़ी क्रिकेट खेले, वो भी हमारे साथ टीम में मौजूद थे। एक बहुत ही अच्छा पंच ऑफ ग्रुप हमारा तैयार हुआ था तब। और यहाँ पे जीसीयू को ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि तब हम 163 रन हमने डिफेंड किए थे। यहाँ पे 177 रन डिफेंड करने हैं तो काफ़ी मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी मामला एक जैसा है। लेकिन तब हमारी टीम का जज्बा शायद बहुत डिफरेंट था, इतना प्रेशर नहीं था। यहाँ पे कजाफी स्टेडियम का प्रेशर डिफरेंट है, टेलीवाइज होने का प्रेशर डिफरेंट है। तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला अभी भी जारी है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जीसीयू वालों की खासियत रहती है कि ये जान नहीं छोड़ते हैं, ये गिव अप नहीं करते हैं एंड तक, और यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हमने कमेंट्री बॉक्स में भी देखा है कि अक्सर आप गिव अप नहीं करते। हमारे साथी शाह फैसल मौजूद नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर बताते। और जीसीयू की जिस टीम का आपने जिक्र किया काशिफ महमूद का, आजकल सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की उस अंडर 15 टीम की उन्होंने क़यादत की जिसमें अजहर अली भी थे, विकेट कीपर, बैटर थे काशिफ, अदनान रज़ा भी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए खेले। और यकीनन ये सितारे भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस दौरान पीछे गिरा हुआ गेंद था, इसको पुल किया, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, और एक और बाउंड्री हासिल हुई है यहाँ पर डीपीएस फैसलाबाद को। ये खराब बॉलिंग है। अगर आप हाफ वे में बॉल फेंकेंगे तो बैटर उसको कहीं भी खेल सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि मिड विकेट के ऊपर से खेलेंगे और 4 रन हासिल किए। इजी शॉट है, गैप मौजूद था यहाँ पे बैटर के लिए, लेकिन ये तो एक तोहफा शायद जिसे कहते हैं आप पता कीजिए। आज इनकी सालगिरह तो नहीं है, बहुत तोहफे मिल रहे हैं इन्हें। हाफ लेंथ बॉल कहीं भी खेल सकते हैं अब्दुल्ला, बहुत शानदार इनिंग रही। ये बेहतर बॉलिंग है। और जब अब्दुल्ला बैटिंग कर रहे होते हैं तो ये देखिए कि इनकी आंखों में जो चमक है वो बताती है, इनके रोशन मुस्तकबिल के बारे में बताती है। ये देखिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। ये गेंद फिर पीछे गिरा हुआ था, ख़राब बॉलिंग यहाँ पर 7 की, और एक और बाउंड्री हासिल करने की कोशिश में थे लेकिन 2 रन ही यहाँ पर बना पाएंगे। इस लम्हात में इस तरह की बॉलिंग जीसीयू को कतन भी गवारा नहीं हो सकती। जी हाँ बिल्कुल। और एक और चीज़, एक और इंसान जो बहुत बिजी रहे वो हैं फरवा वहीद। एक बार फिर वो तैयार हैं बाउंड्री लाइन पे एक इंटरव्यू के साथ। जी अली, मैं वैसे ही बिज़ी हूँ जैसे आप कमेंट्री बॉक्स में बिज़ी हैं। मेरे साथ इस वक्त जो हैं वो आमिर इलियास भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि बोर्ड मेंबर हैं सीपीसी लाहौर के। बहुत शुक्रिया यू ज्वाइन मी इन। कैसा लग रहा है खेल, और ग्रास रूट लेवल की जब हम बात करते हैं वहाँ से क्रिकेट को ऊपर लेके आने की कितनी मुश्किलात रहती हैं? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैं अब्दुल्ला सुंबल साहब और अपने सीईओ खुर्रम नियाज़ी साहब और तमाम मेंबर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने दिन रात मेहनत करके ये आज जो क्रिकेट यहाँ पे हो रही है, ये मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि इतनी मेहनत हमने की है कि ये फ्लड लाइट्स में फर्स्ट मैच हो रहा है यहाँ पे। इसमें रमीज़ राजा साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे हम खेलें और बच्चे उभर के बाहर आएँ। इसमें हमने विंटर लीग में ऑलमोस्ट पंजाब में कोई 1500 मैच करवाए हैं। उसके बाद 200 मैच हमने विंटर लीग में करवा, इसमें समर लीग में करवा, इसमें क्लब स्कूल क्रिकेट में करवाया। उसके बाद ये कम्युनिटी क्रिकेट हुई है, उसमें कोई 200 मैच हो गए हैं। जितनी पंजाब ने इस वक्त क्रिकेट करवाई पाकिस्तान में कहीं क्रिकेट नहीं हुई। आपने 48 वेन्यूज़ देखे हैं, किस वेन्यू पे आपको लगा कि बड़ा मुश्किल रहा है लड़कों के लिए खेलना? ऑलमोस्ट हर जगह
प्लेयर जो होता है ना वो किसी वेन्यू पे भी खेल सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि प्लेयर के कि मैं इस वेन्यू पे नहीं अच्छा खेल सका, ये विकेट नहीं सही थी, आउटफील्ड ठीक नहीं थी, ये सब बहाने होते हैं। जिस दिन पर परफॉर्मेंस अच्छी जिसने करनी होती है वो हर जगह परफॉर्मेंस अच्छी करता है। यहाँ से आगे निकलेंगे तो शायद अंडर 19 पाकिस्तान के लिए भी खेलने का जो है वो ख्वाब देखा जा सकता है। आप लोग कितना काम कर रहे हैं इस चीज़ पर? देखें जी, इसका जितनी भी क्रिकेट हुई इसका सारा डाटा फीड हुआ है और सब बच्चों की हमारे पास परफॉर्मेंस हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इसमें से बड़े बच्चे उभर के आगे आएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा टैलेंट हम तलाश करके इनको देंगे। ठीक है, वो लोग जो चाहते थे कि वो भी हिस्सा होते इस टूर्नामेंट का, नहीं है, उनके लिए कोई पैगाम अगली बार के लिए? देखें, अब प्लेयर्स तो 11 ही खेलने होते हैं, बच्चों को डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला वो अपनी क्लब्स पे मेहनत करें। आगे इतनी क्रिकेट सेंट्रल पंजाब ने देनी है कि उन्हें फुर्सत नहीं होगी और सारा उनका बेसिस डाटा बनेगा। उसकी परफॉर्मेंस पे सारे बच्चे इंशाल्लाह आगे खेलेंगे और सबको मौका दिया जाएगा। ये बेहतरीन इनिशिएटिव है, बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद रहने का। अली, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया फरवा वहीद। आमिर इलियास भट्ट साहब के साथ मौजूद थी बाउंड्री लाइन पे। बहुत ही शानदार मैच। अब ऐसा लगता है फरहान जैसे जो पलड़ा है वो डीपीएस फैसलाबाद का थोड़ा भारी हो गया है, क्योंकि सिर्फ अब 46 रन की ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी ओवर्स, 8 ओवर्स का लगभग खेल वो बाकी है और अब्दुल्ला बहुत शानदार खेल रहे हैं, 59 रन पर मौजूद हैं, 40 बॉलों का उन्होंने सामना किया है। तो अगर अब्दुल्ला आउट नहीं होते हैं तो यहाँ पे बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी जीसीयू के लिए। और जीसीयू का हम जिक्र कर रहे थे फरहान, तो एक और जीसीयू के ही हमारे मेंबर हैं जो हमारे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, काफ़ी क्रिकेट बहुत शानदार खेले हैं। 16 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 119 में 100 प्लस उनके फर्स्ट क्लास गेम्स हैं। उस्मान अरशद जो कि अब काम कर रहे हैं एज अ क्रिएटर इन पीसीबी और ये बहुत अच्छा साइन है। ये अब आप पीसीबी एक यंग लॉट को आगे लेके आ रही हैं, ये एक बहुत शानदार साइन है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, बहुत शानदार उनके आइडियाज़ हैं, एक नई जनरेशन के इंसान हैं और ऐसे ही लोगों की पीसीबी को ज़रूरत है। पढ़े लिखे लोग ऐसे मौक़ों ऐसी पोजीशंस पे आएंगे जहाँ पे रियली मैटर करता है और ये पिच क्रिएशन का बहुत चर्चा रहा है पिछले दिनों। और जब आप ऐसे लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को सामने लेके आएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की चीज़ें इंप्रूव होंगी। और यहाँ पे मैं दाद डेफिनेटली दूंगा पीसीबी को, सेंट्रल पंजाब को कि उन्होंने उस्मान अरशद जैसे लोगों को इन्वॉल्व किया है ऐसी जगहों पे। इस मतलब आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया, लेकिन फील्डर्स वहाँ पर मौजूद, सिर्फ 2 ही रन हासिल होंगे। और अली, अच्छा क्रिकेटर होना और पढ़ा लिखा होना, ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलता है। बहुत गिनती के ऐसे क्रिकेटर्स हमारे पास हैं और उनमें उस्मान अरशद भी एक हैं और वो बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इन विकटों की देखभाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन विकटों की तैयारी में मसरूफ़ अमल हैं। और उन्हें आगा जाहिद का साथ हासिल है जो बहुत ही तजर्बेकार क्यूरेटर हैं। और उस्मान के वालिद अरशद परवेज़ जो हैं वो आगा जाहिद के साथ हबीब बैंक के लिए ओपन किया करते थे और बड़ी कामयाब जोड़ी थी हबीब बैंक की, आगा जाहिद और अरशद परवेज़ की। यहाँ एक और मिसफील्ड यहाँ में देखने को मिली है जीसीयू की फील्डिंग की जानिब से। डिसअपॉइंटिंग रही है फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप किए, स्टंप्स मिस किए, विकेट कीपर ने 2 चांसेस गवा दिए। तो जब ऐसे बड़े मैच के अंदर आप कैचेस और अपने चांसेस नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 42 रन दूर हैं, सिर्फ 45 बॉलों का सामना करना है और अगर अब्दुल्ला की विकेट हासिल नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीसीयू के लिए। ये अब्दुल्ला की विकेट इस वक्त सबसे कीमती है जीसीयू के लिए अगर इस मैच में वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और ये शायद यॉर्कर करने की कोशिश की, गेंद हाथ से स्लिप हुआ, यकीनन अंपायर इसको वाइड बॉल करार देंगे और नो बॉल, हाइट की नो बॉल करार दी है अंपायर कैसर वहीद ने। ये भी बहुत तजर्बाकार अंपायर हैं, पाकिस्तान कप में ये हमारे साथ थे। बिल्कुल ये आसान फैसला था अंपायर कैसर वहीद के लिए। मुश्किलात बढ़ गई हैं जीसीयू के। देखिए आप चेहरे के तासुरात, मुजम्मिल जो कैप्टन है जीसीयू के वो क्लियरली बता सकते हैं कि मुश्किलात तो बढ़ गई हैं, लेकिन शायद यहाँ पे थोड़े टैक्टिकली वीक नज़र आए हमें मुजम्मिल। एक ऐसे टाइम पे जब स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, चीज़ें बहुत कंट्रोल में थी और वहाँ पे जब आप फास्ट बॉलर्स को लेके आए तो उन्होंने काफ़ी रन्स लीक कर दिए और अब्दुल्ला ने उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया जब फास्ट बॉलर्स का बॉल अच्छे तरीके से बल्ले पे आ रहा था और ये
कजाफी स्टेडियम की पिच अगर आप उसकी हिस्ट्री भी देखें तो सेकंड टाइम जो बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आता है, बहुत शानदार तरीके से चेज़ होता है यहाँ पे। 350 रन चेज़ किए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो शायद यहाँ पे थोड़ी चूक हो गई टैक्टिकली जीसीयू के कैप्टन से। और मुजम्मिल खुद भी स्पिनर हैं, तो ये और ज़्यादा हैरान कुन था कि उन्होंने स्पिनर्स की बजाय फास्ट बॉलर के साथ अटैक करने का फ़ैसला किया। और वही वो लम्हा था, आपने दुरुस्त कहा, कि जिसमें ये मैच का जो मोमेंटम है वो बदला। इस मरतबा सीधे बैट के साथ खेला, आसानी से 1 रन हासिल किया। और यहाँ बड़े शॉट्स की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। डीपीएस को अब्दुल्ला का क्रीज़ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये टारगेट बड़ी आसानी से ये टीम हासिल कर सकती है। पहले हम जिक्र कर रहे थे, अली सरफराज साहब मौजूद थे, सुंबुल साहब मौजूद थे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, तो उनका भी यही मानना था कि पर्पस ज़्यादा बड़ा है रिजल्ट से, और पर्पस यही है कि कॉलेज क्रिकेट को उठाया जाए। ये बहुत शानदार एक वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि अगर आप, जैसे आपने कहा कि ये कॉम्बिनेशन जो तालीम का और स्पोर्ट्स का अगर इकट्ठा आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है, एक प्लेयर मिल जाता है, जैसे अरम की एग्जांपल है हमारे सामने, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलेज में पढ़ते भी हैं, और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसे प्रोडक्ट आप तैयार करना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ही ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। और माजी में अली हमें कॉलेज क्रिकेट से बहुत से सुपरस्टार्स मिले हैं, ख़ास तौर पर लाहौर की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, एमएओ कॉलेज की बात करते हैं, इस्लामिया कॉलेज, सिविल लाइंस की बात करते हैं, तो बहुत से स्टार्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इन कॉलेजेस ने पैदा किए हैं। लेकिन दरमियान में आके ये सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। स्कूल क्रिकेट कम हो चुकी थी, कॉलेज क्रिकेट बिल्कुल बंद थी, यूनिवर्सिटी क्रिकेट नहीं होती थी। तो अब ये दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आज का मैच जीत और हार के तनाजुर से बड़ा है कि ये जो सिलसिला था कॉलेज क्रिकेट का वो बहाल हुआ, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कॉलेज क्रिकेट से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बड़े बड़े नाम जो हैं वो मैसर आएंगे। जी ये बहुत ज़रूरी है फरहान, क्योंकि आपको तालीम तो हासिल ज़रूरी करनी है। सबसे पहला पॉइंट आपका मेरे ख्याल में तालीम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तालीम, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था अली सरफराज साहब से कि एकेडमिक्स का कितना रोल है, क्योंकि मेरे अगर आप पर्सनली पूछें तो नंबर्स ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर हम क्लासेस नहीं अटेंड करते थे, रिगार्डलेस हम क्रिकेट खेलते थे, हम क्रिकेट की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में आए थे, लेकिन अगर हम क्लासेस में नहीं जाते थे तो हमारा नाम स्ट्रक हो जाता था, हमें दोबारा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो ऐसा एक बिल्कुल एक आपका होना चाहिए प्लान, एक जिसमें आपके एकेडमिक्स साथ साथ चलते रहें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट के बाद भी जब आप क्रिकेटर, आप देखते हैं एक पढ़े लिखे क्रिकेटर जब क्रिकेट छोड़ता है तो उसके एक डिफरेंट फील्ड में आ जाते हैं, डिफरेंट उनकी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाती है। वाइट बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर की जानिब से। 141 रन पर पहुँच गए हैं, ये स्कोर 140 रादर है, 37 रन की ज़रूरत है 41 बॉलों पे। 101 अब्दुल्ला ने बहुत शानदार इनिंग खेली है, जितनी भी तारीफ की जाए इस लेवल पे वो कम है। बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत डिसिप्लिन नज़र आए, जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने बड़ी हिट भी मारी। तो आज का जो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच अगर मेरे से आप पूछा जाए तो वो अब्दुल्ला रहेंगे। अभी तक के लिहाज से अब्दुल्ला ही हैं, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ पर हर लम्हा सूरत हाल बदलती है। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव करना चाहते थे, बिल्कुल बैट के करीब से गुजरा, लेकिन यहाँ खुशकिस्मत रहे अरहम। और अरहम का जिस तरह से उनका बैटिंग स्टांस है, ये देखिए, इस गेंद को ज़ोरदार शॉट लगाना चाहते थे और आखिरी लम्हात में अपने शॉट को उन्होंने चेंज किया। ये गेंद थोड़ा सा पीछे गिरा हुआ था, इसको लॉन्ग ऑन की जानिब धकेल दिया कप्तान अरहम नवाब ने। और अली जो कॉलेज क्रिकेट है वो एक कड़ी टूट गई थी कि जो अच्छे क्रिकेटर्स थे, जब उन्हें कॉलेज में क्रिकेट खेलने की सहूलियत नहीं मिलती थी तो वो फिर मजबूरन तालीम को खैर बात कह के अपने खेल को वो परस्यू करते थे। लेकिन जब उन्हें कॉलेज में अच्छी क्रिकेट खेलने को मिलेगी तो अपनी तालीम भी जारी रखेंगे और अपने खेल को भी निखारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था, और बहुत अरसे से कॉलेज क्रिकेट की बहाली की बात हो रही थी, जो सेंट्रल पंजाब ने इसको बहाल किया। इसमें पीसीबी के जो चेयरमैन हैं रमीज़ हसन राजा, वो भी ओल्ड रावियन हैं, तो यकीनन उनकी भी इसमें काविशें हैं, और ये तमाम लोगों की इन काविशों की वजह से आज हम
कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये बड़ा फाइनल देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और ना सिर्फ अगर वो पीसीबी चेयरमैन नहीं भी थे तब भी उनका ये मौक़िफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ में सुना है कि कॉलेज क्रिकेट को प्रमोट होना चाहिए और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। कजाफी स्टेडियम, अंडर लाइट्स, फाइनल, बहुत सारी दुनिया आपको देख रही हो, यहाँ पे आप टैलेंट शो करें अपना एज अ बैटर। मिस फील्ड हो गई है यहाँ पे, एक और रन। और जो बॉडी लैंग्वेज जब आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लड़कों की, ये बहुत मायूस कुन है, क्योंकि अब अभी भी 35 रन मौजूद हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है बॉलों में और रन्स में, लेकिन अगर आप लड़ना ही छोड़ देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। 34 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 144 पर 3 डीपीएस फैसलाबाद। Into the final bend of this grand finale. 33 runs needed of 36 deliveries. A wicket is definitely the need of the hour for GCU. Especially that of Abdullah would really put the cat amongst the pigeons as far as the DPS is concerned. For that last bit of action, I've got Noman Chaudhary with me alongside in the commentary box. Good evening, Nomi. Thank you, Faisal. We are here at the business end of this game. Last 36 deliveries. And that's the beauty of this contest. I mean, we have seen ups and downs throughout the game. It was dominated by Government College University at the start of first innings, but then came the comeback from the DPS Faisalabad. They restricted Government College to 176, but at the start, some slow batting performances from DPS had the Government College University back in the game, but now it's evenly poised. The presence of skipper Arham in the middle, who's very experienced at this level, would really calm the nerves. And Abdullah has played an absolute gem of a knock, probably the innings of the match. 64, he was very fluent. He peaked at the right time, so to speak. He picked his bowlers in the middle, the wrist spinners. He really charged them for 2-3 overs and brought that run rate down. That means that they're well in control at less than run a ball. That's a beautiful stroke. Magnificent lofted drive. Well. I thought it had enough legs on it, but the fielder was back paddling. He misjudged it as well. And that is the opportunity that GCU could really look upon and regret the fact that they let Abdullah off the hook. Yes, exactly. The chance was created. The fielder at deep long on. He could have taken that one, but he just slipped through his hands. So it's a lucky six, a lucky break this for the DPS Faisalabad. That's a good comeback from Bakkar, this time driven out to the mid-wicket fielder. It's only a single added to the total. So last 2 overs, 2 balls of this over to come. And talking about Abdullah, he has played a spectacular innings today. We were mentioning early on in the first innings as well that we're looking to see one spectacular bowling performance and one sensational batting performance. And we have seen both of these in this ongoing encounter. Bat hit the ground. Clearly the noise was for that. The away going angle from Arham. It's a little bit tail away from the left-hander as well. You could see the desperation. GCU, they definitely need wickets here. But they can only blame themselves
chance that was spilled earlier in the over would really have put pressure on the youngsters, because coming in at this stage, on this big stage, there will be plenty of nerves. They definitely want a new batter in the middle. The outside half of the bat. He's getting that ball to tail away, Bakar. 150 has been brought up. Yes, exactly. 151 for 3 at the end of 35 overs, chasing a target of 177. DPS Faisalabad. Faisal, we were mentioning early on about the game awareness. We have seen in this game at the particular occasions, I mean, especially from the DPS side, they have negotiated the new ball very nicely, and they have left, you know, a lot of runs for the middle orders, you know, for the middle order to combat that, and for reason that they have Abdullah at the middle order stage. So that is something we were lacking in, I mean, in the college cricket or in the school cricket throughout the last few years, the game awareness of the youngsters. And this time around, we have seen some spectacular batting performances and the bowling performances, and the players living up to their reputation and living up to the mark. Remember, Nawan, these are the two best teams of the entire competition, and they've come through a long season. They've been playing no less than 9 games, if I'm not mistaken, as we watch another single that's been knocked down the ground. So by that time, they've spent company with coaches for that length of time. Definitely that knowledge would have been transferred into those youngsters, and you could clearly see that they're at their best. Well, थैंक यू सो मच गाइस। खेल का सिलसिला जो है वो जारी है, और इसी पर बात करने के लिए नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस है। कैसे देख रहे हैं आप इस गेम को, क्योंकि अख्ताम के करीब है और अभी तक का जो सफ़र है उसके बारे में बताइएगा। मेरे ख्याल से जो पोजीशन है वो तो फैसलाबाद के फेवर में है। इस वक्त लग रहा है कि फैसलाबाद की टीम जीत जाएगी। जो अच्छी चीज़ है, जो कॉलेज क्रिकेट का रिवाइवल है, और मैं सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कॉलेज क्रिकेट को रिवाइव किया। और आज ये बच्चे हमेशा याद रखें, क्योंकि हम खुद क्रिकेट जब खेलते थे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे खेलना जो है एक बड़ी ख्वाहिश होती थी। तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे, इस कॉलेज के लेवल पे, अगर आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच खेल रहे हैं और अंडर द लाइट्स, एक बड़ी ओकेजन है इन बच्चों के लिए, और यकीनन इस एक्सपोजर का फ़ायदा इनको होगा और आगे जाके अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। इस तरह के टूर्नामेंट्स की कितनी अशद ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे उस वक्त कॉलेज क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, हम सब उसी से खेल कर आए। फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली, और अनफॉर्चुनेटली बीच में कोई इतना एक्सपोजर नहीं था काफ़ी अरसे तक। और अब ये हमने दोबारा जो है शुरू किया है। स्कूल क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी हुई, कॉलेज क्रिकेट अब शुरू हो गई। इसके अलावा इंटर स्कूल का जो है, स्कूल क्रिकेट के 2 डे क्रिकेट हो रही है, जो कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो बहुत सारे टैलेंट यहाँ से उनको एक्सपोजर मिलेगा और सामने आएंगे। 18 डिस्ट्रिक्ट थे, कितना मुश्किल था ये इसको मैनेज करना? जी, बड़ा मुश्किल है, और हेड्स ऑफ टू सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज हम उसके फाइनल की तरफ हैं, और अंडर द लाइट्स एक फाइनल बेहतरीन। और कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल चल भी रहा है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर मौजूद रहने का। ओवर टू यू गाइस। Thank you, Farwa. Once again, a boundary added to the total by Arham Nawab, which means that only 18 to go from upcoming 24 deliveries of this competition, the grand final of Central Punjab College Championship. GCU will rue the fact that they missed chances. The wicketkeeper dropped a catch, missed a stumping, and then that catch on the boundary a couple of overs ago that really proved the last nail in the coffin. Arham is an experienced man, like I said, a very good man to have in this situation. So he's guiding the chase, but Abdullah, like I said, has been the batter of the day for me, or the night, I should say. His innings has been flawless. His stroke play has been very, very good.
And at this stage, if you want something very extraordinary to happen for Government College University, they need to take wickets. The only way they're going to win this game by taking wickets. Have a look at that. The supporters have come in. So good to see the people supporting the college championships. Some young supporters in as well. They must be seeing their future heroes in the game. All the families of players, their colleagues, some young supporters of the game are here as well to support this thrilling encounter between two of the best side of Central Punjab College Championship. Talk about the youngsters. Namana was here earlier when Australia was touring, and the crowds that came here, huge proportion of that crowd was the young generation, probably seeing international cricket for the first time. I'll come back to it after this ball. As looking for that Yorker. Fine leg is up in the ring. The chase is on, but all in vain as this just trickles into the fence, and the victory target gets closer and closer. Another 4 to the target. 163, just 14 needed. Yes, exactly. Poor bowling this. Sliding down the leg side. Just a flick of the wrist. The fine leg was inside the circle. Have a look at that. Once again, it's a poor delivery. You should be bowling according to the line, especially when you are to defend 18 in the last 4 overs. A costly miss this from the Government College University side. But they are well within the touching distance now. And DPS Faisalabad, only 14 needed from the 23 balls to come. Got the Yorker wrong. Now poor choice of delivery once again. Short delivery. And although it was a top edge, but with fine leg up in the ring, it was almost a free hit for Abdullah. Poor running, I have to say, because they've only got 1. But I think the GCU, they have realized the fact that it's very difficult for them to come back from here. Yes, exactly. And she's enjoying the game as well. That's Janedzia, Director Domestic Cricket, enjoying a night out with the family. It's gorgeous out there under lights. An absolute fantastic scene at the home of cricket in Pakistan. It's been a very enjoyable day of cricket. Seen plenty of good talent on show. The wrist spin was excellent. Pace bowling pretty skillful. As Arham got onto his tiptoes and got another single to the total. You know, I was talking about the crowds that turned up to see Pakistan, Australia, talking about the amount of youngsters that were there, which is a very encouraging sign. That new generation that miss cricket and their heroes at home, that trend is continuing into every level. Like you can see today as well, a large proportion of the crowd is of a lot of youngsters, and that's very good. Once they watch and enjoy cricket at the ground, I think there's nothing better than that, to experience a game of cricket. Yes, exactly. Faisal, this is what, like, if you talk about the generation which were deprived of cricket at home, and you know, coming to see the stars, this is what inspires the young generation to play cricket. I mean, we have seen Pakistan being deprived of international cricket for the course of around 10 years, and that is where the whole generation was deprived of cricket. But talking about the current generation, they come to the ground to see their superstars, Shaheen Shah Afridi, Rizwan and Babar. Seeing their superstars at their home soil, it just, you know, inspires them to become cricketers themselves. So this is the main advantage of having international cricket back home. Absolutely. Talking about these youngsters on show today, definitely they've made everyone proud. Like we mentioned earlier, win or lose, it doesn't really matter for a neutral here, and it means a lot for the colleges, for the institutes. But as a general cricket supporter, this is really heartening to see. And for these youngsters, this experience of playing at this field, at the home of cricket, it will remain with them for the rest of their lives, where their heroes play. This is bad bowling, consistently bad bowling throughout the over. I think the shoulders have dropped, Numan. The realization of the fact that this is too far for them, a bridge to go too far. Look at this.
the slow delivery came out all wrong, way down the leg side. Yes, exactly, and that's quite understandable. You know, defending 10 of 19 is it's not quite possible, but still it's a game of cricket, and you can expect anything. Once again, a good comeback this from him, a dot ball to finish the over. So we have 10 required from the last 3 overs, and well and truly in the driving seat, the DPS Faisalabad. There's a lot of activity downstairs. I think our colleagues are getting ready for the post-match presentation. With only 10 needed. There will be big prize money. Just to remind our viewers, the winners will take a check of $500,000 Pak rupees, and the runners-up will get 0.3 million Pak rupees, and the individual prizes also for the best batters, best bowlers of the competition. So plenty to look forward to after this game finishes. Yes, exactly, and I'm expecting a lot of individual awards. And as you can see, a lot of the backroom staff. You can see Kashif on the screen. He was the floor manager, and a lot of families who came up to support this game. So good to see. So we were mentioning before, the youngsters, the families, and the people from every age group, they came to watch these upcoming stars of Pakistan cricket feature in a very high voltage contest. Very calm and very collected is Abdullah. He really played nicely. The run chase is, the contest effectively is over, as it may seem from the body language of GCU Lahore. Like I said, it's been a long season. They must have come through a lot. And by this time, I think there's one fight too much for the GCU boys. Just a matter of time. Writing is pretty much on the wall. Yes, exactly. I mean, 9 needed of 16 deliveries should be a walk in the park task for the divisional public school. But you got to appreciate the way these guys, you know, they came back in the match. There was a time when the required run rate jumped over 6.5. And at that time, I was talking to Farhan earlier on that the panic button was pressed. But the way these guys responded is just remarkable. So again, with the straight bat out to the fielder at cover region. We're mentioning how this will become a lifelong memory for these players who are featuring in a game at the home of Pakistan cricket, the Qazafi Stadium, and with the match being broadcasted all over the world. In the air, shot of the fielder at mid-wicket, a direct hit, but I think he made it. Throw didn't have a lot of power. So 8 needed from 14 deliveries. There have been one memorable chase from the DPS Faisalabad. The way they were knocked out earlier on the start of the innings by some good bowling, some attacking bowling from Ali and Bakr. But the way these guys have came back in the game, it's so impressive. Toss driven back to the bowler. Good fielding this. But once again, with every dot ball, the Government College University, they might think that there still be a glimmer of hope for them. Well, if they can bring a couple of new batters in the middle, probably yes. But talking about the run chase, and the most impressive thing about Abdullah is the way he's paced his innings. Once again charges down the wicket but couldn't beat the infield. Yeah, Abdullah paced his innings very nicely as the over has come to an end now. 8 needed of 2. One of the art of white ball batting is how to pace your innings. You may have all the skill in the world, but when you have a run chase situation, you have a target on the board,
you really have to know when to press the accelerator, when is the good time to keep rotating the strike, and when is the time to start looking for boundaries. And I think the point you mentioned, when the run rate went above 7.5 at one stage, that's the time I think Abdullah decided that he can't let it go any higher, and then he took the charge, couple of big overs, he brought it down, and to his credit then he changed his gears again and played circumspect, made sure he didn't give it away, and that is very, very impressive from Abdullah. Yes, exactly, and that is where we talk about the game awareness. You know when to accelerate, you know when to block, and you know when to save your wicket, and this is something which makes you a bigger player. We were mentioning about the crowds earlier. Have a look at the people from all age groups. They are here to support the game. They are here to support these young cricketers. It's only 8 needed. Slight misunderstanding between both of these batters, but you just cannot afford some sloppy fielding at this hour of the play. And also, if we cast our mind back to the first innings of the match, I think the ground fielding of DPS Faisalabad was incredible. They were very, very good. They covered the ground quickly, no fumbles whatsoever. They cut down the angles inside the ring. They were throwing themselves around, and they definitely saved about 15 to 20 runs with their ground fielding. I know they dropped a couple of chances, but the ground fielding was flawless. Well, yet another dot ball. 7 needed of 9 deliveries now. So the game's just coming back to the balance a bit. A wicket here might just set the tone for both of the side. Comes down the track. This is what we've been mentioning over and over. A wicket here might just set the tone for Government College University, and they have just got a wicket. So this is a very timely breakthrough for Government College University. And is there a twist in the tail? Well, the target was close enough to tempt Abdullah to go for the glory shot. He danced down the wicket, was beaten in the flight. Is it too little too late? Probably it is, but Abdullah has played a fantastic knock. He'll get a standing ovation for his wonderful innings. 76 of just 66 deliveries. He's put the DPS Faisalabad on the brink. 170 for 4 with just 7 needed. Yes, exactly. It's an inning of a lifetime, playing on the occasion where it mattered the most. The final of Central Punjab College Championship, and Abdullah has lived up to expectations of his side. But I'm telling you what, Faisal, the game's not over yet. There's still a twist in the tail, because there's a new batter at the wicket. And now both of these batters, they need to understand what's the need of the hour. They need to play out this delivery or the next delivery, when to attack, when to take singles. So the game's still in the balance. 7 of 8 now. In a normal circumstances, you will think that the batting side has got it. But these are kids. They're just starting out their careers. And this is a big stage. Funnier things have happened in cricket. And this is what makes me think that the GCU could really think to themselves that why did they throw the towel a little bit early? Like last 10-15 minutes, they were really lackluster. But like we say, these are youngsters. Probably this experience will tell them a lot, not to give up till the last minute. And like Noman said, it's not over yet. Yes, exactly. And have a look at that. Just a flighted delivery, tempted Abdullah to go for a big hit. And he just fell into the trap. This is where your game awareness comes into play. And if you talk about, have a look at that, some prayers going on in the middle as well. They want a wicket. They want a win here. And they would want it at any cost. He must be a relieved man, because he dropped a catch and let a stumping go earlier on as well. This time he was neat with the gloves. He needed to be. But he was all in prayers. You could see what it means for these youngsters, and to their families, to their institutions, to their coaches. It's no kids' play. It's the final, the big final. 6 fielders in the ring, trying to stop that single. Hit him straight onto the pads. There's a big shout. Did he get a bat onto it? He almost slipped as well. It's all happening. This game isn't over yet. Yes, exactly.
And that was a very close call, not given by the umpire though. Have a look at that. This just pitched in line. Might have been just missing the leg stump. And Faisal, the interesting thing about this game is I just need to reconfirm from the statistician that is there any LBW given in the game up till now? Knocked it straight down the ground. Long on is coming around. This may not be a bad result, but they're coming back for second. Good awareness by Arham, which means that he will take the strike for the final over. And 5 will be required. This is going right down to the wire. And yeah, talking about that LBW, Noman, we did get an LBW in the first innings. And look at this. This running from Arham. He touches down very, very quickly back. That is good awareness from the skipper. So 5 needed. Where's your money? Well, I would want Government College University to put up a fight. Have a look at that. Some prayers going on. And he must be thinking that this is a time of some acceptance. He might just get a wicket from here and there, a run out, some good catch, some spectacular stumping. We might expect anything in the last over. 5 needed from 6 deliveries to conclude this game. And we have seen some sensational cricket from both sides throughout this 80-over competition. And now it has down to the last 6 deliveries with only 5 needed. Well, I call that it's a good thing for DPS, for Arham to be on strike. But what best can happen for GCU if they can dismiss him on the very first delivery and have 2 newcomers for the last 5 deliveries of the grand final. That would really set the panic buttons. But for that, they have to dismiss Arham. And he's been very, very calm under pressure up till now. Yes, exactly. Arham has played some sensational knocks beforehand as well. He has featured for Pakistan under-19 side as well. Talking about the field, we have still the captain and the bowler. They are setting the field. We have a short cover in place, the fielder at point. There is a fielder at deep third man. And now we're bringing the cover inside the fence. So we have a deep mid-wicket in play. Long on is in play as well. So if you talk about 5 needed of 6 balls, I would fancy a super over. We have to check again if that's part of the playing conditions, the super over. But I can see 6 fielders in the ring, inside the 30-yard ring, 4 on the offside. They're looking to stop the singles. His first delivery goes up and over. There's no sweeper in that direction. And he finds the boundary. That means the scores are level. Skipper Arham coming good at the right time for DPS. It's a great start. And now I think the nerves can calm down. Yes, exactly. And that's how you break the shackles. It's a brilliant shot from Arham under pressure. And, you know, just wondering that what did the captain, have a look at that. Once again, a drive out to cover. No fielder was placed. And just before this delivery, the fielder from deep extra cover was brought inside the circle. So they didn't have an idea that they are bringing their death upon themselves. So it's 1 needed only from the 5 deliveries. That's the moment. The non-striker had backed up quite a long way, and the single has been completed. And DPS Faisalabad are the champions, courtesy a very cool, calm, and collected effort by the skipper, who saw the run chase through. And look at those celebrations. Great scenes here at the Gaddafi Stadium as DPS has charged onto the field, and they richly deserve their moment of glory here at the home of Pakistan cricket. Yes, exactly. And they can celebrate. They have waited this for a very long time. A sensational performance from DPS Faisalabad. They remained dominant throughout the competition. They remained dominant throughout the match. There were some nerves early on, but the brilliant performances, some all-round performances from DPS Faisalabad. They have outplayed the home side, Government College University Lahore, at their home venue. The home of Pakistan cricket, Gaddafi Stadium, Lahore. It has been one sensational night for both of these sides. They have put up a brilliant fight. And the best thing about this game, that it was played in the right spirit of the game. Both teams shaking hands. And have a look at that. That was a winning runs. A dab out to point. A single from the captain, Aram Nawab. And have a look at the DPS boys charging onto the field. A sensational performance. And they deserve all this credit for being superb throughout the competition and throughout the night of the final. The music is thumping as we see great scenes here.
the GCU boys can be very, very proud of their effort. They've really put up a great show. It was a thoroughly enjoyable game of cricket, which went right down to the wire. They put up great fight, GCU, but this moment belongs to DPS Faisalabad, as they are the winners, they are the champions. I think there will be some talking done by the coaches of GCU, but after a long, hard season, I think, like I said, they should be very, very proud of their efforts. So should be their coaches and all the parents in all the institutions. And these are the glittering trophies that will be handed out. And DPS Faisalabad, they are the winners. How would they contain their excitement? You never know, because this is probably their first big achievement in mainstream cricket, which was televised all over the world. And they really have their moment of thanks, a moment of celebration, and I think it will carry on. At the moment, they're having a little reflection on it. Look at the batting chart. This has been dominated by Abdullah Shahid, 76. He had a good partnership in the middle with Abdur Rahman Jr., but then Arham Nawab's contribution towards the end was very, very important, because he kept the nerves and kept his nerves and guided the run chase in the final over and hit the winning runs as well. Yes, exactly. And talking about the bowling from Government College University, there has been some brilliant performances. Remember Jahangir, he was one of the pick of the bowlers throughout the tournament, conceded 29 runs, picked up 2 wickets. Ghulam Hafiz picked up a wicket as well. Muzammil Ishfaq, he bowled brilliantly, picked up a wicket, conceding 30 runs. But Rana Ali Raza, he only conceded 6 runs from 3 overs. Just wonder why he didn't bowl after that. But overall, a dominating performance from both of these sides. But at the end of the day, it was DPS Faisalabad winning the game in the last over, chasing a target of 176. You can only rue the facts that the chances that they missed, that could have made it even tighter. Yes, exactly. And the highlights of the innings, have a look at that. The chance went down in the very first over, but Abu Bakr, he made a full use of that chance. He was asked to bat according to the situation. And once again, both of these openers, both of these batters, they've made a very solid start. I mean, once again, the first wicket went down, it went through the gate, and then Muzammil, he bowled a little juicy full tosses, but this time Abu Bakr, he held out to mid-wicket. But the innings of the night was played by Abdullah. We were mentioning that you have to pace your innings according to the situation. Have a look at that. It's the best example of playing according to the situation, utilizing the gaps when available. And Abdullah and Arham and all these players, they just stepped up to the task. That's the middle phase where Abdullah accelerated. He lost Abdur Rahman in the process, but then came that partnership. The Abdullah stroke play was fantastic. Straight down the ground. And when it was short, he was quick to rock back. He had some luck along the way. And he had the opportunity. He wasn't shy to clear the fence. Neat clip. The crowds really enjoyed a wonderful game of cricket. And when Abdullah left, and the prayers were answered, but it proved too little, too late in the end, as skipper Arham was there to see through for his team very calmly. Tell by this winning run how calm he was in the end. That's the moment of celebration, richly deserved one. It's been an incredible night of cricket. We had an absolute pleasure bringing it to you. That's the match summary. 61 Mubashir Muzammil. He was there for 98 deliveries. Bowling, Muhammad Naseem took 2 for 29. Wickets were shared around 176 for 9. At the time felt slightly light, and that's how it proved. 4 deliveries to go when the DPS did reach the target. Abdullah Shahid 76. Abdur Rahman 34 and Arham Nawab 24 were the main contributors. Missed chances and plenty of extras were slightly regrettable for the GCU bowling and fielding side. And in the end, DPS won by 6 wickets. Beautiful scenes here at the Gaddafi Stadium. And like I said, downstairs there's plenty of activity happening at the moment.
getting ready for the post-match presentation. Just about time for us to take a short break, and we'll be right back.
Now, before we start off with the presentation, I would like to congratulate PCB and Central Punjab for organizing this wonderful event for these youngsters to come here at this biggest stage and showcase their talent. In the presentation party, I've got with me Mr. Ali Sarfaraz, Secretary, Higher Education Department, Mr. Nadeem Khan, Director, High Performance Center, Pakistan Cricket Board, Mr. Junaid Zia, GM, Domestic Cricket, Pakistan Cricket Board, Mr. Abdullah Khan Sumbul, Chairman, Central Punjab Cricket Association, Mr. Ali Sarfaraz, is Nadeem Ghaus is also with us. Sarfaraz Bajwa is here with us, board member of Central Punjab Cricket Association. Amir Ilyas Butt, board member of Central Punjab Cricket Association, alongside Mr. Shahid Nazir, former international cricket. Good to have you here with us, gentlemen. So we'll start off with the prize distribution here. The first prize, I would request Mr. Amir Ilyas Butt to step forward and to give away the award of 25,000 to the best wicketkeeper of the tournament, that is Bakir Raza, for his 7 catches and 8 stumpings. I would now request Mr. Sarfaraz Bajwa, board member, Central Punjab Cricket Association, to present the award of cash prize 25,000 to the best all-rounder of the tournament, that is Zishan Sikandar, Superior College, Mandi Bahauddin. 260 runs with 20 wickets to his name. Very well done, Mr. Zishan Sikandar. And now I would request Mr. Shahid Nazir to present the award and cash award of prize 25,000 to the best bowler of the tournament, that goes to Hassan Khan, Government Graduate College, Sheikhupura. He's taken 22 wickets in his 5 matches. An excellent performance, well-deserved award. Mr. Ali Sarfaraz, Secretary, Higher Education Department, to present the award and cash prize of PKR 25,000 for the best batsman of the tournament, that goes to Ubaid Shahid, Punjab College, Lahore. 706 runs in 8 matches to his name. Very well played. Coming on to this game, Mr. Abdullah Khan Sumbul, Chairman, Central Punjab Cricket Association, will present the award of and cash prize of PKR 25,000 to the player of the match in this big final. That goes to Mr. Abdullah Shahid for his marvellous 80 runs. अब्दुल्ला बात करेंगे हमारे से थोड़ी सी. अब्दुल्ला, सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छा खेले आप. एक मुश्किल टाइम पे बैटिंग करने आए थे, तो क्या प्लान था उस टाइम पे? अस्सलाम वालेकुम. मैं बहुत अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अचीव किया हमने, और यही प्लान था कि हम बॉल टू बॉल खेलेंगे, एंड तक जाएंगे, और इसका रिजल्ट अल्लाह ताला ने. चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत अच्छी इनिंग खेले आप. थैंक यू वेरी मच. Mr. Nadeem Khan, Director, High Performance Center, Pakistan Cricket Board. He will present trophy and cash prize for PKR 300,000 for the runners-up of this tournament, the captain of GCU. And a beautiful trophy also with that. मुज़म्मिल बात करेंगे थोड़ी सी. मुज़म्मिल, टॉस पे आपने कहा था कि आप बैटिंग करना चाहते हैं, तो रन्स थोड़े कम हो गए लगता है. जी, रन्स का थोड़ा विकेट कंडीशन भी था, और बैट्समैन एक अच्छा मैच था, बड़ा मैच था, और बैट्समैन थोड़ा जिम्मेदारी पे नहीं खेले, तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है. जितना हो सका था इंशाल्लाह अच्छी फ़ाइट हुई है, तो बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है. और प्लेयर्स को ये बड़ी अच्छी बात है कि प्लेयर्स को सीखने को मिला आज, तो माशाल्लाह ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए. और माशाल्लाह कि ये है कि बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है, और ऐसी ये है कि थोड़ा हमने फील्डिंग में बहुत लूजिंग की है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको कवर करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह. चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी. ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट.
Now coming on to the big award, Mr. Ali Sarfraz and Mr. Abdullah Khan Sumbul will present the trophy and cash prize of PKR 500,000 to the champions of the College Championship 22, and that goes to captain of DPS Faisalabad. And a beautiful trophy to go with that. Such a proud moment that is for Divisional Public Faisalabad. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ? जी बिल्कुल, हमारा प्लान यही था कि जल्द से जल्द इनको आउट करें लोएस्ट टोटल पर और रन्स करें हम बाद में। अब क्या मीन करता है ये फैसलाबाद के डिवीजनल कॉलेज सारे स्कूल्स के लिए आप यहाँ से जीत के जाएंगे, तो क्या मैसेज है आपका? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये है कोशिश सबकी, खासकर हमारे कोचिंग स्टाफ की। ये काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, पिछले 1 ईयर से हम कर रहे थे, तो आज बहुत खुशी हुई है हम ये इवेंट जीते हैं। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, आप इंजॉय कीजिए अपनी टीम के साथ। A few other awards to be presented here. Mr. Chairman, Abdullah Sumbul will present a shield to Mr. Ali Sarfraz. Director High Performance, Mr. Nadeem Khan, will now present a shield to Mr. Nadeem Ghaus. Naeem Ghaus, I beg your pardon. Chairman, Central Punjab Cricket Association, Mr. Abdullah Khan Sumbul, will now present a shield to Mr. Nadeem Khan. Mr. Abdullah Khan Sumbul will now present a shield to Mr. Junaid Zia also. Director Domestic Cricket PCB, Mr. Junaid Zia. Nadeem Khan, the Director High Performance, will now present a shield to Mr. Ali Ahmed Khan. Nadeem Khan will also present a shield to Mr. Amir Ilyas Bhatt. Nadeem Khan will also present a shield to Mr. Sairat Saudjan. Nadeem Khan will now also present a shield to Mr. Atif Naim Rana. Mr. Nadeem Khan will now again present a trophy to Mr. Muhammad Umar. Mr. Nadeem Khan will now present a trophy, a shield to Mr. Ashad Ahmed Khan. Mr. Sarfraz Ahmed Bajwa. By Nadeem Khan, sorry. Nadeem Khan will now present another shield to Mr. Ali Ahmed Khan. Nadeem Khan will now present a shield to Mr. Abdullah Khurram Niazi. I thank Mr. Nadeem Khan for this huge effort. Now I would request Mr. Amir Ilyas Bhatt to award the shield to Mr. Dr. Rehana. Dr. Rehana. For focal person for HED. Mr. Rehana. Member Central Punjab Cricket Association Ali Ahmed will now present the Shield Award for HED Khalid Pervez.
Thank you very much. And now to the most important awards, in my opinion. CEO of Central Punjab Cricket Association, Abdullah Khurram, will present a medal to the umpires. First of all, I would request Kaisar Waheed to come forward, please. Kaisar Waheed. Abdullah Khurram will also present a medal to Mr. Muhammad Asif. Abdullah Khurram will now present a medal for Irfan Dilshad. It's been remarkable. These umpires have done such a hard work all this tournament. A job well done by them. The last one, Mr. Abdullah Khurram will present a medal to Mr. Azhar Hussain. Right, that is all we have from down here. It's back to the commentary box. शुक्रिया अली यूनिस साहब का। एक शानदार प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी। इस एक शानदार मार्के के बाद जिसमें कामयाबी हासिल की है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद ने, और इस मैच में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने 176 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर 40 ओवर्स में, जबकि इस टारगेट को चेस करने में कामयाब रही है डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की टीम। आखिरी ओवर में जब उन्होंने इस हदफ का ताक़ुब किया और अब्दुल्ला शाहिद ने 76 रन की शानदार इनिंग खेली, अब्दुल रहमान जूनियर ने 34 रन बनाए, जबकि जहांगीर खान ने 2 विकेट हासिल की, और डीपीएस फैसलाबाद ने इस शानदार मार्के में कामयाबी हासिल की है 6 विकेट से। और जो सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन कॉलेज चैंपियनशिप है, इसको अपने नाम करने में कामयाब रही है यहाँ पर डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद की टीम। और यकीनी तौर पर इस मार्के के बाद हमें मजीद क्रिकेट भी देखने को मिलेगी जब सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन वीकेंड कॉलेज लीग और कल इसका 2-डे फाइनल, और एक बड़ा मार्का है दार अरकम लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल के दरमियान। ये मैच मुकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होगा और एक 2-डे फाइनल मैच है। यकीनी तौर पर मजीद इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी थ्रू आउट द नेक्स्ट 2 डेज। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज आपने हमें ज्वाइन किया, कल की भी इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ रहेंगे, जहाँ दार अरकम लाहौर और डिविजनल पब्लिक स्कूल की टीमों के दरमियान सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का वीकेंड कॉलेज लीग का मार्का खेला जाएगा, जो फाइनल मैच है। और ये मैच 2 दिन पर मबनी होगा और कल 3 बजे लोकल टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और इसके साथ ही कजाफी स्टेडियम लाहौर से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।